Hello. Done? Okay. No issue? No. ठीक. अच्छा वो उसमें जो अपना रेड कलर का आदमी है हाँ बस हाँ बेटा इधर वाला इस हाथ वाला है फर्स्ट फ्लोर उधर बैठ पाएंगे आराम से क्योंकि यहाँ अगर कोई बोलने आएगा तो आप इजी नहीं होंगे ना यहाँ पर तो आप अगर अच्छा लग रहा है तो पहले सबको बोल दीजिए हाँ बिल्कुल अध्यक्ष क्रम से बुलाना हाँ क्या नाम है तपन बंदोपाध्याय हाँ जैसे आप नाम लेंगी तो वो ऊपर आएंगे सबसे पहले उन्हीं को बुलाएंगे एक एक करके बुलाएंगे जी 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 नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। साहित्य अकादमी की ओर से विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के पहले दिन इस सत्र में हम फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने साहित्यिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उसे पोषित करने के लिए 7 दशकों से बहुत प्रयास किए हैं और अपने गंतव्य की ओर अभी भी गतिमान है। This 6-day grand celebration is a celebration of it
its enduring legacy and commitment to nurturing the rich tapestry of Indian literature. But it is more than just a literary celebration. अपने विस्तारित रूप में साहित्योत्सव न केवल साहित्य का उत्सव है बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, संवाद और विविध साहित्यिक परिदृश्यों की खोज का एक जीवंत मंच है. With over 1100 eminent writers and scholars gracing the event, the mega festival will showcase the rich linguistic diversity of India with representations from over 175 languages in 190 invigorating session. और यहाँ पर आज ऐसा ही एक सेशन है. भारत में बाल साहित्य के अनुवाद संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सम्मानित अध्यक्ष और पैनलिस्ट्स. Our distinguished panel will shed light on the complexities and challenges of bringing children's stories from diverse cultures and languages into the vibrant landscape of Indian literature. मंच पर सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री तपन बंदोपाध्याय जी को. प्रख्यात बांग्ला लेखक हैं. आप पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष सचिव और एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑफ कल्चर के रूप में सेवानिवृत्त हुए. आपकी 150 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें फिक्शन, क्राइम फिक्शन, 400 से अधिक कहानियाँ और बाल साहित्य की 25 पुस्तकें शामिल हैं. आपने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है. He has also translated a few books. His short stories have been translated into many Indian languages and also in German. He is founder secretary of Shishu Kishore Academy in West Bengal. He is recipient of Sahitya Academy Award, Bankim Award, Tara Shankar Award, Kishore Bharti Award, among many others. आपका बहुत बहुत स्वागत. हमारे आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं. श्रीदास बेनहुर जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ. That's the pen name of Shri Jitendra Narayan Das, a well-known Odia writer who has more than 100 books to his credit, including collections of short stories, poetries, novels, essays, travelogues, and features. आपकी रचनाएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई. आपकी कई कृतियों का अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला में अनुवाद किया गया है. आप साहित्य अकादमी, बाल साहित्य पुरस्कार, उड़िया साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं. बहुत बहुत आपका अभिनंदन. इस सत्र में हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती दीपा अग्रवाल जी. लेखिका, कवयित्री और अनुवादक हैं. आपकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं. आपकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है. Recent titles include Begum, a portrait of Rana Liaquat Ali Khan, Pakistan's pioneering First Lady, The Teenage Diary of Noor Jahan, Blessed, Friendship Stories, and Journey to the Forbidden City. Among various other awards, she has received NCERT National Award for Children's Literature in 1993, while her historical fiction Caravan to Tibet was on the IBBY, that is the International Board on Books for Young People. दीपा जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं. पारो आनंद जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं. प्रख्यात लेखिका हैं, परफॉर्मेंस स्टोरी टेलर हैं और बाल एवं किशोर साहित्य की सक्रिय कार्यकर्ता हैं. आपके उपन्यास No Guns at My Son's Funeral का जर्मन और स्पेनिश में अनुवाद किया गया है और उस पर एक फिल्म का निर्माण भी किया जा रहा है. The little bird who held the sky up with his feet was on the 1001 books to read before you grow up, the gold standard for world children's literature. Paro ji has received Sahitya Academy Bal Sahitya Puraskar for her book Wild Child and Other Stories and Kalinga Karubaki Award, among others. उनका मंच पर हम स्वागत करते हैं. पारो आनंद जी.
मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं श्री विकास दवे जी को, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक तथा मासिक देवपुत्र बाल हरिद्रा एवं इंटरव्यू पत्रिका के संपादक हैं। आपकी 19 कृतियां प्रकाशित हैं तथा आपने 150 से अधिक पांडुलिपियों का संपादन किया है। आपके 1500 से अधिक लेख प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी बाल कहानियाँ एवं वार्ताएं आकाशवाणी से प्रसारित हुई हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में बाल साहित्य सहित विभिन्न विषयों पर 1800 से अधिक व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं और संस्कृति तथा भाषा विकास संगठनों के आप सदस्य रह चुके हैं और आपका हम सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ श्री तपन बंदोपाध्याय जी से, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, कि वे सत्र का आरंभ करें। तो आप यहाँ से बोलना चाहेंगे? Ladies and gentlemen here, respected President, Vice President, the Secretary of Sahitya Academy, and the participants present on the dais, and the other dignitaries in the audience. I first of all give thanks to the authorities of Sahitya Academy for giving me an opportunity to chair in this panel discussion devoting to issue with translating children's literature in India. Sahitya Academy has rightly observed that children have amazing ability to absorb new contents and learn even when they don't understand the source knowledge. Compared to translating literature for adults, translating children's literature turns out to be more challenging. Despite the ability of the children to transcend barriers easily, both the translators and the children face challenges in the translated materials where source and target culture are remote. In the last literary fest held at Bhopal on 2 to 6 August 2023, I had the opportunity to chair this seminar titled Translating Children's Literature in India. In that seminar, 5 participants, namely D.B.K. Ramesh, Rishi Raj, Sambharananda Misro, T. Vishnu Kumaran and Vikas Dave took part and delivered brilliant speeches. Of them, today I find only Vikas Dave here. Today's participants are Das Benur, Deepa Agarwal, Aro Anand and Vikas Dave. We have observed that the translators give emphasis on the translation of the fictions and other literary books meant for the general readers, and seldom think to translating the children's literature. The children of this country have the opportunity to read fictions or other literary books in their mother language. They also get the opportunity to read English literature for the children, but they have little scope of reading such literature of other languages of this country for want of sufficient translated works. This is actually a serious problem. India is a multilingual country and in almost all the languages, children's literature are published. Many of them are rich in content and style. Seldom these books are translated in other regional languages, and the children does not have any access to get the taste of the literature of other languages. So to discuss the matter in detail, Sahitya Academy has invited some
stalwarts present here, and they are now on the dais. I am inviting one by one. First participant is Das Benur. Namaskar, Jai Jagannath. I am from Odisha and I am a Odia writer. In the fitness of things, I should have started in Odia. It's a classical language, the sixth classical language of India. But however, since it is the session is on translation, I would translate my Odia ideas and shall be with you for a discussion. Honorable Chair Tapanji, respected panelists Deepaji, Paroji and Vikasji, and friends present here. First of all, I must congratulate Sahitya Academy because this is the first day and the first session, and they have given us opportunity to discuss on children's literature, that to issues with translation with regard to children's literature in India. I must tell you, all over the world, children's literature is not given its due it deserves. Way back in 1980s, for the first time, Cardiff University in UK started with a department on children's literature, and for the first time a concept was developed called childism. It refers to the adult's bias towards children. So when I will be discussing about translation, I will have a reference to that. Second is, many people think the translator's work is just like a postman's work. The translator imitates the original idea. It's not like that. It is as creative as other creative genres. It's very difficult really. And I must say, as children's literature is not given its due importance, translator is also not given its due importance. And that is why, when awards by Sahitya Academy were instituted, they did not include children's literature, nor they did include translation at the first instance. I remember in 2007, I was here when APJ Abdul Kalam ji was the president, and he invited 52 people from all over India to have a discussion on children's literature. And previous to that, NCERT was offering prizes on children's literature for different age groups. This thing was aired before him, was discussed, and after that, as he wrote to the Sahitya Academy that there must be a Bal Sahitya Puraskar. That is why, very recently, say about a decade, Sahitya Academy is giving prize in children's literature, and that to Bal Sahitya Puraskar. The other part is translation. I am happy to say that one of the Odia translators who translates mainly from Odia to English, Mr. Vikram Das, is the first recipient of translation prize in English by Sahitya Academy, way back in 1889. Now, when I say about translation, as I was telling you, it is more important than the original. It carries, because if you say today that literature has no barriers, you can say this through translation. And I am given to understand that Panchatantra is perhaps the only Indian text
that is being translated to most of the languages in the world. So therefore, knowledge about other languages is important. If I know Odia only, and I write fantastic texts in Odia, and in my locality, there is no one who knows any other language, then it is unlikely that Odia literature will reach anywhere, not even beyond its borders. So the first important thing is we must respect other languages. I know Odia has, because from 13th century, say for example Sarala Das, one of the prime authors of Odisha, who in the whole of India, in a way translated from the Sanskrit text, the whole of Mahabharata. No other Indian language has done that till that time. It is only a kind of translation. And in the 14th century, it is again Jagannath Das who translated Bhagavad Gita, and I'm very proud to say that in the whole of India, it is Sridhar Swami who came out with a bhashya on Bhagavad, which helped all the Indian authors to translate and understand Bhagavad. And likewise in the 15th century, Balaram Das translated again Ramayana and called it Dandi Ramayana. Why I say this? I say this because this is the same thing with children's literature. Very few Odia texts, though they are fantastic, folk tales, lullabies, rhymes, they are not translated into any other language except Hindi and English. So my second thing will be, when we speak about translation, we talk in terms of English only. I write in Hindi, I am interested to get translated into English, not Bengali, not Odia, not Telugu, not Kashmiri. You will find in the whole of India, translation means translating the vernacular texts, vernacular literature to English. When I was a student in the high school days in the 60s, we were given translation papers. I had Hindi, I had Sanskrit, I had Odia, obviously that is my mother tongue, and I had English, two papers. But we were asked, there was a translation question always in the MIL, to translate from Odia to English. So therefore the first issue is that we are not considering children's literature important. That is why translation is neglected. Number two, translation itself is not given in due importance, and it is not considered an important creative work. That is why translators are disheartened. We give more importance to the original authors. If today I tell you a fantastic novel called Paraja on the tribal life of Paraja people in Odisha, if it is taking rounds in the entire world, it is through translation by Vikram Das. It is in American Congress Library, it is in Australia university libraries. People are doing research on that. And thank God that Mr. John Bolton, learning about Fakir Mohan, started learning Odia language, and he translated, not only translated his best novel Samman Atgunt, he also wrote a treatise on that. So my third point is, we must translate to English because we will reach new frontiers. Odia words should be translated to Hindi so as to reach new frontiers. But what about my neighbor, Bengal? What about my neighbor, Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh? They have their own languages. When Odia language, Odia writing, Odia stories, Odia children's books will reach India? I am interested to get translated in English. Wait, if you are writing in English,
like say Madam Deepa Agrawal, because many people, vernacular language people, they know English. So they will pick up stories from Deepa Agrawal to say Himachali or Kashmiri, they say Telugu and all that. But that doesn't happen in about say, other vernacular languages. So many people, that is why many people, many authors from their own side, they are interested to translate their works to English or Hindi. And those who are writing in English and Hindi, they have always a better position. That should be looked into, because we are talking about Indian literature. We are talking about integration of India. We are not talking about a particular language. Minister Saab was talking about the constitution, giving importance to the constitution, the concept of equality, why liberty was not given the primacy and why equality was given the primacy. It is because all vernacular languages should be given equal importance so that all the literatures from different regions will come up, including tribal languages, regional languages, even dialects. They have their own beauty. Then the fourth thing is, if you are talking about children's literature, it is a graded literature. Adult literature is not graded literature. After say the age of 16 or 18, you can understand anything, whether from sex to everything. But for children, we have different categories. And accordingly, a translator should be conscious about the graded text. The linguistic competence of the children is not the same, starting from the infants, toddlers, kids, teens, teenagers, and adolescents. So when I am translating a text written by say Tapanji to Odia language, I must go to that level of language. Whether what text is this? Is it written for the kids, the infants, the lullaby, the rhyme? So I must be conscious about the word I'm using. This word must be very pliable, because most of the children's literature, even the folk tales, they are written in colloquial language. It is very difficult to translate. It is untranslatable. Certain things are there which are untranslatable because that is specific to a specific culture. So therefore, linguistic competence on the part of the translators is the sine qua non. Because if we translate good texts that came up in Hindi or in English or in Bengali, in any other language, we have all the children of the entire country, even the world, they have a right to know the good texts, good stories. Stories of Rabindranath Tagore or Satyajit Ray should not be confined to Bengal only. And how can it reach Odisha? How can it reach Andhra Pradesh? How can it reach Kashmir? Unless those are translated into those languages. So my submission would be that translating a text, the issues are mostly with regard to not only the linguistic competence of the translator, it is also about his cultural competence. Translation is like a marriage of a bride. The bride leaves the parental house, maike chhod ke wo jata hai sasural. So the translator, when the text is translated, you have to leave behind certain things as the bride leaves behind the relations. Mother is there, father is there, house is there, village is there, all what past is gone. Likewise, that when you translate a text, you are not going to carry the entire thing. You will have to lose certain things. Language translation is a barrier, a wall. You must be competent to scale the wall. So cultural barrier, linguistic barrier is there. Cultural barrier is also there. So a translator should be conscious of this. You are carrying one culture to another culture, not only language to language. It is culture to culture. If we have pakhal, you have panta bhat. The similar thing, they have nothing like watered rice in English. Because if you are talking about your, say, sister-in-law sari, they don't understand that. So carrying everything to English will not carry everything from Bengali and from Odisha or Odia.
So therefore, a translator's job, and more so in children's literature, because I tell you again and again, children's literature is more given to graded system. Children's literature is more given to the colloquial language, because the most pliable language is the colloquial language. That is why it's almost a challenge. So now coming to the main issue, there is another thing. It is always an adult affair. You have heard about, say, Dhruva, he was a sadhaka. You have heard about, say, Ashtavakra, who was a philosopher from his childhood. When he was 12, he was already equipped with Brahma Jnana. You have also heard about Ekalabya, who was an excellent archer at the age of 12. Have you come across any child who is a translator from his childhood? No child translates. It is an adult affair. Adults write for children. Children don't write for adults. Children can write for themselves. Suppose say my 4-year-old grandson, he came up with an idea and told me, I am drawing the pictures, you go on writing whatever I am dictating you. That is how I have a book. That is there with me, I can show you. The Snake and the Ants. He was only 4, but that is not going to be children's literature. Adults write for children, and they have their own bias. That is why the concept of childism was developed by Peter Funk in Cardiff University. So the important thing is, it is again the adults who are translating. You cannot use certain, say in Odia we have Jehetu, Sutarang, Evang. These are not the words used by children. No translator can have the authority, can have the audacity to go into those languages, Sanskritized languages, Tassama words. So you will have to use pliable words. You will have to go to the colloquiality. If I know colloquial Bengali, I can translate colloquial Bengali to Odia. And if I do not know even Odia colloquiality, I can't translate. That is why the translator's job is very important. So therefore, these are the main issues. There are several issues. And the fourth thing is, which book is translated? When someone is translating, in adult literature, you can translate anything you liked. Westland, you translate it. But in children's literature, you tend to translate those which are accepted by the publishers. It is a commercial affair. You go on translating, but these are not published, it has no meaning. So again, it is not only a cultural affair, it is also an adult affair, it is also a commercial affair, it is a linguistic affair. Any book, suppose Parvanand and Dipaji, they have written several works. I am interested to translate because I understand Hindi and English. But which book I will translate? I will see that this book by Madam Deepa Agrawal will have a market. Then only I will translate. Every publisher asks you, will it sell? Because nobody is going to lose in publication or in business. So therefore, these are the important issues we must address when we are talking about issues with Indian literature, children's literature in India. And the final thing is, because I must not take much more time of my panelists here, I propose again, because it is the Festival of Letters, very important people are here. We must have a translation university in the country. A university where professors from all languages will be there. And immediately, if there is a fantastic work by Tapan Bandyopadhyay, it must be immediately translated into 22 languages. Children have a right to know, have a right to literature. I always say, children have a right to question, because question is the basis through which they develop, they grow. And therefore, we must give importance to all the vernacular languages of the country so as to keep the country intact.
That is proper national integration. Mr. Das Benur, time is finished. Okay, I am conscious of that. I'm sorry that you have stepped over. Thank you for listening to me. And please consider establishing a translation university. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Das Benur. Very brilliant speech and suggestions. Actually, time is very short. We are running late, so I would request the speakers to restrict their speeches within 8 to 10 minutes. Next speaker is Deepa Agarwal. Namaskar, friends, Honorable Chairman, Sir, and my respected fellow panelists. I'm very happy to be here, and I must congratulate Sahitya Academy for giving this importance to the translation of children's books. You know, I think this is the first time we've ever attended such a panel discussion. And Dash Benhur ji has made very, very important points about concerning translation and why it is so important that the translation of children's books be taken more seriously. And as we all know, that the reading habit is established in childhood. So if children do not have access to reading material that they enjoy, they are not going to become readers in their adult lives. So, well, I thought I would focus upon one particular work, my experiences of translating the Hindi classic by Devki Nandan Khatri, Chandrakanta, into English, because I thought I'd like to share, you know, the problems that I faced and how I tackled the issue, as Dash Benhur ji talked about, you know, the translating cultures, how hard it is to find equivalents in English for, you know, regional terms. And actually, as I look upon it, in a country like ours, with so many regional languages, translation becomes like a nation-building effort. And definitely, you know, I'm always so delighted when any of my books is translated into any other Indian languages. And recently, I was absolutely overwhelmed when one of my picture books was translated into my native language, Kumaoni. And I know not too much children's literature is published in Kumaoni, so, you know, it was something extremely special for me. So now talking of translating Chandrakanta, you know, it's very gratifying for a translator to present such a revered text to a contemporary reader. But however, no matter how noble your intent may be, certain naughty questions cannot be disregarded, especially when you plan to translate a book into English. And among the most crucial is that when you're writing in English, you're targeting an audience of urban readers. And these urban readers have been exposed to so much of literature from all over the world that their tastes have been formed in a particular manner. And you wonder, how are they going to accept a work which is a classic, highly popular in its own time, highly popular still, but it may be not, close to the kind of writing they are familiar with. So for me, the challenge was to bridge the chasm of a century, during which subject matter, narrative styles, progression of plot and structural elements had undergone a considerable change. Now, a little bit about Chandrakanta. Maybe all of us don't know so much about this book. It was published in serial form between 1888 and 1891, and it occupies a unique place in the annals of the Hindi novel, because it's not only a pioneering work of mystery and suspense, but also the first runaway bestseller in the contemporary sense of the word. You know, I've always mentioned that it was the Harry Potter of its time. And I don't think any other Hindi novel has gripped readers for such a long period of time. It also launched a trend for popular fiction
and contributed greatly to the growth of the Hindi novel, particularly the advancement of the Devanagari script. So now the thing is, an adult reader will pick up a classic work because of its reputation, but the child reader is not like that. So that is what we have to keep in mind. And you may translate a particular text because it's like an academic exercise because it deserves to be translated. But then the thing is, I feel it is pointless unless children are going to read it. And another thing about translating a classic is that if you translate a contemporary work, if you have some mental confusion, you can consult the author. But that is not possible. You have to make your own judgments. So I also couldn't help wondering why there were not that many English translations of Chandrakanta. Did it present some particular difficulty? Now, it's a fascinating novel. As I mentioned, it's a work of mystery, and very briefly I'll mention it's a kind of a fairy story, a romance, you can say. Prince Virendra Singh of Naugarh is madly in love with Princess Chandrakanta of Vijaygarh. But their fathers, who were originally close friends, have become sworn enemies. And this is the result of a villain whose name is Kroor Singh. Kroor, as we know, means cruel, and who is plotting to marry the princess because he wants to take over the kingdom. And so Virendra is able to come to the help of Raja, his Jai Singh, but it suddenly discovers that Chandrakanta and her friend Chapla, they have disappeared. And the word comes that they are trapped in a tilism. Now, tilism is a kind of a magical structure, and these are some mysterious ruins. And in this, Devkinandan Khatri followed a particular tradition. He followed the tradition of the Katha Sarit Sagar, as he himself acknowledges, and he was also influenced by Push. Just next figures I will speak. Okay, I'll do that. Okay, so now what are the problems that I faced? One was that, of course, on the plus side, there was the mystery and suspense. It's an enthralling book, and the characters are very appealing. Prince Virendra is he's not a typical macho hero. He sometimes bursts into tears, falls down in a faint, and Chandrakanta and her friends, they are also extremely feisty characters. They're more like the women characters of our books today, the kind of characters we like to project in our books. And actually, what Khatri has done in this, he has turned the narrative on its head, the typical fairy tale, because it's not that the prince is actually rescuing the princess. She is also instrumental in, helping the narrative forward. But now, one of the main issues was, first, of course, the language, because it was the Hindustani of more than a century back, and I couldn't take the conventional route with this. So I had to find an idiom which corresponded as closely as possible to the original writing, and keep the pace very brisk and keep it fast moving to engage the child reader. Then again, because it was published in the serial form, it was very episodic. So it was different from the climactic structure that we follow today in our books. So I had to do a lot of restructuring of the chapters. I left out some parts which I felt were obstructing the flow of the narrative. I condensed the dialogues, tried to keep it as crisp and pithy as possible. And then I had to add transitions, geographical locations, all the things that contemporary children are familiar with. So I'm cutting this short, okay? So in the end, what I ended up was with more of an adaptation than a translation. But the question remained that how is the contemporary reader going to accept this book? And I took the opinion of a few children, and I'll quickly read out what their responses were, because this is important. This is a boy called Pranav Nair.
He said, the reason I like this book is the magical element, the mayhem, and the suspense. If there was a star rating, I would vote this book a 5 out of 5. Then Uttara Kaura said, the magic and mystery was what I liked best about it. I couldn't stop reading the book once I had started it. And Riya Kumar said that Chandrakanta is not preachy and does not contain pages full of morals. Apart from this, it is full of breathless action, and you're always thinking, what will happen next? So, to cut my long story short, this led me to conclude that it is the choice of the work which is very important. And I think Manojji mentioned that it has to be a book that children will pick up and read and enjoy. And if you have to adapt, if some judicial adaptation is necessary to make the book accessible to young readers, I think the translator should not hesitate. And your main purpose should be to see that it is a readable, engaging, and highly accessible book. And let me show you. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Paro Anand. I think if I stand behind it, I'm really hidden. So I'm going to. I'm sorry. नहीं, ये भी ठीक है. So, thank you so much. As my fellow panelists have said, thank you so much for giving this opportunity. I think Sahitya Academy really deserves credit for bringing children's literature and translation to the forefront in one of the first sessions of the festival. In preparation for this panel, I tried to do some research on what are the issues of translating children's literature. Here are my findings. There's no research on issues of translating or on translating children's literature. It's really almost entirely missing. Translation, there is some research on it. At least I couldn't access it. And access, I think, is a very key problem, because there are not very many easily available translated children's books, especially for those who don't have bookstores and libraries close to them. So there's very little way for them to get a book in their own language. I worked in the National Center for Children's Literature, National Book Trust, for about 5 years, and met some of my colleagues here on the panel through that process. And we did do some studies on translation, but I think this was many years ago, in the 1990s. But even now, those problems still exist. And I think that's a terrible state of affairs, that जो समस्याएं तब थी, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ. Especially children's literature, especially. So to me, the first point is access, easy access. Not for somebody who can go to a different city, go to one of the metropolitan cities, or maybe even not be able to access online, websites and things to do online shopping. Maybe they don't have that. The second thing, because I think of the difficulty of access, is the price point. You look at a book in English, it will be 100 rupees plus, 200 rupees plus. In the vernaculars, it's in double digits. At the National Book Trust, we would take books for 25 rupees, 15 rupees. Again, a long time ago, but that was the price. And children would come and say, don't you have a book for 5 rupees?
because we can't afford 15 rupees. So the price point immediately crashes when you think of translated or even original language children's literature. Because of the price point drop, there is a problem in, again, that access. No bookstore wants to keep language books because they'll get much more percentage selling a book in English or Hindi, but not in the vernaculars. The production quality therefore drops. The publisher is therefore, as was mentioned, that the publishers don't want to publish what they don't know will sell. They need that guarantee because it's already so challenging. So therefore, authors, translators, illustrators are all paid much less. So therefore, the need, the motivation to write in the vernaculars is that much less. Already, children's literature is at a lower place. As Dash Benhur mentioned, that the Sahitya Academy Award for Children was years later. The Bal Sahitya Puruskar came much later after the award for adults was instituted. The award for children's authors of the Bal Sahitya Puruskar is 50% of what the adults get. So you're already saying you don't matter. You matter half as much. You are half of the whole, whereas the adult is the whole, the person writing for adults. And so the motivation to write, the motivation to translate is crashing down as we continue to watch it crashing down. The other thing that I have experienced in trying to get my stories translated is publishers basically only want to translate safe stories, stories that are safe enough, again, to guarantee that sale enough. So books like mine, which are very contemporary, edgy, dealing with LGBTQ, conflict, extreme poverty, discrimination, bullying, they are not being translated. And so children are in fact not relating to the books that they're even getting through what little access they have. It's not the books that they want to read. I have worked with over 3 lakh children throughout the country. I'm a world record holder for helping over 3,000 children make the world's longest newspaper, which is a world record. And what children were demanding and what they're asking for are the issues that all children, worldwide, why only in India, worldwide, childhood issues are childhood issues, and it doesn't matter where, which state, which language. They need to go beyond the moralistic stories, the Purans, the Panchtantra, wonderful as those stories are. How can we say that children won't relate? We expect them to relate to stories written 3,000 years ago. And we say that they won't relate to, as you said, an Uriya story, even in Andhra Pradesh, who are neighbors. How can it be? What are we saying? We are blind to what children are asking and demanding and needing. My own stories are translated into several foreign languages. They are not translated into my own languages. Again, in my research, again, this thing of safe stories. So there are picture books available in Indian languages. Picture books are there, which are safe, animal stories, stories of nature, stories of Meri Maa, Mera Pyara Kutta. But what about the gritty stories, the gritty issues that children actually deal with and face on an everyday basis?
So I think it all boils down to the fact that for older children, what are we defining as children's literature? Only picture books? What about all the other categories that Dash Benhar mentioned? What about teenagers? What about middle grade readers, adolescents, young adults? All of that is recognized as children's literature everywhere except in our languages, where it's sadly still missing. It's a battle that I've been battling since the 1990s. It's 2024. Sahitya Academy's own translation program, and while I'm very grateful to Sahitya Academy for having this session at all, let's also face the bitter truth, and I use the word bitter consciously, the bitter truth that the Bal Sahitya Puraskar winners have not been translated into other languages. Part of the brief of Sahitya Academy is that award-winning books will be translated into minimum 12 languages. As far as I know, as far as I've been able to find out, I don't know, is there somebody from Sahitya Academy, I hope, who can correct me, I wish they can, to say that none of the award-winning books, including my own, have been translated into Indian languages till now. I won it in 2017, the Bal Sahitya Puraskar. Not one translation has been brought out so far. I don't agree with the relatability factor. In fact, look, children who are reading are going to become very powerful adults. Children who are reading will be in the Indian Foreign Service, in the Indian Administrative Service, in all the, they are the ones who are sitting for these exams and going to the States. If in childhood we have not, through stories, created an empathetic generation coming up, how are they going to work with any empathy when they go to the States? And I think this is an important... so relatability, range, and also the trans-migration. We need to rely upon agencies such as the Sahitya Academy to bring about translation and a vibrant translation program. I can't even say revive it because it's non-existent. One child in Kerala said to me after I had read a book based in Kashmir, Noganza, at my son's funeral, and she said such a powerful thing. She said, I always knew that people are dying in Kashmir. I never thought of people living in Kashmir, and I thank you for this story. And then she went on to say something which gave me goosebumps and tears at the same time. How can I read this story in Malayalam because I can't read in English? And my answer to her was, you can't. It doesn't exist. Thank you. Thank you, Paro Anand. The last speaker is VYASA Dabhe. धन्यवाद। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय तपन बंदोपाध्याय जी, दाश बेनहुर जी, दीपा अग्रवाल जी और पारो आनंद जी, सामने सदन में बैठे आप सभी को भी प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि कई चेहरे चिर परिचित हैं और बच्चों से लगातार जुड़े हुए हैं। उषा जी बैठी हैं, सुमन जी बैठी हुई हैं। बच्चों को कहानियां सुनाना और बच्चों के को आनंद के सागर में गोते लगवाना, इस काम में लगे हुए अनेक बंधु भगिनी यहां पर उपस्थित है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। दरअसल बच्चों के साहित्य पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। केंद्र की साहित्य अकादमी ने एक बड़ा अच्छा उपक्रम यहां पर संयोजित किया और हम उस युग में बैठकर के बच्चों के साहित्य की बातचीत कर रहे हैं जब यूनाइटेड नेशंस ने संपूर्ण विश्व के
अनेक देशों के, लगभग 100 से ज्यादा देशों के बच्चों पर एक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण का निष्कर्ष जो आया, बहुत मोटा निष्कर्ष है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा। उस निष्कर्ष का पहला जो पैराग्राफ है उसका पहला वाक्य यह है कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व आतंकवाद से बड़ी एक विभीषिका से जूझने वाला है और वह विभीषिका यह होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पौध केवल लिसनर और व्यूअर बनकर के रह जाएगी, रीडर नहीं बचेगी। उस युग में हम बाल साहित्य की चर्चा कर रहे हैं और बाल साहित्य की चर्चा में भी बहुत महत्वपूर्ण विषय यह कि अनुवाद की परंपरा हमारे बाल साहित्य में कितनी रही भारत में, और उसमें मूलतः विषय कौन कौन से हैं जो लगातार इस अनुवाद को प्रभावित करते रहे। मुझे याद आता है कि हमारे यहां अत्यंत प्राचीन वेद हैं, वेद की एक ऋचा है, मूल ऋचा को उद्धृत नहीं कर रहा, लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा ने हमको कहा कि ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर से आने दीजिए। यदि आप सचमुच प्रकाशित होना चाहते हैं तो प्रकाश के आने की कोई दिशा मत रखिए। और ठीक यही बात पूज्य बापू ने कही। बापू ने थोड़ा सा सामान्य जन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने कहा अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दो, ज्ञान की हवा पता नहीं किस खिड़की से प्रवेश कर जाए। दरअसल अनुवाद के मूल में यही भाव है। हम जब बाल साहित्य का अनुवाद करते हैं तो निश्चित तौर पर ज्ञान की अनेक परंपराओं को आमंत्रण देते हैं। मैं जब बहुत छोटा सा था, एक छोटे से गांव का रहने वाला मध्य प्रदेश के, और मैंने अपने बाल्यकाल में अपने गांव की एक छोटी सी लाइब्रेरी में अनुवादित विश्व बाल साहित्य के वो ग्रंथ पढ़े जिनको आज, जबकि मैं बाल साहित्य के क्षेत्र में लगभग अपने जीवन के 3 दशक से अधिक व्यतीत कर चुका हूं, मेरा पीएचडी, डीलिट सब कुछ बाल पत्रकारिता, बाल साहित्य में है, और आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में पूरे भारत का एकमात्र शोध केंद्र संचालित होता है, भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान। वहां पर 88 पीएचडी के शोध कार्य हमने केवल बाल साहित्य पर संपन्न करवाए हैं। इस सबको करते हुए मुझे कई बार इस बात का आभास होता है कि सचमुच यदि बाल्यकाल में मैंने काठ का पुतला या सिंदबाद जहाजी, गुलिवर की यात्राएं, ये सब पुस्तकें न पढ़ी होती तो क्या मेरे हृदय में वह बीज वपन होता क्या जिसके कारण से जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के मैं बाल साहित्य से जुड़ पाया। और इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अनुवादित बाल साहित्य है, विशेष करके अनुवाद की परंपरा में हम सब लोग जानते होंगे कि चित्रकथाओं ने, कॉमिक्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहां अधिकांश लोग जो हम सब बैठे हैं, मैं भी चूंकि 55 से ऊपर का हूं इसलिए मैं जानता हूं कि हम सब लोगों ने बाल्यकाल में जिन कॉमिक्स को, चित्रकथाओं को पढ़ा, उनके पात्र सामान्यतया पश्चिमी जगत से आयातित थे। हमने सबसे पहले टार्जन से परिचय पाया, हमने उसके बाद फैंटम से परिचय किया, और ये वेताल की कथाएं जब हमारे मानस पर रच पच गई, उसके अनेक वर्षों के बाद जाकर के मुझे लगता है कि भारत की नई पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि उन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों पर अपने पौराणिक आख्यानों के, आज हम देखते हैं छोटा भीम संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाओं में अनुदित होकर के, या कृष्ण की बाल लीलाएं सारे विश्व को प्रभावित कर रही है, बच्चों को जीवन मूल्य प्रदाय कर रही है। तो भारतीय साहित्य वास्तव में इस प्रकार के अनुवाद के कारण से न केवल समृद्ध हुआ बल्कि विश्व के बाल साहित्य को भी समृद्ध बनाने का काम हम सब ने मिलकर किया। हमारी परंपरा बहुत समृद्ध रही। पंचतंत्र का भी उल्लेख हुआ, पूर्व वक्ता ने बताया, लेकिन केवल पंचतंत्र ही क्यों, हितोपदेश, सिंहासन 32, वेताल 25, ये सारा का सारा, कथा सरित सागर, इन सबको यदि हम देखें, और विशेष करके जैन दर्शन में आने वाली जैन कथाएं, जिनमें अधिसंख्य कथाएं ऐसी है जो बच्चे को बाल्यकाल से संयम सिखाती है, अहिंसा सिखाती है, वे जीवन मूल्य देने का काम करती है, जिन जीवन मूल्यों को देने के लिए आज का अभिभावक तरस रहा है कि हमारे बच्चों को ये सब कैसे दें। वे सारी कथाएं बच्चों के जीवन का हिस्सा होना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब ने बच्चों के हाथ में ये 2.5 बाय 3 इंच की एक स्क्रीन थमा दी है। इस मोबाइल पर वो WWE देखता है। हमको कभी आभास होता है क्या कि बुद्ध का, महावीर का देश, और यहां के बच्चे खून खराबा करते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं? उस समय
अनुवादित बाल साहित्य की आवश्यकता तो है ही, किंतु आवश्यकता इस बात की भी है कि यह अनुवाद सबसे पहले भारतीय भाषाओं का परस्पर हो, उसके बाद विदेशी बाल साहित्य को हम सब अनुवादित करके भारत के बच्चों को सौंपे। यदि भारत का बाल साहित्य हम लाएंगे तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि भाषाओं की सीमाओं को पार करते ही ज्ञान की इतनी अपरिमित संभावनाएं बच्चों के समक्ष खुलेगी कि बच्चे आश्चर्य कर जाएंगे। महाभारत का मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा हूं, महाभारत की कथाओं का मंदारिन में, चीन में अनुवाद हुआ और चीन की बेस्ट सेलर बुक्स बन गई। वो 1 वर्ष में बेस्ट सेलर बन गई। आखिरकार क्या है हमारे इस वांग्मय में, हमारे साहित्य की विशेषताएं क्या है? यदि इन सब को हम समझें, और एक बात अनुवाद के संदर्भ में और मैं कहना चाहता हूं, यदि हम सचमुच बाल साहित्य में, मैं पिछले दिनों लगातार विगत 20-25 वर्षों से रिसर्च भी करवा रहा हूं निदेशक के नाते हमारे शोध केंद्र में, मुझे ध्यान में आया कि जो साहित्य की विधाओं का वैविध्य बड़ों के साहित्य में उपलब्ध है वह बच्चों के साहित्य में नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण बाल साहित्य भारत का, उसमें से कहानी, कविता, नाटक भी अब बहुत कम मात्रा में लिखे जाते हैं, केवल कहानी और कविता आप उससे अलग कर दें तो दूसरे पलड़े में इतना कम साहित्य बचता है कि साहित्य की शेष सारी विधाओं पर लेखन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाल साहित्य में, भारतीय भाषाओं में यदि हम केवल बांग्ला की कहानी, मराठी के रेखाचित्र, गुजराती के संस्मरण, तमिल के ललित निबंध कहा जाता है, कठिन विधा मानी जाती है साहित्य की, लेकिन तमिल में बच्चों के लिए बहुत अच्छे ललित निबंध लिखे गए। पिछले दिनों मैंने तमिल से अनुवादित एक तालाब की आत्मकथा, एक ललित निबंध है। तालाब कैसे मर रहे हैं, अनुपम मिश्र जी याद आते हैं। तब लगता है कि यदि तमिल से हिंदी में अनुवाद हो, हिंदी से अंग्रेजी में जाए तो कितना बच्चों को इस सब का लाभ मिल सकता है। और इसलिए इन सब के बीच में अनुवाद में चूंकि हमको उसकी समस्याओं पर भी बात करना है, समाधान पर चर्चा करना है, तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम सब मिल करके क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाषाओं में अनुवाद करने के पहले इस बात की चिंता करें कि उस भाषा के संस्कार उस अनुवाद में जीवित रहें। मैं हमेशा इस विषय पर बात करते हुए कहता हूं कि जैसे गंगा जल को पवित्र तो कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें औषधीय गुण हैं, मेडिसिन जैसा माना जाता है गंगा जल को। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो जब बह करके आता है तो जिन पर्वतों से वो नीचे उतरता है, उन पर्वतों से नीचे उतरते हुए उसमें उस पर्वत पर उपस्थित सारे जड़ें, पेड़ पौधे, फल पत्ते, उन सब का रस समाहित होता जाता है। भाषा की भी ये विशेषता होती है। यदि आप भाषा की संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो अनुवाद में सतर्कता की आवश्यकता है। मैं कई बार मजाक में 2 उदाहरण देता हूं। अगर आप ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजनिया का किसी अंग्रेजी के लेखक से अनुवाद करवा लें और किसी ब्रिटेन के बच्चे से पूछें कि इसका अर्थ क्या है, तो शायद वो कहेगा कि कोई व्यक्ति है जो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, संभवतः उसने ड्रिंक किया हुआ है। या आप कहते हैं कि राधिके तूने बंसरी चुराई का आप अंग्रेजी में अनुवाद करो, मिस राधा यू आर स्टोलन माय फ्लूट, और किसी अंग्रेजी देश के बच्चे से पूछें इसका अर्थ क्या, तो कहेगा कोई लड़की है, चोर है, सामान्य सी 2 रुपए की बांसुरी चोरी कर ली है। लेकिन भारत का बच्चा हाथ जोड़ करके कहता है राधे रानी सरकार की जय, क्योंकि वो जानता है कि ये साक्षात दुर्गा का अवतार है। यह जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भाषा की होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पृष्ठभूमि को हम सबको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कई बार कुछ शब्द ऐसे आते हैं। एक बड़ा मजेदार, मैं एक कार्यशाला लेने के लिए पूर्वोत्तर में गया हुआ था, बच्चों के साहित्य की अनुवाद की कार्यशाला थी। मैंने मणिपुर के बच्चों से पूछा कि आपके यहां सुबह के लिए कौन सा शब्द है? एकदम से बच्चे बोले मॉर्निंग, नई पीढ़ी है ना। तो मैंने कहा बेटा ये मॉर्निंग तो अंग्रेजी का है, मैं आपकी भाषा का शब्द पूछ रहा हूं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जो भाषाविद हैं उन सबको भी आनंद आएगा तपंदा, कि उन्होंने, बच्चों ने बताया कि हमारे यहां एक शब्द नहीं है, एक शब्द युग्म है, फ्रेज है, जो सुबह के लिए प्रयोग किया जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उस शब्द को जब आप पढ़ते हैं तो वो बड़ा शब्द बनता है, कई शब्दों का समूह। वो कहते हैं जब कौवा युद्ध लड़ने का संकेत देते हुए आवाज लगाता है, यह सुबह का पर्याय। ऐसा क्यों हुआ होगा? वहां की पृष्ठभूमि को अनुभव करिए। सीमावर्ती प्रांत है, लगातार पुरुष वर्ग युद्धरत है, वहां पर संभवतः वहां की भक्षण पद्धति के कारण से मुर्गा जीवित नहीं रहा होगा, इसलिए केवल कौवा सुबह बोलता होगा जिसको खाया नहीं जाता। जी बस समापन कर रहा हूं। तो इसलिए
मणिपुर में अगर इतना बड़ा फ्रेज है तो आप जब हिंदी से मणिपुरी में करेंगे, मणिपुरी से हिंदी में करेंगे, तो इन सब चीजों की आपको थोड़ी सी चिंता करना पड़ेंगे। आपको अनुवाद में केवल यह करना है कि अनुवाद को युगानुकूल बनाए, आज के बच्चे को समझने योग्य बनाए, उसको देशानुकूल बनाए, अपने आसपास के परिवेश से वो उसको जोड़ सके, उसके बिंब, उसके प्रतीक, इन सब को भी देशज यदि हम सब बनाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अनुवाद के साथ हम न्याय कर पाते हैं। साइंस फिक्शन को लेकर के भी इन्हीं बातों को हम सबको ध्यान रखना है। साइंस फैंटेसी को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें भी परिवर्तन लाना है, जैसा मैंने कहा कि देशानुकूल बनाना है। एक प्राइवेट पब्लिशर ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी और वह पुस्तक थी प्राचीन विज्ञान कथाएं। कणाद को अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उनको यह जानकर आनंद होता है कि न्यूटन से सैकड़ों साल पहले कणाद ने सिद्धांत दिए हैं, आइंस्टीन से सैकड़ों साल पहले हमारे यहां पर भास्कराचार्य ने कुछ बातें कही है, और उन्हीं सिद्धांतों को पश्चिम का विज्ञान जगत वैसा का वैसा एडॉप्ट करता रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस देशानुकूल बाल साहित्य को सौंपने में यदि हमारी अनुवाद परंपरा सक्षम सिद्ध होती है तो ये हम सब लोगों का इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा अवदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Mr. Vikas Rabe. The time is very short, but we are enriched with the speeches, very valuable speeches of the four speakers. Last time, after listening all the participants, I gave a suggestion to the Sahitya Academy that there should be a central level translation committee of Sahitya Academy, where representatives of all the states should come and sit together and suggest how the translation work will go working. Then the work will be allotted to the regional level secretaries to take up the translation work very seriously. I thank you all. I thank all the participants and thank Sahitya Academy. Thank you. We would like to thank all our stalwarts present here who, through this very interesting session, explored the nuances, hurdles and challenges and triumphs of translating children's literature in India. हम उनके विचारों, उनके सुझावों के लिए, उनके सबमिशंस के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि साहित्य अकादमी की ओर से एक बैग आप सभी को दिया जा रहा है, लेकिन वो आपको रिसेप्शन से लेना होगा। आप अपना नाम बताइए, साइन करिए एंड देन द बैग विल बी योर्स। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टे विद अस, क्योंकि हम बिना ब्रेक के हमारा अगला जो सत्र है आरंभ कर रहे हैं। बस हमें कुछ मिनटों का समय दीजिए। May I request everyone to kindly settle down for the next session.
So as we all know that there is a diverse array of activities that have been organized during this mega festival. The festival also dedicates attention to marginalized voices with programs like the All India Differently Abled Writers Meet and LGBTQ Writers Meet. Let's be now a part of this interesting session on the first day of Sahitya Utsav. मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले इस सत्र की अध्यक्ष देविका देवेंद्र जी को। देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी प्रख्यात लेखिका, कथक कलाकार, ट्रांसजेंडर और महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की राज्य कार्यकारी सदस्य हैं। वर्तमान में आप मुगल काल के ट्रांसजेंडर समुदाय के कलाकारों पर शोध कर रही हैं। She is associated with the organizers of various festivals including the Taj Mahotsav, Rath Yatra Mahotsav and Khajuraho Nritya Samaroh. She is also a visiting expert for transgender community rights in Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, and gender sensitization expert in Rajasthan Police Academy, Jaipur. आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंच पर श्रीमती देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी। Welcome. Joining us also on this panel is Chandani ji. She is a peace activist from rural Karnataka. 2 दशकों से आपने सामाजिक परिवर्तन की प्रतिनिधि के रूप में नागरिक समाज संगठनों का समर्थन किया है। आपके संग्रह मानदा कन्नू द माइंड्स आई की कविताओं को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इसे कर्नाटक के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कन्नड़ भाषा पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। आपको सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा के पाठ्यक्रम विकास समिति के सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है। मैं निवेदन करती हूँ चांदनी जी से कि कृपया मंच पर उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। Also joining us in this session is साधना मिश्रा जी। आपसे निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और हम परिचय दे रहे हैं अपने पैनलिस्ट का। साधना मिश्रा जी is a transgender hailing from Kyonjhar, a crusader of human rights who demands no special reservation for transgender but an equal space in the mainstream as one among the gender coexisting with equal voice, opportunity, right, respect and love. She's currently working as Social Development Officer at Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar. सखा की सह संस्थापक के रूप में आप ट्रांसजेंडर के अधिकारों और सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आपको भारत श्री पुरस्कार, ह्यूमन अचीवर अवार्ड, दिशा सम्मान और दिशा सम्मान सहित कई पुरस्कार और अलंकरण प्राप्त हैं। साधना मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शांता खुराई जी को। She is a Manipuri indigenous Nupi Manabi transgender woman from Manipur, is the secretary of All Manipur Nupi Manabi Association, AMNA. Shanta ji is an activist, scholar, writer and artist, and few of her published works are VEDA, Gender at Periphery, Visibilizing the Invisible, The Forbidden Prophecies, the poems My Father and Nupi Manbi Thabal in visual medium, The Unheard Voice and Ate, Spirit of Ate. The translation of The Yellow Sparrow is her upcoming book and it is a collection of her memoirs.
तो हमारे बीच हमारे सभी पैनलिस्ट्स उपस्थित हो चुके हैं। देविका जी हैं और साधना मिश्रा जी हैं, चांदी जी हैं, शांता जी हैं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि कृपया इस सत्र के बाद आप अपने जो बैग्स हैं जो साहित्य अकादमी की ओर से आपको दिए जा रहे हैं, आप रिसेप्शन से उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आइए शुरुआत करते हैं इस सत्र की। मैं निवेदन करती हूँ देविका देवेंद्र जी से, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं, कि कार्यक्रम का आरंभ करें। सबसे पहले तो yes, I'm Chandni ji is super excited to speak on to the transgenders writing today. So I have seen like she's so excited and I really adore the excitement of her. Good afternoon, namaste, sat sri akal, adab to everyone. This is Devika Devendra S. Mangalamukhi. As the anchor Sahiba has already introduced me about me, who I am and what I do. I am Devika Devendra S. Mangalamukhi, and I'm the State Executive Member Advisor to the Uttar Pradesh Transgender Welfare Board Government of Uttar Pradesh. I'm the India's first trans woman who have received the National Award by the Government of India into my contribution of Indian classical dance Kathak. I'm a performing artist and I perform an Indian North Indian classical dance form Kathak. I'm a writer, author, motivational speaker, and I'm fighting for the transgender rights in India. I'm a vegan and I also work for the tribal, Dalit and most marginalized communities of India. आज मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ, फिर दोबारा से आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं अपनों से, और आज हम बात करेंगे हमारे अपनों से, हमारे अपने लोगों के द्वारा। समाज का वो तबका जिसे हम ट्रांसजेंडर समुदाय कहते हैं, समाज का वो तबका जो समाज में शोषित है, तिरस्कृत है और वंचित है, जो दरकिनार कर रहा है, जिसे समाज ने दरकिनार कर रखा है और जो गुहार लगा रहा है आप लोगों से कि हमें आपका साथ मिलेगा और साहित्य और कला किसी लैंगिकता, जाति, वर्ण के मोहताज नहीं होते हैं। I think the writings, literature and art and culture, it's beyond to the gender, caste and religion. Today I'm very fortunate that I'm going to moderate this session with the very good personalities, few of my good friends, and I have read about them. Today we will be going to talk on a very sensitive issues for the transgender writing and especially LGBTQI writers, my first writing experience. Here we all are not from we are part of the LGBTQI community, but here the session only dedicate for the transgender community. So whatever the writings will coming up, whatever the poet and author going to recite and talk about that based on to the struggle, challenges, pain, suffering of the transgender community and the transgender writers. So I begin with a poetry which I have written. It is a story of the struggle. It is a story of each and every trans woman. These lines, these phrases of my poetry dedicated to entire community of the transgender, especially the trans women. So I'm going to begin my session with this beautiful poetry. I hope you like it. The beginning of my struggle. I do write in English, I do write in Urdu, and I do write in Hindi regional language as well, but my preferred language, I'm very convenient to write in English and Urdu as well. So I'm going to recite one of my poetry, which is dedicated to the struggle of the transgender women and the transgender community of the world, and which I have wrote. The beginning of my struggle. The beginning of my struggle, which will be difficult to describe. The beginning of my struggle, which will be difficult to describe. The beginning of crushing and breaking my desire. The beginning
of crushing and breaking my desires, the beginning of my transformation from a different body to another body. The beginning of my transformation from a different body to another body who has been forgotten in this world. Who has been forgotten in this world, the beginning of breathing a new life into my dead body. The beginning of breathing a new life into my dead body, which is mine and only mine, which is mine, which relates to me, which relates to entire community of the transgenders. The beginning of isolating me from myself, the beginning of isolating me from myself, the beginning of silencing me, the beginning of silencing me, the beginning of separating me. Here I'm going to describe the pain, the suffering when we are cut off from the family, that we are not getting equal support from entire society, your relative, your neighbors, your good friend, when they have thrown you just because of your gender, that you are a transgender person, and who adore this, who have decided that I am different from another one. So this is the beginning of separating me from my family, which I never wanted. The beginning of separating me from my family, which I never wanted, the beginning of beating me, the beginning of tearing me and breaking my body, the beginning of humiliating me in the front of everyone and saying that you are not a human being, the beginning of humiliating me in front of everyone and saying that you are not a human being. Who have decided that we are not human being? The Almighty has given the life to us. So I have described my emotions through this poetry. कि मैं क्या स्ट्रगल महसूस करती हूँ, जो वेदना, जो संवेदना मेरे हृदय में है और मुझ जैसी हर ट्रांसजेंडर महिला के हृदय में है, उसकी कुछ कविता की गद मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ. The beginning of my destroying my own existence. The beginning of me destroying my own existence. The beginning of imprisoning society in the false chairs of custom and so-called tradition. The beginning of imprisoning society in the false chairs of customs and so-called tradition. The beginning making me stronger, breaking the shackles of the society and creating new path. The beginning of making me much stronger, much dedicated, breaking the shackles of the society and creating the new world and new path. Thank you so much. तो अब मैं यहीं से मोटिवेट करना चाहूंगी and then I'll sit. तो सबसे पहले हम रूबरू होते हैं. I'm going to because as the land of Jagannath, there is a one transgender woman. She is there, the writer, poet, and author. She is with us, Sadhana Mishra ji from Odisha. So she's looking so beautiful in the Odia sari actually. So now we are going to begin with Sadhana ji. मैं साधना जी आज के सत्र में जो हमारी ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं और जो ट्रांसजेंडर लेखिका के रूप में आपने अपने जीवन में जो विशेष योगदान दिया है, चाहे वो उड़िया साहित्य के लिए हो या आपकी रीजनल भाषा में, आज आपके शब्दों से जानते हैं आपके विचार. मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आज एक ऐसा बीज बोके जाएं जो फलवान हो और जो हमेशा हमेशा हमारे ज़हन में बना रहे. नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद मिस साधना मिश्रा जी. आई होप आपकी क्लैपिंग्स हम ऑथर्स को, पोइट्स को एक मोटिवेशन देंगी, तो प्लीज डू क्लैप फॉर अस. थैंक यू सो मच.
It's a very beautiful good morning to all. Respected Devika ji from the tracks, respected Chandini ji from the tracks, respected Santa Kurai ji, along with my all the beautiful trans friend over here and with all the beautiful delegates, guests, writer, eminent personality who love to listen us. I thought it's a beautiful moment. ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर दिवस है और मैं ये आभार व्यक्त करूंगी साहित्य अकादमी को जिन्होंने हम लोग को आज इस मंच पे खड़े होने की मौका दिया है और हमें निमंत्रण किया है. It was a wonderful experience to sharing my life story on this platform. Yes, I am sadhana, Satya Sundar Mishra to sadhana. My life is a sadhana. It's a sadhana for 36 years when nobody can talk about what is transgender in Odisha state. My life start with lots of pain, lots of obstructions because I am coming from very poor background with a very orthodox Brahmin family in Keonjhar district, Odisha. Apart from all the things, I think my one dialogue, I changed myself, then slowly changed my family, and it was impact slowly changed my colony, village, nation. Yes, I am sadhana. I start my life when I cry and say to my mom what happened because several times I am abused in my childhood. When I cry and say to my mom what happened to me, my mom say that I am special. Yes, I am special. In schooling, I am a good singer, I am a good writer, I am a good teacher because I teach many of the children. They all are my students. They are now the eminent doctor, eminent personality in different part of the world. When I stop myself, there is a beautiful world that I saw. तभी से मेरी कहानी शुरू होती है जब से मैंने अपने को I see what happened to my world. एंटायर मेरी ये कहानी और मेरी आज कविता जो है यस आई विश द वेरी ब्यूटिफुल इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑल्सो बिकॉज ईच एंड एवरी डे इज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे. So this is a very beautiful platform. I definitely wish to every beautiful women personalities this day. So my kavita is dedicating to my life and also to International Women's Day. I can read it in Odia, mother tongue language. Then I translate in Hindi or English. मैं भी एक नारी, मैं भी एक नारी हूँ. हाँ, मैं भी एक नारी जे पुरुष देहरे बांधी होइथिला 27 वर्ष धरी. हाँ, मैं भी एक नारी हूँ जो पुरुष के शरीर में 27 years बंध के रही थी. हाँ, मैं भी एक नारी जरायु की. हाँ, मैं भी एक नारी जरायु की गर्भाशय नथाई भी अनुभव करे माटी परी. हाँ, मैं भी एक नारी हूँ, मेरे पास ना गर्भाशय है ना जरायु है तो भी मैं फील करती हूँ कि मैं माँ हूँ. आई वर्क विथ ए केस 27,000 tribal students and each and every student call me Ma. The Ma is a very beautiful word. Without any worry, I am the largest mother in Odisha. हाँ, मैं भी एक नारी नारीत्व हासिल पाई केते जे परीक्षा देइची जे परी. हाँ, मैं भी एक नारी हूँ और इसको प्रूव करते हुए हमने कई बार अपने आप को टेस्ट किया है, परीक्षा दिया है आपके सामने. हाँ, मैं भी एक नारी सारा राती आखिरे मो स्वप्न देइची दिवालो के हाथ छाड़ी दिए पर करी.
हाँ, मैं एक नारी। सारा रात भर आप हजारों सपने देके जब दिन होता है तब आप हमारे हाथ छोड़ के चले जाते। हाँ, मैं भी एक नारी, मैं भी गोटे नारी। अकुहा वेदना असह्य जंत्रणा, अकुहा वेदना असह्य जंत्रणा बुके चापी धरी तथापि मु हसुथाए निर्बोधटे परी। हाँ, मैं भी एक नारी। हाँ, मैं भी एक नारी। अनेक सारे बाधाएं, यंत्रणा, सब कुछ को पेट में चाप के रख के हमेशा हंसने वाली मैं एक खूबसूरत परी। मैं भी एक नारी। कभी हमने सोचा था कि इतनी बड़ी पहाड़ चढ़ के कैसे आएंगे भुवनेश्वर, पढ़ाई करेंगे, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंटिन्यू माई PhD। घर में ना कोई सपोर्ट थी, पहली ट्रांसजेंडर थे। जब हमने शुरू किया मैं भी एक नारी, तभी घर वालों ने 23 साल तक दरवाजा बंद कर दिया। ना कोई ठिकाना था, ना कोई हमारा परिचय। तभी हमने स्टार्ट विथ वर्क विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, UNAIDS. I am the master trainer of Orissa State AIDS Control Society. Recently, I am the state icon ambassador of election commissioners and also part of the National Trans Counseling Board member. मैं खुद एक लेखिका की तरह काम करती हूँ। अभी now my post in the Kims Hospital also to look the gynecology and pediatric department. मैं भी एक नारी जो गर्भ में था तभी मैंने देखा तिरस्कार। अभी हजारों महिला गर्भ धारण करके मैं उनको एडमिशन करती हूँ, उनका डिस्चार्ज, उनका ऑपरेशन प्रोसीजर करती हूँ। बच्चा जब पैदा होता है पहली बार मुझे देख के बोलता है माँ, मैं भी एक नारी। जी, जो लोग हमें बोलते हैं कि एक सेकेंड, नारी की परिभाषा होती है अपनी मन से, अपनी सौंदर्य से, अपनी सेवा से, अपने धर्म से। मुझे जिन लोग ने तिरस्कार किया था 23 साल के बाद, उन लोग ने मुझे कहा कि तू हमेशा एक स्पेशल है। Yes, when I sit with 2017, the first trans woman in the White House with Barack Obama, that was their expected positions and talk to the trans personality. So, मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ, साहित्य अकादमी को आभार व्यक्त करती हूँ। साहित्य से जीवन आरंभ होती है। मेरे पास हजारों एक कहानी है, समय की बहुत पाबंदी है क्योंकि मेरे साथ दूसरी लेखिका भी है जो आप लोग को अनेक किस बताएंगे। मैं जाते जाते एक तो गाना जरूर गाऊंगी आपके लिए, जो एक कविता ही है, बट मैं उसके एक पंक्त गा के इधर से विदाई लूंगी। जी, पहले से हमारे जो चेयर है उनने बोला था जगन्नाथ धाम से। हाँ, हमेशा हम सोचते हैं जब कोई नहीं होते हैं तभी उनकी आंखें और उनके दीप दिखते हैं। अंधेरा हो जाता है जब रातें, निशब्द हो जाते हैं सब कुछ, हमें दिखता है उनकी दीप की दिया और हम गा बैठते हैं ये गाना। ये उड़िया गाना है, ट्राई करेंगे हिंदी में। एका एका थिला बेले जमा एका लागे नाही, काहारो देखा तो मदेह को जाए छुई। अकेले अकेले होते हैं तभी हमें अकेले नहीं लगते हैं। पता नहीं कोई अदृश्य हाथ हमारे को छू के जाते हैं। एठी नुहे सेठी नुहे केउठी खोजिबी मुई, महुदयर प्रतिटी स्पंदन जे तुम पाई। इधर नहीं उधर नहीं कहाँ ढूंढे हम, आपकी प्यार की हर एक स्पंदन
हमारे हृदय में स्थान है। जाने नहीं मु तुमको कि ये बात मो ठिकणा न थाई बिलाग आजी काहे कि एते आपण। हमको पता नहीं आप लोग का ठिकाना कहाँ है, आप लोग रहते कहाँ हो, पता नहीं वो अदृश्य चीज क्या है जो आप लोग हमें हमेशा अपने लगते हो। प्यार बांटना, प्यार चाहना, चाहते आंखों में होती है। बस एक चीज हम लोग को देखना जरूरी है, परिवर्तन मुझसे शुरू होती है, परिवर्तन मुझसे खत्म होती है। आई शुड चेंज माई mentality with all the negativities, accept the world, love the people, serve the people. Jai Jagannath. Namaste. Thank you so much. Such inspirational और इतना सुंदर गीत गाने के लिए। ऐसा लगा कि ये हमारी खुद की दास्तां है जो आज यहाँ से बयां की जा रही है, और आपकी पोइट्रीज में जो नारित्व है, जो लास्य है, जो लालित्य है, बिकॉज एक औरत होना, मुझे लगता है कि जब भगवान से कुछ अच्छा बनाना था, when Almighty decided कि I have to create something very beautiful, then he creates women, और एक औरत उसने बना दी जो खूबसूरत होती है, जो हर रूप में प्यारी होती है, हर एज में प्यारी होती है, नारित्व, लालित्य और प्रेम उसके अंदर होता है। और आज उसकी खास बात अपनी कविता के माध्यम से, द पोइट्री विच रिसाइटेड बाय मिस साधना मिश्रा जी, इट्स कमेंटेबल। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हम फिर से बजा दें। आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारे बीच में we lives in a country when we are having a different religions, thoughts, mindset, colors, gender, caste, north east states of our India, जो हमारा अभिन्न अंग है, जो हमारा गौरवशाली प्रदेश है, जहाँ जो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट जहाँ है वहाँ कई सारे राज्य हैं, पर हर एक राज्य की एक अपनी सोंधी सोंधी खुशबू है, अपनी एक कहते हैं ना एक अलग पहचान है। हम लोग कभी कभी मान लेते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर दैट कि ऑल स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर वेरी सिमिलर, बट आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबके थॉट्स अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, विचार अलग हैं, सोच अलग है, और ऐसी सोच को तोड़ते हुए हमारे बीच में today I'm highly delighted, one of my very good friend, the diva, the dynamic personality from Northeast. She herself an activist, very good writer, author, and she's an author of Yellow Sparrow. So I'm the Yellow Sparrow. So I'm going to invite Santa Kurai that please be with us, and I would like to know, Santa, what about your experience when you start writing? So please come on the stage and, okay, if you are comfortable to sit there, very good, very good. So now we are having Santa Kurai from Manipur. Thank you. Thank you, Devika, for that beautiful and comprehensive introduction about the Northeast, which is a very diverse region of India. And I would like to extend my warm gratitude to the Sahitya Academy for this LGBTI conclave. And it has been like around 5 years that we have been in the same platform, speaking and having conversation around our writing experiences, coming from different walk of life, LGBT community members coming from different background. And before I formally kick off my conversation about my writing experiences and also about my gender identity, I would like to let everybody in this room know that Manipur is in chaos. And because I wanted to talk about this
if I do not talk about these realities, then it will be difficult for the audience to understand where I come from. So let me begin with that. One trans girl is on hunger strike for the last 18 days. She demands to restore peace in Manipur and requested the Prime Minister of India to visit Manipur to intervene in the 10-month violent conflict that has been taking place in Manipur. And because when we talk about transgender identity, I have a very critical, critical ideas on this, because transgender identity and community is a very diverse identity. It has a lot of elements in that. So I see transgender in from two lenses. One is the rationality and the relationality. So it's simple like that. Transgender I see as a community, and on the other side, I see transgender as a movement. So as a community, transgender comes together for a common cause, for a common movement, but as a movement, we all comes together, irrespective of the political indifferences, irrespective of the cultures, of the geography, of the identity that we belongs to. But in terms of this creating as a movement and to amplify the momentum, then we leave that indifferences aside and comes together. And we also need to recognize this diversity, the difference that exists within the community. Otherwise, it also often stands as a blockers in the movement, because many of the peoples belonging to different identities, different backgrounds are often left out and are very much underrepresented, which is very important to convey in a platform like this, because the whole ideas of India, how it has established, is also something we need to have a very critical understanding of India. Why I'm telling this is because through my writings also, there were times that I often find myself very, very isolated in the journey of my writing, even though writing is my passion, because there are always roadblockers there. Whenever I try to present and position myself politically in my writings, then I cannot segregate myself, my indigeneity, from the overall trans identity and also from the Indian transnational movement. So how do I position myself in this larger national movement and larger trans culture is something which I always focus on. I'll just give you an example. In many of my work and in many of my literary work, history, culture, and my land has been an integral part, which also molded me to become Santa, today Santa. Because I just cannot merge into the larger understanding of transness. Because the way I present myself, my understanding of women, my understanding of transness is something which is, again, a little, little deviated from the larger context of this national trans hijra. I come from a very conflicted region. This is the reason why my conversation around trans movement often be a very integral part of conflict. So when I say conflict, my conflict with my gender identity, my conflict with my body, my conflict with my family, my conflict with the society is also something that needs to be reflected. So these are the few things that I have experienced in most of my literary work. Like, for example, I make this documentary movie, Nawa, the Spirit of Ate. It bagged the Best Non-Fiction Award in 2013. Because the movie was based on a true story of a 13-year-old non-conforming trans boy
So the beauty of that story also tells the gender plurality and multiplicity that exist in Manipur society. But because of this globalization and also the gender ideology has somehow, divided the community, the living in the tribe, it also really affects the gender plurality and community living in the state. And this movie reflected how that child has got the opportunity to continue her education in one government-sponsored school by getting the uniform he preferred to wear. So these are the things that we need to really, bring up and tells to the educational system also, because this is not actually a part of India. India is a very diverse, and in many of the indigenous communities, gender plurality always exists. So here my point is like, how do we talk about how we decolonize ourselves from the understanding of our gender realities and gender experiences, gender living experiences in the country. And the other thing is like, even in the Yellow Sparrow, when, and also I just wanted to make a little clarification here. When Madam was, introducing me, I strongly feel that my biodata has not been updated. It's like the Yellow Sparrow has already published, and I'm very glad to announce today that the Yellow Sparrow has been listed in one of the best book in the 24th listed best book to be reading in 2024. So gender is something which, gender or the trans is something which we always need to have a deeper understanding, because we just cannot claim transgender as a homogeneity identity. It's not homogeneous, it's very diverse. So in order to get a deeper understanding of the transgender identity, even transgender writing, we should have in-depth studies about the trans diversity that exists within the community and within the nation. So this is something which I strongly feel, that's what I wanted to talk about my writings and how literature can be used as a powerful tool to communicate with people from different walk of life, because it's a very effective medium to tell stories to the peoples. Like, for example, when I talk about Manipur and my location in Manipur, my trans location in Manipur, it's often also found myself very difficult to convey the message to peoples, because the entire Northeast region is very much alienated and isolated from the rest of India. So telling the stories from the Northeast, bringing the stories and telling to the peoples also is a very big challenge. So writing down something is kind of a legacy that's leaving to the younger generation of India. So if anybody wanted to do a research or started doing a groundwork on trans study, then my Yellow Sparrow and the other trans authors' writings can be used as a primary data to start doing the groundworks, because transgender writings and literature and also scholarly work are very, very minimal in the country. So I would like to encourage many of the trans writers to come forward and write their stories, and this is also one medium that one can express the deepest feelings, what they feel about. For example, many in my experiences, and also when I listen to the poems and also the stories that many of our trans my trans fellows, when they recite and then they read out their stories, it's all about pain, it's all about rejection. And in my book, there are a lot of sections when readers will find in that book that it also celebrates for being a trans. There is also beauty in trans. We have our code language, how we communicate each other, the way we flirt each other, and the way we tell our boyfriend stories to our friends. It's a joy of moment. So why should not we
collect that stories and bring out on the tables and tell the people that we are not less than others. We also have our own culture and society where the way we talk to, and you know, it's very beautiful. Trans people are very beautiful. I do not know Hindi. I cannot follow Tamil, but I have a lot of friends in India where somehow I am able to communicate with these people because of their transness. This is the reason why I always recognize and acknowledge the diversity that exists within the trans community. And that recognition is something that helps me to be in this position, that helps me to be friend with all these beautiful peoples across the nation. So literacy is something that helps us to bring out stories, communicate with peoples. It also establishes a very meaningful connection, both inter and intra-community. So that's the beauty of trans, and that's the beauty of trans society, and that is the joy of being a trans author, which has the capacity to bring out stories from the Northeast region and tell our stories to the larger audience. Thank you. Thank you so much, Santa, and we are very grateful to have you with us. And I am fully aware about your writings and your book. Accept my apology if I'm not aware that I know that you have already your books is already been published, and it's like I'm congratulating you for your great success which your book has got. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारे जो ट्रांसजेंडर्स राइटर्स मीट है, LGBTIQI कम्युनिटी स्पेक्ट्रम आप बहुत अच्छे से समझते हैं. ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है. बट आई वुड लाइक टू एड ऑन वन थिंग इन इट, दैट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, द सफरिंग, द पेन, द रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन इज मच हायर देन द गे कम्युनिटी, lesbian community, bisexuals, asexual, pansexual, because we are the people who not challenge our family, who not challenge the society, who not challenge the customs, traditions, so-called respect and regard in the society. We challenge ourselves. दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और शरीर कुछ और कहता है. और उन सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए, I'm very, very inspired from Santa, that Santa said she has break the barriers from her writings. This is the only weapon. The education is the only weapon. As Baba Saheb Ambedkar said, Dr. Bhimarao Ambedkar said, education is the biggest weapon to achieve everything in your life. And if we are educated enough, I think this is the biggest victory of each and every trans person in India and the world. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक आज ट्रांसजेंडर्स के स्ट्रगल पे भी हमने बहुत सारी बात करी, पर हमने ट्रांसजेंडर समुदाय के खासकर ट्रांस महिलाओं के उस पक्ष को भी जानना हमारा जरूरी है जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम अपकमिंग होते हैं, 14, 15, 16 साल के होते हैं, और उस दौरान मन में कुछ उमंग होती हैं. जैसे एक 16 साल की एक लड़की जिसको पार्क में जाना पसंद है, जिसको सजना संवरना पसंद है, जिसको मेकअप करना पसंद है, जिसको थोड़ा थोड़ा अपोजिट जेंडर्स के साथ एक अट्रैक्शन आना शुरू हो गया है. शी लाइक्स opposite genders and all. तो उसके बाद how she pretend herself, और वो कैसे रात में सोती है, वो अपने माता पिता से छुपती है, लजाती है, डरती है, और कैसे वो खत लिखा करती है. How she writes the खत, वो कैसे अपनी महत्व, अपने इमोशंस को, अपने लव को अपने प्रेमी के मद्देनजर रखते हुए अपने शब्दों से बताती है. कैसे नायक नायिका का रस जो है वो अपने जीवन में उतारती है और उसे लिखती है. उसको कुछ मैंने रिलेट किया है. बहुत छोटी सी पोइट्री है मेरी, विच इज इन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, जिसमें मैंने एक ट्रांस लड़की, उसकी उमंग के बारे में बात किया है. I have written about the love, the joy of a transgender woman or the transgender girl जो भी नई ओवरकम करी है, एंड कैसे एक व्यक्ति उसकी महत्वाकांक्षाओं को, उसके प्रेम को तोड़ देता है
शुरू शुरू में उसे बहुत अच्छा लगता है, पर जब वो देखता है कि मैं तो एक हिजड़े के साथ हूं या मैं एक किन्नर के साथ हूं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू लिव। शुरुआत में कैसे एक लड़का 16 साल का वो रिलेशनशिप बनाता है और उसके बाद वो मुंह छुपाता है, वो भाग जाता है, फोन्स नहीं उठाता है, वो ट्रांस वुमन तड़पती है, रोती है, वो ट्रांस लड़की सोचती है कि क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने प्रेम मांगा, पर क्या मुझे प्रेम मिला? वो नहीं मिला। So that's poetry which I have written, a very small lines which I'm going to recite front of you. I hope आप लोगों को पसंद आएगी। Very good, thank you so much sir। तो एक बार सर के लिए तालियां बजा दीजिए जिन्होंने हम लोगों के लिए काम लिखा है। तो I'm going to recite one of my composition, one of my poetry। We will win because you are with me. I will win because you are with me. We together will win because you are with me. We will win because you are with me. Be it happiness or sorrow, you are with me. Be it happiness or sorrow, you are with me. We will crush every powerful thing if you are with me. We will crush every powerful thing if you are with me. I will destroy myself in your fake love. I will destroy in myself in your love for you. Perhaps you said because, or perhaps you are sad because of your ignorance. You touch me. Now the heroine, now a trans woman is describing how they when they talk, when they are together, what are the emotions? So which I have written. You touch me like this and then. You touch me like this and then. Hold me in your powerful arms. Hold me in your powerful arms. And then say that you are close to me, darling. Then you'll say, you are close to me, my darling. I know you'll all likes and dislikes, but why this indifference? I know, a trans woman is describing, I know you're all dislikes and likes. What you wanna eat, how you behave, how you talk. I know all your likes and dislikes, but why this indifference? Don't you recognize me? Don't you recognize me? What is it? What is it? I'm neither a woman nor a man. What it is? I'm neither a woman or nor a man. I am a unique image of this Almighty. I am a unique image of this Almighty. What difference does it make to my caste or religion and gender of mine? What difference does it make to my caste or religion and gender of mine? Look how much I love you. Darling, look how much I love you. I am desperately in love of yours. I falls love in with you. But look how much I love you. Then, again, when the trans woman feels that person is not interested to go for a relationship with this trans woman just because of the taboo in the society, what people will say, then you are becoming ignorant after knowing me. You are becoming ignorant after knowing me. You have forgotten the days when I warmed your bed. You have forgotten the days when I warmed your beds. Why did you look away from the sight of me today when? Why did you look away from the sight of me today when I saw you
ಒಂದು ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಕಟ್ಟಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸುವಂಥ ಪದಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಜೆಂಡರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸು ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಇಶ್ಯೂಸು, ರೈಟ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮನದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು 2014 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಬರವಣಿಗೆನ ಬರೆದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ HS ರಾವ್ರವರು ಬರೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ. ಈ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮುನ್ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಆ ಮುನ್ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಮನದ ಕಣ್ಣು ಕರ್ನಾಟಕದ 2 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಿ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬರಹಗಾರರ ಬರಹಗಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಮುದಾಯದವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ SLC ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪದ ಭಂಡಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಕವಿಗಳು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋದೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯ. ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಿಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಜನಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. अपना अपना मातृभाषा अपना अपना बहुत खुशी हो गया कन्नड़ से बोला आपने. हमने बहुत ही सुंदर चांदनी जी का भी उद्बोधन सुना और उनकी राइटिंग्स के बारे में. चांदनी जी, आप हिंदी भी बोल लेती हैं. मैं चाहूँगी हमारे श्रोतागणों को इसको थोड़ा सा, अगर इसको छोटा सा बता दें कि आपने किस बारे में बात किया. बिकॉज ये हमारा भारत है. दिस इज द रिपब्लिक, दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री कि इतने सुंदर सुंदर रिलीजन्स, इतने सुंदर द लैंग्वेजेस और कलर है यहाँ पे. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री जहाँ पे ऐसे लाइक मुझे लगता है कि कन्नड़ भी उतनी ही सुंदर है जितनी मराठी, जितनी बंगाली, जितनी गुजराती. वो इतनी ही मीठी है, वो इतनी ही सुगंधकारी है और उसकी खुशबू मुझे लगता है पूरे ही जिस रीजन में जो लोग रहते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं. और हम तो बहुत उत्साहित हुए आज मैंने चांदनी जी के, आज दिल से मैंने चांदनी जी को सुना. और जो आई फील, मुझे गूज़बम्स हो रहे थे. द गूज़बम्स स्टार्टेड व्हेन शी वाज डिस्क्राइबिंग हर राइटिंग्स, हर पेन, सफरिंग ऑफ बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन फ्रॉम कर्नाटका. और मैं चाहूंगी थोड़े शब्दों में आप पूरा हम लोगों को बताएं कि कैसे, लाइक बहुत अच्छा लगेगा. चांदनी जी. मेरा हिंदी भी परफेक्ट इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोशिश कर रहे हैं. फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन करने के लिए. जो मेरा प्रेजेंटेशन में मैं जो बोला, मेरा गांव है, एक कृषि फैमिली है, मेरा दलित समुदाय से है. मैं 18 इयर्स में घर छोड़ के मैं कम्युनिटी का साथ जोड़े हुआ. मेरा छोटा बचपन पे जो बहुत लोग टीजिंग किया हमको पेट नेम से, मैं वो उसको आंसर बहुत ढूंढ लिया. मैं आंसर कहाँ भी नहीं मिला मेरे को. बाद में मेरे फैमिली का पास भी बात करने के लिए कोशिश किया, मतलब नहीं हुआ, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हुआ, आंसर भी नहीं हुआ. पहले हम जो देखा, मेरा ऑपोजिट जेंडर है, मेरा माँ मेरा गर्ल्स स्टूडेंट से. वो दिन हम सोचा ऐसे तरह का मैं होना है, ऐसा मेरा मन में जो आया, ऐसा मेरा बॉडी को मैं चेंज किया, माइंड को नहीं. माइंड कुछ बोला वो दिन, ऐसा थिंक करके मैं बॉडी को चेंज किया, माइंड को चेंज नहीं किया. अभी भी आई कंसिडर माई सेल्फ आई एम ए वुमन. I follow my trans community tradition, everything. I consider myself I am a woman. मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स है वुमेन कैटेगरी में है. बहुत लड़के में वुमेन बोल के लिया. मेरा पहले का राइटिंग है, मैं 6 क्लास में रहने के टाइम पे 2 लाइन लिखा मैं. वही टाइम पे स्टूडेंट का सामने में प्रेजेंट जो किया, स्टूडेंट लोग चिल्ला के बहुत डिस्टर्ब असके बहुत डिस्टर्ब जो किया, वो टाइम पे आई स्टॉप माय राइटिंग. देन नेक्स्ट स्टेप, व्हेन आई वाज सेकंड PU, आई स्टार्टेड माय राइटिंग. व्हाई? बिकॉज आई अट्रैक्टेड वन गाय. आई लव दैट गाय. His name is वसंत. सो इस बहुत, मैं थोड़ा लंबी हूँ, वो थोड़ा गुड्डी छोटा है, सो सीनियर है. वो लव एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका है लिखने का.
कविता लिखने का। सारा लोग लिखता है जो लड़की का बारे में, नेचर का बारे में सब लिखता है। मैं पहला जो लिखा मेरा बॉयफ्रेंड का, उसका खूबसूरत का थीम पे हम जो लिखा, वो बोला बहुत अच्छा है, आप रख दो, प्रिंट करेंगे, ऐसा सपोर्ट किया मेरे को। हमारा जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। थोड़ा दिन बाद में उसका फ्रेंड है ना, वो लोग टीज किया, मेरे को नहीं, उसको। उसका साथ क्या करते हैं आप? बच्चा फायदा होता है, आप क्या करता है ऐसा। वो डिसाइड किया हमारा रिलेशनशिप आगे जाने को नहीं होता ऐसा। बहुत चिल्लाया, में बात किया, एक दिन ये रिलेशनशिप कट हुआ। वो टाइम पे मैं सुसाइड करने के लिए गया। जो मेरा फ्रेंड जो आया, वो आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, वो ऐसे बोला। मैं बोली समाज में मेल का साथ फीमेल रहना है, फीमेल का साथ मेल रहना है, हम भी मेल हैं, वो भी मेल है, वो कंटिन्यूएशन करने के लिए नहीं बोल रहा है, उसलिए ऐसा वो जा, जो समाज क्या बोलता है ऐसा वो जा नहीं, ऑप्शन है हमारा, चलो ऐसा बोल के हम ट्रांस कम्युनिटी के अंदर गया। दो ही ऑप्शन था हमारा, सेक्स वर्क एंड बेगिंग, वही किया। उसका बाद घर छोड़ के कम्युनिटी का आने का टाइम पे मेरा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेके आया, मैं भाग गया। उसमें था वही टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन लेस बिट था। मेरा जो कविता में हम फोकस करता है हमारा फीलिंग, प्रॉब्लम्स, एक्सेप्टेंस, ज्यादा से ज्यादा लव के बारे में लिखता है। क्यों? मतलब वो ये मालूम है, अब सब लोग लिखता है, दूसरा आइडियोलॉजी यूज करके आप लिखता है, समाज बदलावन करने के लिए आप लिखता है, एक्टिविज्म के बारे में लिखता है, हमारा फ्रीडम के लिए आप लिखता है। अब मैं लिखता है हमारा फ्रीडम के लिए, हमारा जेंडर एक्सप्रेशन के लिए, हमको एक्सेप्ट करने के लिए, हमारा क्या प्रॉब्लम है वो उसका बारे में हम लिखने के लिए कोशिश किया। मतलब हम बहुत बड़ा पंडित नहीं है, हम छोटी है। मतलब जो हमारा नॉलेज क्या है, जो बावी என்ன சொல்றது रेवु, बावी कोड़ा, जो पानी ऐसा उठाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? छोटी। क्या है ऊपर? हाँ, उसका अंदर जो कप्पे जो रहता है ना, ऐसा ही हमें जो डिक्शनरी का जो शब्द तो है ना, वो ज्यादा मालूम नहीं है। हमारा नॉलेज क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वही हम मेरा बुक में हम लिखता है। बाद में थैंक यू, बाद में मेरा जो मनद कण्णु बोल के एक कवन संकल हम रिलीज किया। What's the meaning of Manada Kannu? Inner eyes. You should read my books. Don't read this eyes. You should open your inner eyes to read. After that, you should understand what is the book telling, like that. The two universities adapted my poetry. Revati books also adapted 300. It is an achievement. It's an achievement. We are going to celebrate that because we are getting a good opportunity to read so many students. बाद में जो मेरा नेक्स्ट बुक्स भी जो आ रहा है, हम एक सजेशन भी देता है बहुत यंग राइटर से हमारा जो कम्युनिटी में, उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देना है। हम फोकस करता है वर्कशॉप करने का, कैसे लिखने का, ऐसा बोल के। और एक इम्पोर्टेंट है, मेरा राइटिंग का जो वैल्यू जो है ना, पहले मेरा बुक का वो नहीं था मेरे को। आई गेव my books to write a मुन्नुड़ी, what you call मुन्नुड़ी। तो किताब का पहले जो आ रहे ना सारांश, जो लोग एक देख के जो मुन्नुड़ी आ रहा है कन्नड़ा में, इंग्लिश में इंटर, हाँ सब पहले का सीट जो आ रहा है ना मुन्नुड़ी, इंडेक्स। यस, थैंक यू सो मच।
और लिखने के लिए एक बड़ा कवि है एच.एस. राघवेंद्र राव, ए फेमस राइटर इन कर्नाटका, उसको दिया। 1.5 year हम वेट किया। वो फ्रांस में उसका बेटा को मिलने के लिए गया, फ्रांस में बैठ के मुन्नुड़ी लिख के मेरे को भेज दिया थ्रू मेल में। वो टाइम पे हम रीड किया, रीड करके पानी आया मेरे को ऐसा आंख में। मतलब क्यों, मतलब इतना वैल्यू है क्या ये बुक्स में? हम सिंपल लिख दिया, टक 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 बोल के लिख के गया, मतलब इतना वैल्यू है क्या इसमें बोल के। उसमें एक शब्द था, नन्नन्नु नाने केत्तिकोंडे। इट मीन्स हाई स्कल्पचर हम खुद किया, मेरा बॉडी को हम खुद ऐसा शिल्पी ऐसा जो किया बोल के लिखा था। ये तो बहुत अर्थपूर्ण था। वो रीड करके आंख में पानी जो आया, मतलब वो ऑडिशन और रीडर कैसा लेता है ऐसा ऐसा बोल के। बुक रिलीज किया, सब कुछ हुआ, मतलब एक्सपीरियंस भी हुआ, हमको एक एनर्जी भी तो आया, हम भी लिख सकता है। बहुत इजी नहीं है, हम बोलने का बहुत इजी है। एक बुक्स लिख के हम ऑडियंस को लेके जाके हम रीच आउट करना है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंज है। लैंग्वेज चैलेंज है, एडिटिंग करना है, शब्द को हम तो देखना है, ढूंढना पड़ेगा, पब्लिश भी करना है। हमको जो समाज में जो बोलता है, जो आप है बेगिंग सेक्स वर्क के लिए सही है, लिखने का नहीं है, ऐसा मन में है, वो फ्रेम को हम तोड़ना है, ऐसा भी करना है। ऐसा बहुत चैलेंज है हमारा। वो चैलेंज हम स्टेप बाय स्टेप हम जाके अब भी मालूम है हमको कर सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको सब कुछ कर सकता है। जो साधना जब जो बोला जो यूएस जाको आए बोल के, ये कितना शायरी इंग्लिश में टक 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 बोलता है। ऐसा हमारा जो कन्नड़ा में, ये इंग्लिश में एक्सपर्ट है, हम कन्नड़ा में एक्सपर्ट है, रेवती से तमिल में एक्सपर्ट है। हम सारा एक्सपर्टी को साहित्य अकादमी लेके जाके यही एक ही प्लेटफॉर्म में बिठाए हमको। सो इधर से हम थैंक्स बताते हो साहित्य अकादमी का। और एक बात है, हम 4 साल से इधर आए, हमको भी एक प्लेटफॉर्म जो मिला इधर साहित्य अकादमी में। हम कभी भी देखे LGBTQ का जो इशू जो रहता है, LGBT भी सही है, मतलब ट्रांसजेंडर भी थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। यही है सोशल इंक्लूजन है, यही है सोशल इंक्लूजन है। हम आगे इसका बारे में काम करना है। मेरा हिंदी बहुत खराब है और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच चांदनी जी, आपने बहुत खूब कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी भाषा में प्रखर होता है, श्रेष्ठ होता है। और मुझे लगता है कि साहित्य सिर्फ हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य नहीं होता, साहित्य हर भाषा में होता है। और मुझे लगता है कन्नड़ भाषा में तो महान संत और एक से एक कवि हुए हैं, और कन्नड़ भाषा उतनी ही प्रभावशाली है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और उतनी ही हमारे देश में, हमारे संप्रदाय में, हमारे साहित्य में कन्नड़ भाषा अपना एक विशेष योगदान रखती है। आपके लिए एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगी, कवि दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। वो पत्थर आप उछाल चुकी हैं चांदनी जी। आई एम हाईली डिलाइटेड। आज के सेशन में मैं बहुत उत्साहित हूं कि हमने अपने थॉट्स को, अपनी राइटिंग्स को शेयर किया। और एक बात मैं आज इस मंच के माध्यम से साहित्य अकादमी के जो हमारे एक ऐसे युग पुरुष हैं जिनकी मैं प्रशंसा करते थकती नहीं हूं, जो हमारे सचिव साहब, सेक्रेटरी साहब के श्रीनिवास राव जी, जिन्होंने चांदनी जी ने जैसा कहा कि उन्होंने पहली बार, मुझे आज भी याद है वो शिमला का लिटरेचर फेस्टिवल, जब पहली बार हमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक मंच मिला, हमें भी लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बदल सकते हैं। हमने जब सोच बदल लिया तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो मैं ऐसे महान युग पुरुष को, श्रीनिवास राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जयंत
हमारे माधव कौशिक साहब को, हमारे उपाध्यक्ष महोदय कुमेश शर्मा जी को और सभी व्यक्तियों को जो साहित्य अकेडमी में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे देवेश जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देवेश जी जो कि रीजनल सेंटर कोलकाता संभालते हैं हमारे, और कोलकाता से उन्होंने भी बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं सर आपका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं साहित्य अकेडमी, हमारे भारत सरकार, हमारा संस्कृति मंत्रालय और हमारे तीनों ही मंत्रीगण माननीय जी कृष्णा रेड्डी साहब, हमारी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और हमारी मीनाक्षी लेखी साहिबा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। और अगली बार साहित्य अकेडमी में मेरी खास गुजारिश है कि ये हम लोगों को अलग मत बिठाइए। LGBTQI सेशन, व्हाट इज LGBTQI सेशन? अब तो इतने समावेशित हो गए कि डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, घर में शादियां होके बहुएं बन रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, नर्सेस बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो अब क्यों हमें, अब तो हम मल्टी लैंग्वेज और जो भी बहुभाषीय जो आपके सेशन है, चाहे वो बाल साहित्य पे हो, चाहे वो कविताओं पे हो, चाहे किसी भी चीज पे हो, हमें अलग से नहीं बिठाइए, हमें सबके साथ बिठाइए। जो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। बस इन्हीं बातों से मैं रूबरू होते हुए बहुत शुक्रगुजार हूँ एंकर साहिबा की, बहुत पेशेंस की दाद देती हूँ। आपके पेशेंस में आपने इतना हमें समय दिया, हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। देविका जी, जितनी आपकी सुंदर सोच है, उतना जितना आप अच्छा लिखती हैं, बोलती हैं, उतना ही अच्छा आप संचालन करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इट वाज एन ऑनर to hear you as the chair of this session, और हम अपने बाकी सभी अन्य पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। The struggles and pains faced by you are profound and heartbreaking indeed. You have battled against societal stigma, discrimination and violence, all the while fighting for your own identities, to be recognized, to be respected. We salute your resilience, your courage, and unwavering determination to live with dignity. आप सभी ने अपनी प्रतिभा को, अपनी सृजनात्मकता को, अभिव्यक्ति को, रचनाशीलता को, अपने जेंडर इसे आड़े नहीं आने दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसका हम सम्मान करते हैं। And it was a pleasure to be a part of your self-expression, exploration and empowerment through the written word. It is a great honor indeed. और इसके साथ ही हम अपने सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच इस सत्र में शामिल हुए। Now we will break for lunch for almost an hour. 2:30 पर हमारा नेक्स्ट सेशन है और अपने पैनलिस्ट से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी किट्स रिसेप्शन से लेना आप न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं साहित्योत्सव के इस सत्र में. We already have our eminent panelists here with us. It's going to be a pleasure to be introducing them to you all. आप जैसा कि जानते हैं हमारे इस सत्र का विषय है साहित्य एवं स्त्री सशक्तिकरण. इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती सुनैना सिंह जी. She is among the most prominent leaders in higher education in the South Asian region and formerly the Vice Chancellor of Nalanda University. She has the distinction of being the first woman president of Shastri Indo-Canadian Institute, was the honorary professor of Oxford Academic Union, UK, Vice President of Indian Council for Cultural Relations, recipient of Ambassador for Peace Prize, Leadership for Net Zero Endeavor Award, Innovation Leadership Award, Asian Award, Vishwa Kavi Rabindranath Tagore Award, Bharat Gaurav Award, among many, many others. It's a pleasure to welcome her on the podium now, Srimati Sunaina Singh ji. We will also be joined by Srimati Soma Bandhopadhyay. आप बहुभाषाविद लेखिका और अनुवादिका हैं. आपकी 35 मौलिक और 15 अनुवाद पुस्तकें प्रकाशित हैं. आपके 250 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं. आपने कई प्रतिष्ठित भारतीय लेखकों की कृतियों का अनुवाद भी किया है. She has also edited a multilingual dictionary published by Bangla Academy. She is a recipient of Sahitya Academy Translation Prize, Meera Smriti Samman Aparajita Best Educationist Award, Rajbhasha Gaurav Award Best Academician Award by Damodar Valley Corporation, and currently she is the Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar Education University, Kolkata. Welcome, ma'am. We will also be joined by श्रीमती सुजाता प्रसाद जी. प्रख्यात लेखिका हैं, स्तंभकार, क्यूरेटर और धरोहर संरक्षणवादी हैं.
Her latest book is The Dream of Revolution, a biography of Jayaprakash Narayan, a former civil servant. She is currently the advisor to the National Gallery of Modern Art and the chief editor of a newly launched art journal. आप धरोहर अनुसंधान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श समूह में विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। I now would like to welcome on stage Srimati Stuti Goswami. She is a bilingual writer, editor, and translator. Her academic and creative works in Assamese and English have been widely published. Some of her edited and co-edited works include Essentially Speaking, Biographical Snapshots, Warp and Weft, Makers of Modern Assam, Pollen Grain, etc. Stuti Goswami ji is here with us. आप वर्तमान में असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ अब मंच पर जुड़ रही हैं श्रीमती वर्षा दास जी। इनकी विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हैं तथा बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी और उड़िया से अनुवाद भी करती हैं। आपकी नवीनतम प्रकाशन है उड़िया साहित्य दर्शन, लुकिंग फॉर गांधी इन आवर टाइम्स इत्यादि। Her poems have been included in a number of anthologies in India and abroad, and she is a recipient of several awards. The first one was at the age of 18, and she has worked with National Book Trust India for 3 decades in different capacities and is a former director of National Gandhi Museum, New Delhi. बहुत आपका स्वागत। Manisha Kulshrestha ji is also joining us on this panel. She is an eminent Hindi writer and poet. She has 3 collections of short stories, 6 novels, a travelogue, and some translations to her credit. And some of her works have been translated into many Indian and foreign languages. आप कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप, रांगीय राघव पुरस्कार, डॉक्टर घासीराम वर्मा पुरस्कार, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, रजा फाउंडेशन फेलोशिप, बनमाली कथा सम्मान, बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी सम्मान और अन्य अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने सभी प्रतिष्ठित विख्यात लेखकों का यहाँ पर। और आप सभी को रिमाइंड करना चाहते हैं, in case you haven't switched off or put your mobiles on silent mode till now, kindly do so now. Thank you. Over to the chair of the session, Sunaina ji. Can somebody help me with this? It's not working. Shall I go there? Let's start. By the time they do it. नहीं कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है हमको। आई थिंक अभी नहीं, हटा दे। Namaskar and welcome to all of you to this session on literature and women empowerment. I have 5 panelists here who have tasted empowerment. Shall I put it that way? Because Mahila Sashakti-karan, iske udharan hai sab. When we look at the word, before I invite them to speak, and I will set the time of 12 minutes each of you, so that we do have a little time for discussion towards the end, because I'm interested in knowing how you depict literature and empowerment during your journey of
accomplishments. But first, I was looking at the word empowerment. I think this is something that we all need to pause it upon, because today we do talk about empowerment of different sections of people. It's giving authority, giving a place of prominence for a section of people so that they are able to achieve their individual goals or probably make a mark for themselves. This is something that has been handed over to weaker sections. Maybe I can put it that way, because through our policies and other things. Now, the other meaning could be, do we empower ourselves? The journey is dual. One is something that has been handed over by society. The other is, how do we as individuals empower ourselves? Somebody said that are women being ghettoized by calling them, they need to be empowered. This is something that we need to go back in history and our own Vedic period, where we had Vidushis writing, 22 Vidushis who contributed to the Vedic literature per se. But centuries of, rules by the foreigners, the Muslim invasions, the Turks have invaded, the British have invaded. The invasions have taken a toll on the Indian psychology per se, and that is where women, the position of women, historically has come down under the influence of the Western and the Islamic rules. That is something that all of us know. In today's time, how are we progressing? How do we make a place for ourselves? For example, I've been holding chairs. There's another Vice Chancellor here. We've been given, and I see in audience also we have some of our friends who've been holding higher positions. This is something that government has given to us, and we have proved to them that we can actually translate an idea into reality. At Nalanda, that's what I have done. The illustrious historical university, which is there in our collective memory, more as an idea of Vishwaguru. When I went, there was nothing, ground zero. But when I left 6 years later, we have a full-fledged campus with courses multiplying from barely 2 courses to 30. The point I'm trying to make here is, as women, once they're empowered, they do deliver. This is something I'm sure all my panelists will say. Now, let's pause it also on literature. Literature, they say, mirrors life. It's a reflection. Literature also shapes and reshapes. Trotsky said literature is not a mirror, it's a hammer. It does not reflect, it shapes. But hammer as a metaphor is so difficult, as we all know, because when you're chiseling, your strokes have to be very delicate, have to be very, one has to be careful, because you give a shape, you sculpt something, but a harder stroke can break it. Now, literature shapes, reshapes, and we have found over a period of time, women writers have proved themselves and have shown through their writing as to how they can empower, but they have also shown how women have been relegated to a second citizen position, because all said and done, it's still a man's world. You will all agree, We still need to prove ourselves doubly hard that we can deliver. This is the harsh reality, whether we like it or not. So with these few observations, I was looking at, 2000 years ago, the first literary evidence where women were silenced is Odyssey, written by a classical writer. There you have a conversation between Penelope and her son Telemachus. When Penelope tries to say something, he says, no, you cannot talk. He's almost telling her to shut up, He says, language belongs to men.
and it is we who speak, not you. You know, we are talking about the first classical writing in the Western reportage, and how women have been silenced through culture. But here in India, we find that although we have moved down the centuries and maybe away from the influence of the British, the Mughal, but we still are subjugated. So are we still looking at ourselves as being ghettoized, as women empowerment? I would say empowerment is empowerment, like just as leadership is neutral. Empowerment should be to everyone, and women should learn to empower themselves in many, many more ways. With these few brief ideas to put you to think about it, I think I would now invite my panelists. We will begin with Professor Shoma Bandyopadhyay, also a Vice Chancellor in Bengal, and she writes extensively. I would like her to talk about her journey of empowerment. Each one of you, I think I would want you to talk about the literature that you have produced, how it has empowered you, and how it is going to empower, you know, the other women or the society per se. Dr. Shoma. Respected Chairperson of this session, Professor Sunaina Singhji, former Vice Chancellor of Nalanda University, my other esteemed co-speakers, Sujata ji, Shruti ji, Varsha ji, and Manisha Kulshrestha ji, distinguished guests, among which there is very eminent personality, Professor Surya Prasad Dikshit ji, there's Ranjit Saha ji, Urmila Shiris ji, Rajendra ji, and other distinguished guests. Very good afternoon to all of you. At the outset, I must express my heartfelt gratitude towards Sahitya Akademi for giving me this wonderful opportunity to share this dais with such wonderful stalwarts, women leaders here, and to address such august gathering. And of course to attend this prestigious annual festival of letters, which I have termed as साहित्य का महायज्ञ, जहाँ मुझे भी आहुति देने का अवसर मिला है. मैं जिस प्रदेश से आ रही हूँ, that is Bengal. You know, this is known for its rich literary heritage. Well, Madam Sunaina ji, she had requested us to speak about our own experience, but of course I will do that. लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने प्रदेश के उस साहित्य के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहूँगी, जिसकी वजह से हम वहाँ से यहाँ तक है. So, our language Bengali is 1,000 years old now, while Bengali literature was evolving from the Magadhi Prakrit. By 18th century, it was progressing with works like Charyapad, Jaidev, Chandidasa's Padavali. It then entered into the modern era by transcending the Vaishnava, Padavali and Mangal Kavya period, influenced by figures like Raja Ram Mohan Roy and Pandit Ishwar Chandra VYASA. These two names are not new to all of you. You know the role they played in advocating for women empowerment. And in this journey, of course, just as there were prominent writers like Kali Prashanna Singh, Michael Madhusudan Dutt, Dinabandhu Mitra Bankim Chandra Chatterjee, Sharat Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, there were also renowned female writers such as Sharma Kumari Devi, the elder sister of Rabindranath Tagore, Rasha Sundari Devi, Jyotirmai Devi, and Begum Rukia, to name a few. Although during the colonial period, most of the promotion was centered around these male writers, the fact is that it was through their collective efforts that by 1894, Bengali language and literature had reached such a pinnacle that Tagore remarked,
Our young Bengali literature has now become entitled to a respectable place in the rich literary society of this world. I unquote. The contribution of the female writers was as much as that of the male writers in creating its vast literary storehouse, but women writers got the right not only to write, but also to learn to read only after a long, long struggle. And the two great leaders of Bengal that I have named earlier, that is Raja Ram Mohan Rai and Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, showed them, these women, to fight for their rights. Raja Ram Mohan Rai was the one who brought the woman down from the burning pyre. And Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar taught them to be self-reliant. I consider myself very lucky to have got an opportunity to serve a 200-year-old institute which was earlier named as, or famous as, Sanskrit College. Now it has been upgraded to Sanskrit College and University. मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उस विश्वविद्यालय की कुलपति बन पाई थी in the year 2019. And there I recovered a treasure trove of historically significant documents and articles from 2 rust-covered corroded chests made in London by Chubb Company, estimated to be nearly 200 years old at Sanskrit University during my tenure. And the point to be noted is that 200 साल पहले, अभी तो 200 साल पहले ये 1926 में 1826 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ के प्रिंसिपल थे। और मैं 2019 में जब वहाँ गई तो मैंने देखा, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाती थी तो मैंने देखा देयर वाज अ आयरन चेस्ट लाइंग अननोटिस्ड फॉर इयर्स परहैप्स एंड द दरबार्स वर प्रिपेयरिंग टी, कीपिंग अ हीटर ऑन दैट चेस्ट। तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि मैं ये काफ़ी पुराना लग रहा है, और मैंने जब उसको हटाया तो मैंने देखा कि वो 1826 में बनी हुई थी, बिल्कुल ठीक उसी समय जिस समय इस विश्वविद्यालय की, इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो मैंने उसे खोला, मैंने कहा इसको खोलिए और इसमें देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। और उसके बाद जब इसे खोला गया, क्योंकि अंदर इसकी हवा जो है नहीं थी, तो इसको जब खोला गया, इट टुक ऑलमोस्ट 4.5 hours टू ओपन इट। एक चाबी वाले को बुलाकर उसको हमने तोड़ा और अंदर जो चीजें देखी वो that was not more than a treasure hunt, almost like hunting for a treasure। और खोलने के बाद मैंने पाया कि उसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उस समय विमेन एम्पावरमेंट के साथ रिलेटेड थे। व्हाट वर दोस डॉक्यूमेंट्स? उसमें टैगोर के एक उपाधि जो उन्हें महामहोपाध्याय दी गई थी उसके जैसे सर्टिफिकेट्स थे, उसमें मेडल्स थे, गोल्ड सिल्वर मेडल्स, लेकिन साथ ही उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वहां पर, उस डॉक्यूमेंट्स पर नाम था मुक्तकेशी विडो एंडाउमेंट फंड। कैन यू इमेजिन? 1856 में एक महोदय ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, took over the charge of principal of that college, and you know that ईश्वर चंद्र विद्यासागर, what is he known for? उन्होंने स्त्री को न केवल शिक्षित किया, उसे उसका विवाह जो था उन्होंने जो है उसका प्रचलन किया, चाइल्ड मैरिज से उसे रोका, बल्कि उसे एम्पावर भी किया। किस तरह से? इतने वर्षों पहले उनको लगा था कि एक महिला को सिर्फ एजुकेटेड करने से ही काम नहीं होगा, बल्कि उसके हाथों में पैसा आना चाहिए। शी शुड हैव सम मनी इन हर पोजेशन, तभी वो अपने आवाज को सुना पाएगी, वो निर्णय ले पाएगी, समाज में भी, परिवार में भी। क्योंकि उस वक्त तो परिवार में भी उसकी बातें सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग retrieved from the chest were the documents related to a widow fund named as Muktokeshi Widow Endowment Fund, created by that college. And till that we had no information about any such widow fund or Bidwa Bhata
being set up and dispersed by Sanskrit College. It was really an amazing and historical finding which threw up a slice of Bengal's history. The documents show that the Muktakeshi Widow Fund, which donated ₹6 to each of 8 widows across Bengal every month, and receipts of the money were also found where one of the receivers signed at that time. That means she was educated enough to sign and receive the money, and the rest gave their thumb impression. So you can well imagine that what we call today CSR, that is corporate social responsibility, actually VYASA was doing that sitting in his office in Sanskrit College in the year 1856. He understood that unless the women folk gets money in their hand, real empowerment cannot take place. The name Muktakeshi itself was enough to raise many queries in my mind. When we talk about women empowerment in the present context, we mean promoting women's sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social changes for themselves and others. Social change means eradicating evils from society, and in our Indian society, especially in Bengal, goddess Durga and Kali, both these, gods serve as an icon of empowering women. As per Puranas, Durga is known popularly as Mahishasur Mardini. After a long and arduous 10-day battle, she beheaded Mahishasur, restored peace and order on earth. And same is the story of goddess Kali, another symbol of women empowerment. These stories from our mythology are of particular significance simply because they remind us of a society and of the boundless vigor and tenacity of woman, provided she is able to develop and hone her skills. Just as goddess Durga and Kali were bestowed with a slew of powers and weapons by different powerful gods, and they became like a one-person army endowed with multiple special skills. So this aspect is especially relevant today, that a woman whose skills and powers are developed and nurtured is an unstoppable force, or can be an unstoppable force. And the most important thing is that these goddesses are all Muktakeshis. Now the relevance of this title Muktakeshi. जब मुक्तकेशी से हम लोग क्या समझते हैं? दुर्गा और माता काली जो हमारी देवियां हैं, उनके केश हमेशा खुले रहते हैं. That's why they are termed as Muktakeshis. दूसरी ओर देखिए, the widows, they are also Muktakeshis. बच्चे और बंगाल में उन दिनों 7-8 साल में ही उसका विवाह कर दिया जाता था, और 9-10 के साल में जो है, क्योंकि उससे कुलीन ब्राह्मण के साथ विवाह उसका किया जाता, जिसकी उम्र होती थी 60 से ऊपर, और पति के मृत्यु के बाद वो विधवा कहलाती थी. और सबसे पहला काम जो किया जाता था, उसके केशों से उसे मुक्त कर दिया जाता था. What was the reason? ताकि वो सुंदर ना दिखे. ये वो कारण था. So the creator of Muktakeshi Widow Fund might have used this term in an ironical sense. And this again proves that Vidyasagar's compassion for the widow, especially the child ones, as because the women, the section of the society which were meant to be nurtured and developed for the role they play in developing the society, were the most tortured and ill-treated ones. और इस वक्त आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं उसी मुक्तकेशी जो विडो इंडाउमेंट फंड था, उस पर मैं भी काम कर रही हूँ IGNCA से, कि इस वक्त उन मुक्तकेशियों का क्या हाल है. क्या आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो एरिया है, आप जानते हैं कि बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वहां पर कई छोटे छोटे ऐसे गांव हैं, जिसमें एक गांव है, उसका नाम है विधवा का गांव, विडो विलेज. क्यों? वहां पर एक भी पुरुष आपको नहीं मिलेगा, सारी की सारी विधवाएं महिलाएं, क्योंकि पुरुष जो है वो पेशे के खातिर वो जंगलों में जाते हैं शहद और जो है कभी कभी लकड़ियां चुनने, और मछली पकड़ना उनका पेशा है, और ऐसे में वो शेर के पेट में चले जाते हैं. So the whole village is, actually devoid of male. Only women stay there, and all of them are widows. उनका क्या वो कभी साहित्य में आते हैं? क्या आपको पता है साहित्य का काम क्या है? साहित्य का काम यही है कि जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको साहित्य सुने, उनकी पुकार को साहित्य सुने.
शायद अभी मैं एक सेशन में थी, वहाँ पर राजस्थान से आई हुई कोई लेखिका बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि जिनका ईश्वर भी नहीं होता उनके साथ साहित्यकार होते हैं, और ये बिल्कुल सही है। तो हमें लोगों को ये बातें पहुंचानी है, जैसे कि सुनैना मैडम जी ने कहा। तो विद्यासागर की बात हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि देयर वर a series of authors like Sharat Chandra Chattopadhyay, Manik Bandyopadhyay, not only women fought, but men also. They also wrote for women empowerment. They also advocated for women empowerment. Bankim Chandra Chattopadhyay, Sharat Chandra Chattopadhyay के जो महिला चरित्र होते थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे, और वो जानते थे किस तरह से अपने निर्णय को जो है लेना है और उसे पूरा करना है। इसके बाद हम आते हैं वहां तक जहां पर स्त्रियां, उस समय स्त्रियां क्या लिख रही थी, और अगर लिख रही थी तो उनके संघर्ष की जो प्रकृति था वो कैसा था। सो व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर स्ट्रगल एट दैट टाइम? टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू लुक बैक especially into the era of pre-independence women's writing. Now Tagore, who created many such great, female characters, to our surprise, once he remarked in an essay titled Panchabhuto, what he says, just note, I quote, in human society, women are the most revered ones. While man has always been in constant flux through various tasks, stages and changes, woman has always remained only as a mother and wife, never stirred by any desire for rebellion. यानी स्त्रियां कभी प्रतिरोध नहीं करती, कोई रिबेल नहीं करती. That is why the beautiful and harmonious form of woman has been permanently marked in the heart of the society. Maybe in a word, he might have, tried to glorify woman. But from the above quote by Tagore, one thing becomes clear, that, I quote, woman always exists as a mother and wife. But he never wrote that in the society, a man also exists only as a father and husband. And no woman also would dare to say that. However, Jyotirmoyi Devi, she was a 19th century writer, she fearlessly wrote, I quote, there is one caste on earth, the human caste, divided into two parts, women and man. But even from this, the solution to humanity's problem, as if was not resolved, they divided the human the female caste into two parts. One part consists of women who are called wives of men and the mothers of their children. In other words, they are servants, and they are considered chaste by society. The other part consists of women who are called the companions of men, who are deprived of domestic duties and are unattached and free. Society calls them fallen woman, end quote. She also further wrote that there are many other, distinctions besides just being a chaste wife and companion. ज्योतिर्मयी देवी क्या बोलती है? वो बोल रही है कि एक स्त्री समाज में कैसी है, क्या उसकी छवि है, ये इसके पुरुषों के साथ संबंध पर निर्भर करता है. Whether there is a man in his life or not. और ये मैं 19वीं सदी की बात कर रही हूँ. अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे. कभी वो कुमारी है, कभी वो विवाहित है, तो कभी वो अविवाहित है, लेकिन सारे के सारे संबंध उसके साथ. लेकिन एक पुरुष को हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करते जिस तरह के स्त्री को करते हैं. साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि उन दिनों ज्योतिर्मयी देवी जी ने जो कहा था उसको कहने के लिए बहुत साहस होना चाहिए था. Just one or two minutes. Yeah. So another two names I would like to take. Rasu Sundari Devi. She was perhaps the first one to write an autobiography, Amar Jibon. And what did she write? She writes कि वो उस समय 11 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी. 9 साल में, 11 साल में वो पढ़ना सीख रही है. कैसे पढ़ना सीख रही है? खाना बनाते समय she used to cover the book with a pallu, क्योंकि उसको छुप कर पढ़ना है, और दाहिने हाथ से वो खाना बना रही है. तब वो सोचती है, बाद में जब वो लिख रही होती है तो वो उस समय वो बोलती है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, और ये गुनाह मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों मुझे जो है छुपकर सबसे सीखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पति और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते. लेकिन ये जो सोच मेरे अंदर पनप रही थी कि क्या मैं गुनाह कर रही हूँ,
इसीलिए मुझे इस फीलिंग्स ने मुझे बताया कि नहीं, मुझे विद्रोह करना है, मुझे सीखना है, क्योंकि ये जो शिक्षा है यही मुझे इस तरह की जो सोच है, अनुभूति है, उससे मुझे बाहर निकालेगी। और आखिर मैंने पढ़ना सीख ही लिया और इसके बाद वो कई जो है किताबें लिखती हैं और बहुत बड़े जो है उनका नाम होता है। आने वाले दिनों में कई स्त्री लेखिकाओं के लिए वो एक नाम बनी। और तीसरा नाम और मेरे आखिरी जो है एग्जाम्पल मैं लूंगी बेगम रुकिया हुसैन की। आप जानते हैं कि उनका जो वो शी वॉज परहैप्स द फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर एंड राइटर जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था सुल्ताना's ड्रीम, सुल्ताना के सपने, जिसमें उन्होंने एक मर्दाना हरम की कल्पना की थी कि पुरुष वहां पर रहेंगे बिल्कुल जिस तरह से स्त्रियों को रखा जाता था और स्त्रियां जो है द वुमेन फोक दे विल रूल द कंट्री। और उनके वो एक ऐसा सपना देखती हैं कि द वुमेन हु इज द रूलर ऑफ द कंट्री इज स्किल्ड इन पॉलिटिक्स and is very much educated. The people, in her state are very happy. There is no corruption, no malpractices everywhere. There is no distinction between rich and poor. So thus Begum Ruqya has tried to show that how women can create, a better world than men. Since, there is time constraint, so I think I should stop here because if you start talking on women empowerment and how it has been predicted in the literature, it will take hours. एक पूरी किताब हो जाएगी, कभी फिर आपसे बातचीत होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी ये शहरों में अब तक जो है हमारी स्थिति अच्छी हो गई है। हमने अपने हिस्से की आधी ज़मीन और आधा आसमान काफ़ी हद तक पा लिया है, लेकिन शहरों में और अभी भी उन पिछड़े इलाकों में जो रहती हैं स्त्रियाँ, दोनों में काफ़ी अंतर है। उनकी आवाज़ें साहित्य, शिक्षा, राजनीति हर एक जगह सुनाई पड़नी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बेटवा के गांव के बारे में कहा था, अभी कई ऐसी आवाजें हैं जो सुननी बाकी है और वो सब हमारे साहित्य में यस और वो हमारे साहित्य में आनी चाहिए। थैंक यू। आई थैंक यू एंड थैंक्स टू द ऑडियंस। A very brief trajectory of empowerment of, shall I say, widows in Bengal. I don't think we have conquered it all, but maybe the journey is there. Let me now invite Sujata Prasad ji. She's an art curator, former civil servant. She's recently published a book on Jaiprakash Narayan, but before that I must say, because Sonal Singh is going to be here tomorrow, she has written a biography on Sonal Mansingh. Sujata ji, can I invite you? And can we take 12 minutes, please? I'll take less. Okay. To balance it out. Can I just sit here and do it? Yeah. I only hope you're visible to everyone. You're not visible to them. We can't see. Yeah, I think it's more important to be visible in today's time and age. I think equally important that the voice be heard. But a huge pleasure to be here. My little talk is going to be totally self-indulgent, so indulge me. I want to talk about books that empowered me as a woman. It began with my grandmother's rendition of stories from the Mahabharata, of the intrepid, fearless women, female protagonists who fought against the odds stacked against them. My favorites were Chitrangada, Arjun's wife, a beautiful princess from Manipur who was also known for her archery skills. Satyabhama, the third wife of Krishna, Amba, Draupadi. Each strong, bold, assertive, ahead of their time, ready to take their own decisions, and equally important, ready to face the consequences of the decisions. My most treasured, most loved protagonist, and there should be no surprise there, was Draupadi. The dramatic arc of her story pushes the limits of what a portraiture is capable of. She fascinated me all along my childhood, adolescence, and youth, entering my stream of consciousness in multiple ways. She was Panchali, a woman with great intellect. Born from Agni Garb, a womb of fire, she was Prakriti. When she was pulled by her long, curly, flame-like hair by Dusasan, she metamorphosed into Kali, pledging to leave her hair untied until washed by the blood of Dusasan.
fiery, feisty, a symbol of resistance. I read Iravati Karve's Yuganta, but continue to see Draupadi as a proto-feminist. Nearly 25 years after it was published, I also recently read Chitra Banerjee's The Palace of Illusions, and once again revisited the Mahabharata from Draupadi's lens. I would also like to mention another very remarkable short story by Mahashweta Devi, also called Draupadi, that highlights the intersection of caste and gender through the story of a young tribal woman who is sexually assaulted by upper caste men. There were 3 more books that greatly influenced me, and I'm sure greatly influenced other women of my generation, starting with German Greer's The Female Eunuch, Kate Millett's Sexual Politics, and Simone de Beauvoir's The Second Sex, that details the slippery tightrope walked by those who face structural sexism. All the 3 books had extraordinary and analytical sharpness. I found nothing more subversively empowering than reading passages aloud in a room full of friends and classmates. Amongst the other books that helped me evolve and helped me transcend the barriers that I thought initially were immutable were Ismat Chughta's stories, especially Lihaf, the quilt. Chughta's women were not cast as victims, even within gender-based power structures. Her interest in women's sexuality, their relationship with other women, their internal lives opens new doors for women questioning patriarchy. She often said that the real danger to a woman was the internalized patriarchal norms that resulted in parda of the mind. Other notable feminist writers who influenced me were Krishna Sopti, and I especially want to mention Mitra Marjani here, Amrita Preetham, you all know Pinjar, and Ajit Kaur, fundamentally her autobiography, which was such a powerful feminist manifesto in many senses. I was also reading authors like Shashi Deshpande and was especially smitten by That Long Silence, a story that dips into the life of a middle-class woman who struggles to assert her independence. There were hosts of other books written by authors that offered and continue to offer new ways of seeing. I would like to mention, almost all of them were astonishingly contemporary, capacious, bold, extraordinarily empowering. For instance, Virginia Woolf's A Room of One's Own, Doris Lessing's The Golden Notebook, which was a key text of the women's movement in the 1960s, the search, revolving around the search of a single divorced woman, mother for personal and political identity. Then there was Adrienne Rich, her poems, and much more than her poems, her book of Woman Born, a classic feminist text. Anita Desai's novels, the resilience of, that depicted the resilience of women in challenging times. Her daughter Kiran Desai's work that continues to challenge conventional gender roles. The enrichingly polemical novel by poet Meera Kandaswamy, When I Hit You, dealing with domestic violence. Manisha's protagonist, Malika, for instance, a child widow who was perhaps the first recognized woman translator. Was she, Malika? Yeah. First really important, yeah. I would like all of you to read the book, an astonishing book. The list is endless. Before I end, I would also like to mention Elif Shafak, an edgy, brilliant Turkish-British novelist whose books give voice to women's silences questioning gender inequality, and Ghanaian playwright, poet, and novelist, a literary giant really of our time, Emma Atta Aidu, who also served as her country's education minister and has been supporting women writers. She rejects the Western notion that African women or Asian women are disempowered. Much of her work, which is really layered, beautiful, and complex, is about women and the struggle for their rights. She won the Commonwealth Writers' Prize for her novel, Changes, A Love Story,
about a woman who leaves a troubled marriage and navigates a new relationship, challenging the patriarchal constructs that govern our orbits. It's not just women authors, as someone rightly said. Many male authors have also challenged patriarchal constructs. Let me mention just one for paucity of time, Khalid Hosseini. In his Thousand Splendid Suns, he takes such a pro-gender equity stance throughout its length and also features a feminist male character in the form of Layla's father. Much of the literature that I've been talking about, that I read and I continue to read, filters my own intimate, embodied experiences and have largely determined my life choices. They are the bedrock of my beliefs. Thank you. Thank you. Thank you. That was really, in a very concise manner, you've summed up how the writers can inspire us to get out of one's own silent zone. And she mentioned some of the books. I think, I don't know how many of you have read Mahashweta Devi's Dopadi. It's actually, Draupadi is a tribal name, is Dopadi. It's a short story where she has empowered Dopadi, you know, while she goes through her victim image. And of course, you know, if you look at Chitra Divakaruni, Palace of Illusion is through the eyes of the Draupadi, you know. But it's a fiction where she's saying that perhaps Draupadi was in love with both Krishna and Arjuna. It's something that, you know, it sort of challenges the readers to think afresh. I don't know how many of us are open to that idea, to think in that way. But literature as a tool of self-expression that empowers. I think these writers, you mentioned Adrienne Rich, Virginia Woolf, I thought was more a writer of silence, you know, again, a room of one's own, to be secluded, to be left alone, because she was also declared paranoid. Because when you talk a lot, women are, you know, that the different kinds of things that happen to these writers and how self-expression, you know, explicates their own desire for empowerment. I now invite Stuti Goswami, the young girl sitting next to me. She's an associate professor of English and she writes very well. So let's hear her story of empowerment. Well, if I say that I'm honored to be sitting on the dais, that will be an understatement. Still, I'll just try to share some thoughts. Basically, I suppose I'm yet to be, the word stalwart was used a while ago, but I definitely am not. I'm leagues away from that. So here I will essentially be wishing to speak on a few thoughts that have haunted me for a while and that I would like to kind of share here before this August audience. Respected Chairperson, ma'am, I'm going to use my stopwatch so that I do not cross the time limit. No, but even then. Exceed. Yes, ma'am. So, namaskar. Now, when we say literature and women empowerment, essentially we have the act of writing, the act of reading, and the act of interpretation. Now, how do we see writing as? And that is how I see writing as. Writing as, firstly, giving voice to the voiceless, giving wings to imagination, of course. Writing is also resistance. It can be an act of resistance. Writing can be a political statement as well. And of course, writing is or can be a voice of protest. Now, when we talk of writing, are we talking only about the writers who are writing, vis-a-vis empowerment, of course, or are we also looking into the characters that these writers create and who are empowered or who endeavor to be empowered, who endeavor to break the shackles of all kinds, patriarchy included, in the narratives that are created around them? If we look into, if we turn the pages of history, and I'll only be speaking vis-a-vis India or Bharat, we have
a plethora, a litany of women authors, female authors, if I may use the term, who have been writing, and through their acts of writing, they have been questioning, challenging, maybe attempting to, invert traditions and customs or prejudices, of course, definitely. When we look at the Bhakti movement, for example, in India, whether it's Andal, whether it is Akka Mahadevi, whether it is Mirabai, or in fact, for that matter, Lalla Arifa, we have these women authors, poets, saints who have written about their unflinching devotion to the Almighty in whatever form, and a lot of times this could even be seen as challenging the prevalent traditions of a woman expressing herself, her passion, her emotions, her devotion towards a male deity or a male god. Around the same time, 16th century, in Assam also, because I come from Assam, in Assam also we have this poet, I. Padmapriya. Padmapriya was her name. She was the daughter of one of the chief disciples of the medieval saint, reformer, poet, translator Hankordev and his disciple Madhavdev. So Padmapriya's father was Gopaldev Atta. So unfortunately, however, Padmapriya's writings have not really survived, but there are records of her writing, and she was a poet too. Now, because I talked about Assam, I would like to just very briefly and in a very concise way throw light upon a tradition, quote unquote, in the elitist sense, the tradition of Assamese writings in the Assamese language by female authors. Of course, this whole discussion is still eschewing the old traditions. I have not come to that. But when we look at, for example, the British Assam, Assam, literally, the region came under British rule after 1826, after the Treaty of Yandapu. In the late 19th century and the early 20th century, in the cusp of that period, in the turn of the century also, we have a few female authors, whether it is Dharmeswari Devi Borwani, this is early 20th century, of course, Trolokeswari Devi, and they were, of course, daughters-in-law of eminent families, or maybe they were privileged also that way, but they wrote, and they were among the earliest writers in the Assamese language, female writers who were published as well. It was not only about writing, it was also about being published. A little later in the early 20th century, we have Rajabala Das, who also founded the first female college, the first college for female students in the entire region. And then we have someone called Chandraprabha Hoykyani. She comes, of course, much later in the second, third decades of the 20th century of Assam. I would like to specifically mention one story by Chandraprabha Hoykyani. The story is, it was published in 1929 in an Assamese magazine called Avahon. The title of the short story is Doivagyar Dohita. So essentially, this is a Brahmin widow who refuses to accept all the norms and rules of reticence that were expected of Brahmin widows or widows in those times. And she was a young girl who was married young, and she became a widow at a very young age. But she refuses to accept that and instead becomes a mother to what was, of course, in that society termed as an illegitimate child. So she gets pregnant out of wedlock, and this is after her husband passes away. This is slightly autobiographical, but this is one of the earliest instances in the Assamese literature where a female writer is actually talking about a woman asserting her independence in that society, and asserting her independence of motherhood, asserting her motherhood also, without bowing to the restrictions and restraints of patriarchal society. A little later, she has other short stories also. A little later,
around the independence of India and the immediate post-independence era, let's say the 40s and 50s, we have a magazine, Assamese magazine called Ramdhenu, so the entire age is called the Ramdhenu age. There we have authors like Anima Datta, Nirupama Borgohai, Indira Goswami, Mamoni Rosam Goswami, who started writing. And their writings definitely focused a lot on the thematic aspects. And their writings, of course, are essentially a voice of protest against discrimination against women in society. I referred to Chandraprabha Hoykani's short story of a Brahmin widow. We have another, a little later, we have Dotal Hatir Uye Khwa Hauda, which is a novel by Mamoni Rosam Goswami or Indira Goswami, translated to English as The Northeastern Tusker, if I'm not wrong. From 50s, 60s, 70s onwards, we see a shift in the kind of writings that women writers from Assam were engaging in. A lot of political events came to the scene, especially 1980s onwards. There was the Assam agitation, there was a language movement before that, and these political aspects seep into the kind of writings that Assamese women writers were writing. And we also increasingly, 80s, 90s onwards, we see increasing experimentations with the narrative techniques. So, of course, certain common issues were always touched upon, whether it was discrimination against women, women asserting their voice, and so on. But the political and the kind of political influence, the kind of political awareness that women authors, female authors showed in their writings is something I would very briefly like to touch upon. For example, I mentioned Nirupama Borgohai. So Nirupama Borgohai has a short story called Utsav. There basically it's a story of a woman who becomes a widow at an early age. Her husband was a fish seller. What happens is, after her husband dies, she steps out of the domestic space for the first time, and she starts also going to the market, selling the fish, collecting fish, the whole process. It's a whole lesson for her that life gives her. Her son grows up, she brings up her son. After he's married, he starts taking over the business, so to speak. And she thinks, finally, I will have some semblance of happiness in life. Unfortunately, her son dies in a bomb blast. So this is also the time, 90s is also the time when there was insurgency in Assam. And there was insurgent operations, there were counter-insurgency measures. And a lot of the women, the writings, particularly by women writers of those times, really reflect this. Utsav is one example. Then there is another short story by Orupa Patongia Kolita. It's Orunimar Swadekh. So it's a very different story because she's married to, and she's happily married to a family, and her life's ambition is just to be happy with her family, look after her husband's family. When she becomes pregnant, she kind of goes off to her mother's house. And just before that, her brother-in-law becomes a part of a separatist outfit. So her son is born and she's very happy. She wants to come back to her husband's home, to her home. But when she returns with her infant baby, she sees that her home has been burnt to ashes because miscreants had actually set fire to her home because her brother-in-law was a part of a separatist outfit. One more story that I'll talk about is, it's of course a much later, if we look at the chronology of it, it comes much later. Manorama Das Medhi's short story, Nodi Bura Dore. Nodi Bura Dore, which would loosely translated would mean like a river. Nodi is river. This is about a woman, a lady who is on the throes of death. So she's in her deathbed, and her children have already been suffering a lot of ignominy because her son had gone to an insurgent group. So her son became an insurgent. Now, because of that, already her daughter and other children and other villagers also were randomly picked up by the army to
question, and this is a truth of late 90s, of Assam of the late 90s. Any village that had at least one son going into an insurgent outfit immediately came under the watchful eyes of the state, and there used to be constant picking up boys for questioning was a common thing, and it's a reality. In this story, what is shown is that Bokul Bora is the name of the boy, the son. Now, when the mother, she dies, and at the end, she just keeps hoping if she can see her son one last time. And it doesn't happen as such. And when she dies, even the last rites are not accorded to her the way maybe she deserved. Because the moment news spreads that this woman is dead, the army becomes alert and they surround the village because they know that the son definitely will come to look at his mother one last time. So the dead body here, the dead body becomes a site for political negotiation also. And this short story very poignantly shows, so both sides are shown in these short stories, and this short story definitely shows how, even a woman, as a mother, she suffered bringing up her son through a lot of hardships, but afterwards, when her son went, and this is something we have to understand, insurgents became insurgents because of an ideology, essentially. So he supported an ideology, became an insurgent, all the suffering was handed over to his family, his mother particularly. And there are a lot of stories like this that I will not go into, of course, but what I essentially tried to highlight in this very brief way that I attempted to at least, is to highlight how it's not always about gender discrimination that women writers write. A woman writer is a writer essentially, and she can write on any aspect. Somehow I think a lot of times when we talk of women empowerment and literature and women writers, we end up talking about a very specific kind of writings that women have written, and it was essential, undoubtedly. But we have a lot of political writings also engaged in by women writers as other aspects. Ma'am, I don't know if we have time. Yes, I'll sum up, yes. So when we talk of women and empowerment, and at the beginning I said, writing is empowering because it is an act of resistance, it's a political statement, it's giving voice to voiceless, giving voice to the silenced, because we talk of the woman being silent, but the woman is silent and she is silenced also, and writing becomes that safe space, I would say, for a woman to express her voice, to express the voice of others who do not maybe have access to articulating their experiences. And it is with this notion of safe space that I would like to wrap up, ma'am, because last point, when we say safe space and women, I guess we often talk about no violence against women. But then a safe space for a woman writer is also the space where the woman has the freedom to think, the freedom to articulate her thoughts into writing, the freedom to get those published and let the world know about those thoughts, and the freedom to read, interpret, analyze, dissect, criticize, critique, oppose, or encourage thoughts that that are beneficial for society, that are beneficial for women, that are conducive for a healthier environment in society. Thank you so much. Thank you, Suti. That was looking at literature or women's writing as a site for resistance, and also she again touched upon different stories to do with widows. And I think the state of widows, whether it is Bengal or Assam or Karnataka, one short story that comes to my mind is Ghat Shraddha, which I don't know how many of you have read or seen the film. It's about the widow's plight, a widow who becomes pregnant. A very interesting story out there. But she spoke about Mukt Keshi hair, and Mukt, when you are, your hair is shaved off. And it's not just to curtail the beauty, but also the diet. As widows, they had to eat only one day a meal because, again, food is seen as adding to their desire.
you know? So how do you curb the desire? So lot of facets and very interesting stories that we look at, and it's as I said, literature as a tool of self-expression. How do we look at different characters who empower us in many ways, and also characters who make us reflect on life and reshape culture, think and reshape. Now, with those few words, let me come to Dr. Varsha Das. May I invite her? She's a prolific writer and translator. You know, some of her Khidki Khol Do, Chahakta Chauraha. I think you should talk about it, because I have been following this and reading it up. So you must tell us a little. This is going to be interesting. Varsha Das ji. My pranams to all of you on the dais and in the audience. Well, the topic given to me is literature and women empowerment in Gujarati literature. So I will stick to that. So, well-known American critic Ellen Showalter has mentioned 3 phases of feminism. One is feminine, which is women demonstrate their empowerment. Second is feminist, where she speaks out. Her voice is raised against men. The third is female, where she keeps herself independent of men, participates with him in all the areas, maintaining her power and freedom. So I would like to speak about Gujarati literature in this context. Although there are many writers and books, but I will limit myself due to paucity of time. In the feminine category, I would like to place Labhuban Mehta's short story collection, Bindi, which was published in 1955. I would place her in feminine phase. There are a number of male and female characters in this book, and they ask a very pertinent question, and I quote, "But don't you think the best state of happiness in married life is in freedom? And the environment around us should also be the same?" Now, this question is asked by both male and female. So Labhuban's style of writing was simple, straightforward, without flowery expressions. That was perhaps one of the reasons of her popularity. She used to write a weekly column called Sansar Chakra in a widely circulated Gujarati newspaper, Janmabhoomi. Women of different strata of the society used to seek her advice regarding their relationship issues, and Labhuban used to encourage them by making them aware of their empowerment. Then we have Vinodini Nilkant, her book Kadalivan, which was written before 1960. It has a reformist framework and deals with women's issues regarding marriage, remarriage, widowhood, superstitions, etc. The author finds solutions in Gandhian philosophy. Gandhiji had made women aware of their empowerment and had brought them out of the 4 walls of their homes during various satyagrahas. In Kundanika Kapadiya's novel, Parod Thata Pehla, Before the Daybreak, written in 1968, the main character Sunanda, a medical doctor, leaves city life and goes to a village to serve the villagers. There she comes across a number of women who are named as Mani, Lalita, Shobha, Paulami, etc., facing a variety of adverse discriminatory treatment. These women take Kundanika Kapadiya to her next very famous and Sahitya Academy Award-winning book, Saat Pagla Akashma, 7 Steps in the Sky. It was published in 1984. Saptapadi, 7 Steps of the Marriage Rituals,
in which the bride and the groom go around the holy fire and make their vows, has a different interpretation in this novel. These women break open their shackles and fly to enjoy freedom. The author tells us the story of Vasudha in Saat Pagla Akashma, her journey from subjugation to freedom. Vyomesh is Vasudha's husband, and Faiba, that is Vyomesh's father's sister, who brought him up, are the main characters. To Faiba, a daughter-in-law was a workhorse. She is expected to work all day. She must cook what a husband likes. I would like to bring in one incident which emboldened Vasudha to speak out, and that shocked Vyomesh. Vyomesh gets the news of his aunt's death in the village when he was having a party, entertaining some people at home. He tells Vasudha that he would not break the sad news and disturb the party. He kept smiling and pretending as if nothing had happened. This shocked Vasudha, and for the first time, she spoke out. She said, "I can't tell what somebody else should do. All I can say is what I would do. If I was really sad, I would behave one way. If I wasn't, would behave differently." That's being honest, living according to one's feelings. Vyomesh was shocked because he had never heard Vasudha talking this language. Even Vasudha was surprised at herself. Where did she get this courage from? And she had never talked to Vyomesh like this before. She had always felt dominated by him, afraid to express an opinion that was different from his. Which bird spreads its wings today? Vasudha is asking herself. A suppressed woman flew to freedom in the sky. And I found two professors from Baroda University, Dr. Ravaiya and Mrs. Malaviya. They said about this book in one of their papers, and I quote them, "The enthusiasm that Kapadia injects into the story fuels the voice of the women crushed under the hydraulics of patriarchy. The novel, as an inspiration and a kick for the other women writers or women in general, brought a wave of feminism in Gujarati literature. Her journey and growth depict her 7 steps towards her final freedom when she identifies her true self and worth, and leaves her husband's house to live her life on her own terms. Ila Arab Mehta's novel, Battris Putulini Vedana, is considered the first woman-centric novel in Gujarati literature, published in 1982, which is prior to Kundanika Kapadia's Saat Pagla Akashma. The central character of this novel is a writer, Anuradha Gupta. Anuradha wants to live as woman in the world dominated by men. She is asked to write a play for the centenary celebration of one Arya Nari Hitavardhak Mandal. In this play, she depicts some women who want to come out of their tough, adverse circumstances. She draws attention towards the advertisements in a magazine in which a partially nude woman is smoking a cigarette. The same magazine contains stories about pious women also. One woman of a story speaks out, "Not a goddess, not a female demon, allow us to remain mere women." These are the words of Anuradha. There are a number of female characters in Ila Mehta's novel, like Anuradha is a writer, Chaya works as a sales manager in a private company, Vibhavari is an actor, Rekha is the wife of an industrialist, childless Vinodini is a housewife, and so on. Now, Anuradha, for her play, takes 4 characters
from the Ramayana. They are Kaikeyi, Kaushalya, Sita, and Manthara. 4 women who were going to play the role of these 4 women of the Ramayana in reality are leading tragic lives dominated by men. Those women, instead of their dialogues written for each one's specific mythological character, begin to narrate their own life stories. They are neither feminine nor feminist, they remain female. They tear off their scripts. One old woman tells Anuradha that this script should have been torn many, many years ago. Recently, I came across an unusual novel. The title is Lari Yuddha. It's written by Ela R. Bhatt, published in 2001. Yes, this is the same Ela Bhatt who empowered street vendors and founded an organization called SEVA, Self-Employed Women's Association. Lari means handcart and Yuddha is war or conflict. The novel begins with the destruction of a marigold flowers which Kunvarba was selling on her wooden handcart. The title of the first chapter is How Did the Massacre of Marigold Begin? Kunvarba had a specific place in a lane where she used to stand with her handcart full of fresh and shining marigold flowers. One day, Jeevan Ram, driver, entered the lane driving his red color municipality bus, and instead of taking it from the space on the right, he hit Kunvarba's handcart. Flowers flung in the air got scattered all over the lane. They were crushed under the feet of people. Her cart broke into pieces and Kunvarba got stuck behind a garbage drum. One young boy called Deepu, he took a photograph of the garbage drum, providing a documentary proof. Handcarts owners group met and discussed the incident. They felt that this was not a mere accident. Big vehicle owners and drivers wanted to remove handcarts from the road. This issue was publicized in the newspapers by the politicians and citizens. Large number of letters were written to the newspaper editors in favor of handcart owners. Fortunately, the handcarts owned by men and women continue to survive in the city. All these are the stories of ordinary women who performed extraordinary role and demonstrated their empowerment. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Varsha Das ji. What an interesting tale of battle against stereotyping by all the stories and the books that she spoke about. How women, these are ordinary women, perceived as ordinary, but perhaps extraordinary in their battle against stereotyping. And we now have the pleasure of inviting Manisha Kulshrestha. She's a Hindi writer, novelist. We've just heard about Mallika. It won her the Rajasthan Academy Award, Sahitya Academy Award. Also going to be made into a film, I'm told. Mallika, by the name Mallika. Perhaps you should share the story because sure. I know this, but perhaps the audience will. So welcome. Please tell us a little about your journey, your character's journey of empowerment. Thank you, Sunaina ji. आदरणीय मंच, मुझे खुशी है कि इतने बौद्धिक मंच के साथ मैं अपनी बात शेयर करने जा रही हूँ और यहाँ सभागार में बैठे सभी प्रबुद्ध। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सुनैना जी चाहती थी कि हम सब अपने बारे में बात करें, लेकिन हम सब अपने अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके लाए थे और हम सब ने ही वही बोला जो हम चाहते थे। मैं भी तैयार करके लाई थी कि भाई मैं थियरी गाथा में बात करूंगी, श्रृंखला की महादेवी की श्रृंखला की कड़ियों की बात करूंगी और लेकिन मैं अब आपने जैसे गुजारिश की तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ इस कविता से। योग माया। कृष्ण की माया से तुम्हारा ऋणात्मक योग था, योग माया।
तुम्हें विनष्ट होना था लीला पुरुष की लीलाओं में योग माया। तुम्हें बस उड़ जाना था समय कंस के हाथ से फेलोमिना की तरह। योगीराज के समानांतर योग माया, अब समय कुछ कहे या पुराण कुछ कहे। गर तुम न सौंपी गई होती कंस को, भगवान से पहले भगवती पुराणों में इतिहास उलट गया होता। भगवान से पहले कहलाती तुम भगवती और पुराणों में इतिहास उलट गया होता। भविष्य के गर्भ में ठहरता कोई नवयुग पितृसत्तात्मकता के उलट। मैं चित्तौड़गढ़ से हूं और बहुत हैरानी की बात है कि वहां शाही परिवारों में मीरा नाम नहीं दिया जाता अपनी बेटियों को, लेकिन इसके ठीक उलट जो वहाँ के आदिवासी हैं, भील हैं, गमैती हैं, मीणा हैं, उन परिवारों में मीरा का नाम भी बच्चों को दिया जाता है और वो लोग मीरा भजन भी गाते हैं। तो हमेशा मैं ये जहाँ तक सोचती हूँ कि मीरा सबसे पहली ऐसी कवयित्री रही जिन्होंने बहुत अलग तरह से पितृसत्ता को एक झटका दिया था। जैसे कि मीरा इस जगह कहती है, राणा रूठ्या जग राख्या, या फिर कहती है सिसोदियो मारो काई कर लेसी। तो मैं जब ये बात करती हूँ लोक की, जिस लोक से मैं आती हूँ, वहां पर स्त्री गीतों और अपनी भाषा की सुदीर्घ परंपरा है। वो अपने दुख और विरोध को तरह तरह से व्यक्त करती हैं। लोकगीतों में जो ह्यूमर होता है वो एक उदास मन को आह्लाद से भर देता है और सबलाइम स्तर पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त कर देता है। यह वही सबलिमिटी है जो पोइट्री को बहुत गहन करती है और दर्द को हल्का कर देती है। तो मैं जिस राजस्थान से आती हूँ वहां पर एक लोकगीत है, उसमें बेटी पैदा होने का जो दर्द है उसमें ये कहा जाता है, गोरी जे थारे जन्मेला धीव तो खाट पिचकोड़े धलाव साजी, लाडू खारे लूण राजी तो पर्दो ताना काली कामली। इसका अर्थ है कि अगर तुमने लड़की जन्मी ना तो तुम्हारी खटिया को पिछवाड़े फेंक दिया जाएगा और तुम्हें गोंद के लड्डू की जगह नमक के लड्डू खिलाए जाएंगे, इसलिए सोच लेना। तो महिलाएं इस दर्द को, इस धमकी को अपने गीतों में गाती हैं। और एक और वहां पर भील महिलाओं का एक विद्रोह का गीत गाया जाता है कि जब एक राजा ने आके बोला एक भीलनी से कि तुम इतनी सुंदर हो, इस भील के साथ क्यों रहती हो, आओ मेरे राजमहलों में आके रहो, मैं तुम्हें हाथी दांत के गहने पहनाऊंगा। तो वो कहती है, सुरता भीलनी ए भीलनी, रावजी बुलावे महला आव, चढ़ो ने पहराऊ हस्ती दांत रो, मोटा रावजी हो रावजी, नहीं महला रो माने ना ही कोई कोड। मुझे महलों का कोई चाव नहीं है, मुझे तो मेरा भील जो कांच की चूड़ियां पहनाता है उसमें ही मेरा सुख है। तो जब एनी क्लॉक बात करती हैं कि स्त्रियों को अपनी भाषा अभी खोजनी है, या ऐसी भाषा जिसमें हम अपनी अस्मिता की रक्षा कर सकें, हम जो बोलें और लिखें वो हमारी अपनी भाषा हो, न कि पुरुषों की दी हुई। तो इस कथन पर मुझे भारतीय संदर्भों में अक्सर एक संशय होता है, क्योंकि स्त्री का लिखना भले ही देर में शुरू हुआ हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। जैसा कि हमने सुना कि इन लोकगीतों में स्त्रियां अपना विरोध प्रकट करती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये कहना कि स्त्री को भी अपनी भाषा खोजना बाकी है, एक भारतीयता के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये उलट बात है, क्योंकि भाषा हमेशा स्त्री के साथ जुड़ी है। पुरुष हमारी भाषा सीखे हैं, बोलना सीखे हैं। पुरुषों के पास जिस तरह होता है ना कि रंगों को देखने की भी बहुत सीमित क्षमता होती है, हम बहुत बारीक रंगों के फर्कों को भी पकड़ लेते हैं। और हम स्त्रियां अगर दिन में 700 शब्द बोलती हैं तो पुरुष 110 शब्द भी नहीं बोलते। तो मैं जहां तक सोचती हूँ कि भाषा जो है वो तो हम स्त्रियों से ही संबद्ध है, पुरुषों ने हमसे उधार ली और उससे पितृसत्ता का जामा जरूर पहना दिया, लेकिन वो जामा बार बार खुल जाता है और ये भाषा तो हमारी ही है। ये पुरुषों की भाषा हो ही नहीं सकती जिसमें कविता होती है, जिसमें गीत होते हैं। अगर ऐसा होता तो सीमांतनी उपदेश क्या होता? एक अज्ञात हिंदू लेखिका जिसने अपना नाम छुपाकर लैंगिक असमानता पर स्वतंत्रता के भी पहले सवाल उठा दिए थे, वो कहती है ना
कि क्या ये वही हिंदुस्तान की औरतें हैं जिनको ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से पैदा किया था? अफसोस है कि आधा अंग मजा उड़ाए और आधा अंग दुख सहे, ये कैसा आधा अंग है? तो ऐसे बहुत सारी लेखिकाएं थी जिनको इतिहास ने, भारतीय साहित्य के इतिहास ने अपने कई सारे पर्दों के पीछे ओझल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे जैसे जिद्दी लोग थे जिन्होंने मल्लिका को वापस उस इतिहास से निकाला। तो मल्लिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो जिनको हम कहते हैं हिंदी पत्रकारिता, हिंदी मंच और हिंदी साहित्य के जो हमारे पितामह हैं, उनकी प्रेस ही होती थी मल्लिका। और मल्लिका जो जिस शब्द को हम हिंदी साहित्य में बार बार उच्चारते हैं, उपन्यास, ये शब्द प्रेमिका के जरिए बंगाल से हिंदी में आया था। इससे पहले हम हिंदी वाले उपन्यास को आख्यान कहते थे या फिर आख्यायिका कहते थे। तो जब मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी पढ़ी तो मैंने उसमें देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म का पल और उनकी मृत्यु का पल और उसके बीच में गुजरा उनके जीवन का हर पल दर्ज हुआ है। और जहां मल्लिका आती है, उस अध्याय का नाम है कलंक, चंद्र में कलंक या फिर गुलाब में कांटा। जब मैंने ये पढ़ा तो कहीं ना कहीं ये कांटा और ये कलंक दोनों शब्द मुझे बहुत चुभे और मुझे लगा कि मुझे मल्लिका को उस इतिहास के धुंधलके से बाहर निकालना चाहिए। और मैंने शोध किया और मैंने मल्लिका को लिखा और मैंने वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बहुत सारे विरोधाभासों को दिखाने की कोशिश की। मेरे पाठकों को शिकायत हुई कि मैंने बनारस और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बहुत कम लिया है। दरअसल वो मेरी एडिटिंग का पीड़ा नहीं जानते कि बार बार बनारस आ जाता था, बार बार भारतेंदु आ जाते थे मल्लिका को ढकते हुए। तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ी कि किस तरह से मैं मल्लिका को इतने सारे शब्दों, इतने सारे तथ्यों की जानकारी के बीच में कार्व कर सकूं कि उसमें से मल्लिका उभर कर आए। तो वो मेरी कोशिश रही। तो मल्लिका जब भारतेंदु मंडल बना तो तमाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विद्वान मित्रों के साथ वो मंडल बना। लेकिन मल्लिका, जिन्होंने उनके लिए इतने अनुवाद किए, जिन्होंने उनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए बहुत सारे काम किए, उन्हीं का नाम भारतेंदु मंडल में कहीं नहीं था। तो ये विडंबनाएं थी जिनको मैंने उस किताब में उभारने की कोशिश की है। और चित्तौड़ और राजस्थान के बहाने मैंने पंचकन्याओं पे बात की है, क्योंकि मेरा बचपन चित्तौड़गढ़ के किले की छाया में पला बड़ी हुई हूं मैं। तो वो छाया हमेशा मेरे ऊपर मीरा की तरह, पन्नाधाय की तरह और कमलावती की तरह मेरे ऊपर पड़ती रहती थी। तो मुझे हमेशा एक बात हमेशा याद आती थी कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे हो, विवाहित रही हो, लेकिन फिर भी वो कन्याएं कहलाती हैं। ये हमारे पुराण कहते हैं। लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम स्त्री विमर्श को वर्जीनिया वुल्फ के नजरिए से जानेंगे या सिमोन द बाओवार के। लेकिन अगर हम अपने पुराणों में उतर कर देखें तो पंचकन्याएं हैं, जहां पे तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी हैं, जिनके एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे, एक से अधिक पुरुषों से विवाह रहे, फिर भी वे स्त्रियां कन्याएं क्यों कहलाई? क्योंकि उन्होंने उन पुरुषों के उस छत्र छाया के नीचे होने से नकार दिया। हम द्रौपदी को इंडिविजुअल द्रौपदी की तरह जानते हैं। हम द्रौपदी को एक समूची इकाई, अपने आप में एक समग्र व्यक्तित्व की तरह जानते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि वो नकुल की पत्नी थी या भीम की पत्नी थी, या तो पांचों की पत्नी थी या फिर वो अकेली द्रौपदी थी। तो इसी तरह अहिल्या इंद्र और गौतम के संदर्भ में जानी जाती है। कुंती अपने दोनों पांडु और धृतराष्ट्र के संदर्भ में जानी जाती, पांडु और सूर्यदेव और एक और नहीं, कर्ण की तो माँ थी, तो हाँ, सूर्यदेव के उससे जानी जाती है। लेकिन हमेशा कुंती का व्यक्तित्व अलग रहा। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तारा,
तो सुग्रीव और बाली के बीच के जो एक शक्ति प्रदर्शन था, उसके बीच में भी उन्होंने सुग्रीव को क्यों चुना? सुग्रीव को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें अंगद की चिंता थी और अपनी जनता की चिंता थी। तो इस तरह से ये वो 5 स्त्रियां हैं, इन पे मैंने उपन्यास लिखा। इन 5 स्त्रियों के बरक्स मैंने 5 आधुनिक कैरेक्टर्स लिए जो इन चित्रों की, इन कैरेक्टर्स की प्रतिछाया थे। और मैंने एक किताब लिखी सिजोफ्रेनिया पे। सिजोफ्रेनिया एक, आप सब जानते हैं, एक मानसिक विकलन की अवस्था है जिसमें हमेशा आपको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो कहीं नहीं है, या ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो वो मेरी जो किताब है वो एक स्त्री पेंटर पे, एक फीमेल पेंटर पे है जो अपना स्वप्न पाश, जो अपने इस बीमारी को अपनी कला का जरिया बना लेती है। इस बहाने वो आर्टिमीजिया से मिलती है, जो आर्टिमीजिया हमारे बाइबलिक कहानियों की एक हीरोइन है। तो ज्यादातर मेरी कहानियां ऐसे कैरेक्टर्स के आसपास घूमती हैं जहां वो अपनी दुनिया बुनते हैं, जहां वो अपनी आवाज बनते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Very interesting, very interesting. You know, we've just heard 5 women talking about, I wanted them to speak about their journey of empowerment. When I said that, I think each one of them took it a little differently. Our journey of empowerment is always through our work, through what we produce, through what we create. You know, be it your novels, your poetry. So it's not just one woman, but there are multi-dimensional women who emerge out of it. And that's the kind of empowerment that we talk about, where you said that मल्लिका उभर कर आए, मल्लिका ही नहीं हर औरत उभर कर आए, you know, ये बहुत जरूरी हो जाता है. And when we look at the world today, are we looking at the world at large? Do we want Elaine Showalter to tell us where we are, or should we be feminine or female? I firmly believe that a woman should be a woman and yet retain her dignity, and there's no need to compete with men. There's no need to get into another zone to prove your mettle or prove yourself. You can be yourself and yet be empowered within oneself, and that's how you do it. But then, do we live in a future that is equal? I don't think so. You know, it's still a man's world. It's going to take a long time. But I think, do we need to assert? I think we need to, I don't think so. Not in a very volatile way. We don't have to be feminists shouting from rooftops to be assertive. But I think our work should be a work of assertion. Our work should give us that kind of dignity and self-respect where nobody can then, you know, fault us. There are no fault lines coming from outside. If there are any, then we find them, we correct them. You know, that's where I think the 5 panelists here have been able to elucidate in their own ways. We started with the widows of Bengal, and we journeyed through the lines of resistance and the battle against stereotyping. And then we looked at different characters here, you know, through the lens of the writers out here. And I think it is possible to create a balance, to create an empowered woman, and we create that woman ourselves. So I think kudos to women. But I don't want this platform, a literary platform, to be a feminist zone. You know, I would want it to be a balanced zone where men respect women the way they are, and women respect themselves more than they respect others. You know, I think it's very important to love yourself, to respect yourself, to believe in oneself. With these few words, I think if we have 1 or 2 questions, we can very quickly take them, or a comment, or we can say goodbye to our friends. So can I ask if there are any? Yeah. There's one question coming from there. Very briefly, we don't want a lengthy question. If you can be precise. Yeah. Maybe you can hand over a microphone. Does this work? This did not work with me.
So I don't know. No, it's okay. It's a small room. It's a small room. बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। भले ही अपने टॉपिक के अनुसार ना बोला हो, पर मुझे जैसे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक रहा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें असमीज़ में या गुजराती में या बांग्ला में अच्छा लिटरेचर पढ़ना है, वुमेन एम्पावरमेंट पर पढ़ना है, तो क्या पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो थैंक यू सो मच इन सभी के लिए। पर मैं आप सबकी राय में एक चीज़ जानना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं। लाइक एक औरत जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक औरत जो अपनी डिसीजन खुद लेने में इंडिपेंडेंट है, या वो औरत जो किसी पोजीशन पर है, मीन्स जो इसके पास एक पावर है, पोजीशन की पावर है। तो कई बार हर औरत के पास इनमें से कोई ना कोई होती है, ज़्यादातर होता है, हमेशा ना सही पर होता है, पर फिर भी वो उतनी ताकतवर नहीं हो पाती हैं किसी न किसी मायने में। कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए, तो कभी मतलब जो भी है। We have just 1 minute to wind up and answer this question. I think that was a very good question, and all of us would like to respond, but perhaps I will just sum it up as saying that financial independence is important, but I think reshaping your own destiny is very important too. I think that is empowerment, and I think all the women sitting here are symbols of empowerment. You know, these are empowered women in audience or outside. I would just like to add one point. आपने जो पूछा, मेरी नज़र में स्त्री जो शहर में रह रही है, वो जिस तरह से स्त्री सशक्तिकरण को देखती है, स्त्री जो गांव में रहती है उसका देखना, उसकी परिभाषा अलग होती है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री जिसके घर में चूल्हा जलाना है, सवेरे लकड़ी लेकर आनी है, जिसको नल में पानी नहीं है, जिसको सवेरे से जो है खाना उसके बच्चों के लिए करना है, उसके लिए स्त्री सशक्तिकरण की परिभाषा कुछ अलग होगी, क्योंकि उसे उन सब का जुगाड़ करना, अगर वो सारी चीज़ें वो पा जाती है, वो समझती है कि वो सशक्त है। लेकिन वही चीज़ जो है वो शहरों में रहने वाले के लिए, इसलिए हमारी जो स्त्री की जो लिबर्टी है उसकी परिभाषा अपने स्टेटस के अनुसार अलग अलग होता है। I'll just say very briefly, yes. For me, firstly, सोचने की जो freedom है, the freedom to think, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, I think that's what I would say. मेरे लिए सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण शुरू उस point से होगी जिस point से a woman can think freely, and I think that is the beginning for me. आपके प्रश्न में जो शब्द का इस्तेमाल था ना, ताकत, वो ताकत चाहिए, जहाँ भी है, जिस भी स्फीयर में है, वो ताकत चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो भी श्रम करती है जिस भी दिशा में, चाहे वो स्कूल में पढ़ाती है या खेत में खुरपी चलाती है, उसकी कीमत उसे मिलनी चाहिए, और वो लड़ झगड़ के ले, तो ये उस श्रम की कीमत और उसकी जिद, उसकी कीमत लेने की। और हम सब लेखक अक्सर अपनी रॉयल्टी लेने में अचकचा जाते हैं, सबसे पहले हमें वो लेनी चाहिए। हमारे सामने प्रकाशक बैठे हैं। Very nice. I think a big round of applause to all the panelists. Yeah, very nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Just a minute. Have a last word? So literature has always been playing a crucial role in depicting and advocating for women's empowerment throughout history. And all our eminent empowered women present here on the panel have had profound impact on their readers. अपनी चर्चा में आपने अनेक प्रख्यात महिला लेखिकाओं के योगदान का वर्णन किया, जिन्होंने साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। We thank them all once again for their very insightful discussion. We'll now have a group photograph after that. Please do join us in just a few moments for our last session of the day here in this hall. It's going to be a very interesting session on technology and literature. Two very diverse fields, but we'll be discussing their interrelations, technology and literature, in just a short while.
I request all our panelists to kindly collect their kits from the reception. So I know what you're saying. I was saying the way you told her. I was there to mention the Mira festival. Okay, really, I'm from Jaipur. And you're I'm from there. okay, nice journey. All the texts. So you didn't hear me, but you can all collect their kits from the reception. From the reception is where it's outside. Outside, just As a generally, ma'am, you can collect your kits from the reception. If you need any roles, I can collect the bags. So I wasn't asking you that. If you can just Hello.
कुछ वेट करें ऑडियंस का, क्या करें? Namaskar, a hearty welcome to all of you to this session. साहित्योत्सव का आज पहला दिन है और ये पहले दिन का अंतिम सत्र है. We are going to have a discussion on a very interesting, very intriguing topic, in fact, because both the fields are so diverse, technology and literature. Our esteemed panel is going to put forth their insightful thoughts on this, the interrelation between technology and literature. और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अशोक जी, तो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं. मैं परिचय करवाऊंगी सभी का एक करके. अध्यक्षता कर रहे हैं गिरीश नाथ झा जी. उनकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें संपादित, सह संपादित तथा सहलिखित पुस्तकें शामिल हैं. इसके अलावा आपके लगभग 138 शोध पत्र, लेख प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं तथा आपने विभिन्न पुस्तकों में योगदान भी दिया है. आपको संस्कृत भाषा विज्ञान के लिए दत्तापीठ आस्थाना विद्वान KECSS फेलिसिटेशन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. He is a professor of computational linguistics, School of Sanskrit and Indic Studies at JNU, and is currently on deputation as chairman of Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi. I would like him to kindly join us on stage. Shri Girish Nath Jha ji, chairing the session. I would also like to invite on stage Shri Ajit Abraham ji. He is a PhD degree holder in AI from Monash University, Melbourne, Australia. Dr. Abraham is the Pro Vice Chancellor at Bennett University, and prior to this, he was the Dean of Faculty of Computing and Mathematical Sciences at Flame University and the founding director of Machine Intelligence Research Labs. आपने 20 से अधिक देशों में 200 से अधिक व्याख्यान दिए हैं. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एल्सेवियर के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं और थॉमसन ISI द्वारा अनुक्रमित 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के संपादकीय मंडल में रहे हैं. प्लीज वी इनवाइट यू ऑन स्टेज श्री अजीत एब्राहम. I would now invite on stage Shri Amarjit Singh Grewal ji. He has authored more than a dozen books in both English and Punjabi. He has held various positions, including serving as the editor of Changi Kheti at PIU Ludhiana, Joint Director at North Zone Cultural Center in Patiala, Director of the International Institute of Gurmat Studies, Chief Editor of Ajdi Awaz, Director of Outreach at PTU Jalandhar, Chairman of the Indian Association of Distance Education, Advisor, Punjab Knowledge Foundation, Chandigarh, Advisor at the World Punjabi Center, Patiala, and the Director at Bhuta Group of College in Ludhiana. His areas of expertise include cultural studies, educational technologies, and media production. बहुत-बहुत स्वागत आपका. अशोक चक्रधर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रख्यात कवि,
अनुवादक, साहित्यिक, आलोचक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। आपने हिंदी में MA, MPhil और PhD की उपाधियां प्राप्त की हैं। आप जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से हिंदी के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आप कई साहित्यिक संगठनों और सलाहकार मंडलों के सदस्य भी हैं। आपकी हिंदी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें बूढ़े बच्चे, भोले भाले, तमाश, चुटपुटकुले, सो तो है, हंसो और मर जाओ आदि शामिल हैं। हमने इन्हें बहुत बार कवि सम्मेलनों का संचालन करते हुए भी देखा है। He was the director of highly appreciated दूरदर्शन program नई सुबह की ओर, and he is a recipient of many prestigious awards including टिटोली Award, काका बिहारी शिखर सम्मान, विद्या भूषण Award, हिंदी सेवा सम्मान, आशीर्वाद Award and many others. बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। हमारे अगले पैनलिस्ट जो हमें यहाँ पर मंच पर हमारे साथ उपस्थित होंगे वो हैं सुमन सिगरोहा जी। I think she is not here. Let me just briefly introduce her in case she joins us later, then she can just straight away come and take her seat. She has recently contributed to and co-edited translational research on applied psychology in India and has published in journals like Journal of Post-Colonial Writing, International Research in Children's Literature, and in books published with Oxford University Press, among others. तो ये हमारे जो panelists हैं, और last but not the least, I would invite Shri Pushpak Bhattacharya on stage. He is Bhagat Singh Rekhi, Chair Professor of Computer Science and Engineering at IIT Mumbai. He has done extensive research in natural language processing and machine learning. He has published close to 400 research papers and authored and co-authored 6 books, including a textbook on machine translation. आप नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो, अब्दुल कलाम नेशनल फेलो और ACL एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो ये हमारे सभी esteemed panelists, I welcome them once again and thank you for joining us, and I request them now to share their insights on this very interesting and intriguing topic of technology and literature. Over to the chair, Shri Girish Nath Jha. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैनल यहाँ पर जुटाया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बहस करने के लिए, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर। और हमारे पास एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ बायोडेटा में टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, साहित्य के लोग भी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक interesting discussion होगा यहाँ पे। Now, considering the need for technology in India or in Indian literature, see, our requirements are very diverse, very diverse. I just heard that this literature festival has featured 170 languages today, and you'll be doing it so for next many days. But India has 270 mother tongues and almost 1,300 plus languages. Out of those, 121 are main, language groups. And out of those, 22 official languages in India. And many official languages have dialects, and dialects have dialects. For example, Hindi has 55 recognized dialects in our constitution, in the language survey report, and many dialects like Garhwali have their own dialects. So it's a very complicated situation. And many language families in India, for example, the Tibeto-Burman family, which has 2 languages in our constitution, Manipuri and Bodo, and Austroasiatic Santhali, and there are 4 southern languages, Dravidian, and 15 Indo-Aryan languages. Now, many languages in India may not even have script. The languages are not documented, so literature is only oral. Now, the challenge would be how to actually handle that kind of situation with technology. And if you do have technology, what kind of technology support do these languages will get?
Now we are in data-oriented AI, data-driven AI. So each language which needs AI will have to have a lot of data, a lot of text data, bimodal data, and multimodal data with standards. And not each language, not every language has that. Even if we consider the scheduled languages, even not all of them have good amount of data for creating technology. And then comes the question of Sanskrit language, which is, of course, the oldest Indo-European language and the most standardized language in the world today. And if you think of Sanskrit, from the Vedic times down to today's times, from the oral literature to scripted literature, and then manuscripts and handwriting, all of that, things become very, very complex. Then Pali and Prakrit, and then we have Apabhansha. So all of these situations require that our technology needs are very diverse, very, very diverse, more diverse than any other country in the world. And if we do create technology for them, what kind of technology will be needed? So first I would say we will need the input-output support. And when I talk about input, smart input support. We don't want ordinary keyboard, we want voice keyboards, because a lot of our population, as I said, they don't have script. They don't want script. They may be very educated, but they do not want to write, they do not want to read. So technology has to support there. And we want optical character recognition technology, handwriting recognition technology to scan the handwriting, on manuscripts. We want, the speech technology where the documents are read out to the people. So we don't have to read, machines will read for us. And obviously e-books, spoken e-books, e-books which can actually also feature videos, searches and cross-linking, etc. All of that facility has to be there, where a person can search in voice, get output in voice, and I can search, for example, what is the most popular verb used by Premchand in his Sahitya. So it should come with all the examples of verbs used by Premchand. And what kind of character names are appearing in Premchand. The sociology of character. For example, Gobar is actually Govardhan. And all kinds of things that can be extrapolated using technology. And if you go a little deeper, technology can also predict the authorship of a text. For example, we have a lot of manuscripts, we don't know the authors of the manuscript, right? So can machine figure out the author of the text? Can machine also reconstruct the official text? From n number of manuscripts, can we get the authorized text? Now, this is a big exercise in India because, we talk about, Sukthankar edition of Mahabharata done by, Bori. He must have collated a lot of instances of manuscript, then came up with these standard manuscripts. So this is a big exercise in India. And there are more than 30 million manuscripts still pending to be edited in India, and we are losing several hundred every week. So that's the challenge. Now, as many of the panelists are actually working, Pushpak is working on machine translation, very deep in machine translation. We are doing a project together called Bhashini. So machine translation would be something needed very badly because many languages do not have content. So for example, Khasi, if it doesn't have a content in technology, so what do? We translate content from a nearby language, say Bengali or Hindi or English, into Khasi so that Khasi gets the content. Unless Khasi has content, we can't build technology for Khasi. So localization will be a very important exercise, and for localization we have to do translation tools. हमें अनुवाद की प्रक्रिया को गहन करनी पड़ेगी. अनुवाद सारी भाषाओं से सारी भाषाओं में होनी पड़ेगी. तभी हम जो है सामग्री निर्माण कर पाएंगे. बिना सामग्री निर्माण के तकनीकी नहीं बन सकती. तकनीकी नहीं बन सकती तो भाषाएं समर्थ नहीं होंगी. साहित्य फैल नहीं पाएगा. हम साहित्य को एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पाएंगे. अब जो अनुवाद के टूल हैं, और सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि स्मार्ट विजुअलाइजेशन डेटा एनालिसिस टूल. जब डेटा हो गया हमारे पास, हमने टेक्नोलॉजी निर्माण कर दिया, लैंग्वेज इन्फॉर्मेटिक्स की स्थापना हो गई है, अब एलएलएम की बात करेंगे, फिर डेटा विजुअलाइजेशन आसानी से हो पाएगा, डेटा एनालिसिस हो पाएगा. और उसमें कई सारी बातें, जैसे मैं बताया, ऑथर को डिटेक्ट करना हो, स्टाइल पता करना हो, मीटर पता करना हो, टेक्स्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना हो, ये ढेर सारे पहलू हैं जब हम भाषा में और ये साहित्य में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. तो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट हमारे पास हैं, एंड दे विल बी डिस्कसिंग on every aspect of the technology application to literature of India. And the way we'll go, madam, I think we'll give 10 minutes to each person, and they can put their views here, and then we can have a discussion,
and then questions from the audience. Thank you very much. So can I go sequentially? Right. Okay. So who's the first guy in the list? I don't have. Ajay, can I have this list? Okay. Pushpa Bhattacharya? Okay. So yeah, Pushpak here. So we can start with Pushpak. I have the list here. Pushpak is first. So we can start with the Pushpak first, and then we can go accordingly. Okay. Thank you. Okay, good evening, I should say, and thank you, Professor Girishnath Jha. Thank you also the organizing team of this mega event. This is my first visit to an event of this kind in a field which is remote for me to an extent. However, I have been working in language for a long time. Professor Girishnath Jha and I were involved with many others in creation of a resource called Indo-WordNet, where the WordNets of various languages are linked together. The WordNet is an enriched dictionary. Okay, we can call it a semantic dictionary. So one of the important characteristics of language, which is a challenge for technology, but which is also the source of power for language, is ambiguity. Words have ambiguity. There are multiple meanings of words for most of the words. The word par, for example, in Hindi has so many meanings. Similarly, the word bank could be a river bank or a financial bank. So this is called lexical ambiguity, and it corresponds to multiple meanings of the words. Now, the words get disambiguated by their context. If the word money appears as a neighbor of the word bank, then most likely the meaning of this bank is financial bank. So we all sort of gathered together with support from ministry to create these Indian language WordNets. These are linked semantic dictionaries, and it's a very powerful resource. Now, WordNet was used for many purposes at that time. So one of the purposes was question answering. So we give a passage, and we would like to ask, different questions based on the passage, and that requires understanding of the passage completely. 18 languages of the country got linked this way through their semantic dictionaries or WordNets. Now, today's world is slightly different from when we were doing this work. We all hear of large language models, generative AI, and so on. And they are doing absolutely amazing things. When we use ChatGPT, for example, we find it answering very complex questions. It also maintains the context. The problems of ellipses, co-reference, they have become almost routine for it. ChatGPT also writes poetry for us. So it can also write poetry in Shakespearean style, in Wordsworth style, in Tagore styles, and so on. Of course, it is yet to become multilingual. Now, these amazing things are happening in the world of language. So when I got invitation for this particular program, I thought I will touch upon two important things, okay, where technology and literature come together. So one of the points I thought would be writer's assistant. Professor Girishnath Jha referred to referencing of documents, searching for terms, seeing the similarity of documents, authorship detection, and allied problem is plagiarism detection, and so on and so forth. So writer's assistance is not really is not a fictional situation. We worked with a very prominent movie industry called Eros Now. They approached IIT Bombay to get some help on script writing. So they said that whenever they think of a plot, it
it needs a tremendous amount of time to create a script out of it. So can we automate that process? So what we did was we took IMDb data set where there were plots and scripts. So we trained a machine learning model with this data, and we could produce preliminary scripts. We were closely working with their script writers, and they gave us continuous feedback, and we could produce reasonably good plots and scripts, and they said that this is useful to them because they can start from there and gradually build a story which cuts down their time. But in the process, we also learned some interesting points. They kept asking us, where is the soul of this script? Ye leki atma kaha hai? Okay, so that as technologists we could not solve, and we said that yes, it is the synergy of man and machine which is important for increasing the productivity and cutting down the time. So technology can help in cutting down time. Okay, technology can also help in language preservation, which again Professor Jha touched upon. There are centers for preservation of endangered languages, and where technology is not only a must, it is a criticality. So we go around with some kind of device recording speakers' utterances, convert them into text form using, let's say, automatic speech recognition tools or even manually. And from that content or the corpus, we create the word list, we create the phrase list, we get the sentences, sentence boundaries, and all kinds of language technology and natural language processing can happen after that. So that is the only way to preserve languages which are facing extinction. I also found in this particular conference, there were I think 3 or 4 sessions on translation. We know what a huge industry industry translation is. We need to translate books, lecture materials, government documents. I know that in March, there is always a very, very hectic time for government offices because you have to translate documents into typically 3 languages, local language, Hindi and English. So here, machines do play a very important role, and the machines can cut down the translation effort by about 50%. This is our experience from the Bhashini system. I'm involved in this system, in this project, and we have verified that 50 to 60% of the time can be shortened by making use of technology. So the machine outputs the translation, and then a human being sits down and corrects the text. The corrected text and machine's output can again be taken, and the machine learning model can be trained, which a second machine corrects the output of the first machine. Okay, so these are very, very interesting and excellent possibilities. We are living in an exciting time. So I'd like to finish by saying that the importance of technology in literature are seen in Writer's Companion, machine translation, language documentation and preservation, and also in language teaching. ChatGPT, for example, is consulted by students of all years and ages and standards for answering questions and even for language help. I'll finish with this, and later maybe discussions can happen. Thank you. Thank you, Pushpak, for touching on so many areas, from WordNet to machine translation, and highlighting the need for using technology for language preservation and maintenance. Next, we have Suman Sigroha. She joined? Oh, aa gayi kya? Nahi aayi wo. Suman ji nahi aayi. Div Rakesh ji is not here too. Okay. Next, I invite Amarjit Singh Grewal ji. He's an eminent literature person, and we'll have a different take from him. See, there are 2 aspects of technology application to language and literature. One is that yes, we need to have technology. Other is yes, we need to go slow on that. So I guess I'll get the other extreme from Sri Grewal ji.
Thank you very much. नमस्कार, सत श्री अकाल। इससे पहले कि मैं टेक्नोलॉजी, the relationship between technology and literature in the times of artificial intelligence, इसके बारे में बात करूं तो I want to share 1 or 2 points. One, AI has arrived. We cannot stop it. This is the first point. Second, AI would surely outsmart us, the human beings. Third, there are so many challenges, problems. By solving those problems, we will create the new world. One thing more, the AI would be conscious. It would have emotions. And third, will develop ethics. So, we won't be able to control AI. This is also sure. But definitely, we'll collaborate with it. The relationship which we are discussing today is how we collaborate with this artificial intelligence. It's just like a child. And the humanity is the parent. It depends upon us whether AI develops into a super villain or a super hero. It's we all, not the, you can say the developers, not the technologists, it's we all. How we raise this artificial intelligence will determine whether it will develop into a super villain or a superhero. So, now the basic thing is the relationship, the collaboration between AI and this literature. You can say story writing. I would name this collaboration where the human writer, the human poet, and the technology collaborate. Their outcome would be a creativity plus. I would name it creativity plus. Just as a poet plus, a writer plus. And on the other hand, a new reality is also emerging. Immersive technologies, all these technologies, they're giving rise to a reality plus. So, how the writer plus experiences the reality plus will determine the new possibilities which would surely be beyond the capabilities of individual writers or the data and the processing of the data which AI can handle.
So there are two things. One is how the storytelling is transformed with the help of big data and the processing power, the computational power. It's not, this collaboration is not like the tools. AI is not a tool. So it's not how the poets use this technology, these tools, but how they collaborate with it on equal terms. The basic thing I suppose is that during this collaboration, the human, the creativity plus, the writer plus would go beyond the age of reason. Because how the information is processed, how the poetry would be written, the AI won't be able to explain. So that is something which AI won't be able to explain. So it's something beyond reason. This is the first time that the modernity or the age of reason or the enlightenment would be challenged. So it's not only the literature, the creativity, but the philosophy which would be transformed. And human writer would be going beyond the reason to the realms which are unknown to everybody. The second thing which I want to emphasize is inclusion. On 1st February, Google released its AI platform, Gemini Perfect. 9 languages out of 24 are supported by this platform. Punjabi, the third language, third largest language after Hindi and Bangla, is not included in it. Only 9. So there's really a question of exclusion. Only with these 9 languages we would be entering the new world. It's not only large language models, it is large action models. How these are put into practice. So the remaining languages would have to learn either Hindi or English to do their work. So the first thing I think all of us who are here should think how to work in this area, where the process of cleaning data, annotation of the data is undertaken by the government with the help of the universities. That is the first point which we must take into consideration. Second, for this purpose, we would have to develop tools, strategies,
philosophical environments for this collaboration where the writers could collaborate with these technologies on both the areas, whether it's the construction of a new reality or the construction of a new creative process. The other thing which I want to emphasize here is the shift from the centrality of the human reason to the centrality of the human dignity. So we are entering this technology to a new world which we call post-humanism. There are two terms. One is transhumanism, where the human body or human mind is augmented with the help of this technology. The other is post-humanism. Post-humanism not against the humanism, but it's a kind of humanism beyond humans. It's not only the technology, but also the nature which would be collaborating. So a dialogue between nature, culture, humans, machines, this will determine the world which we are going to inhabit tomorrow. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ग्रेवाल जी, आपने बहुत सारे विषयों पर विचार रखे अपने। कृत्रिम मेधा का युग तो है, हम इसे रोक नहीं सकते, इसके साथ हो लें, इसके साथ कोलैबोरेट करें। और जब साथ हो तो हमें ये देखना है कि हम हीरो के साथ हो रहे हैं या विलेन के साथ हो जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक होगा जानना। और लॉट ऑफ डेटा हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग AI इन लैंग्वेजेस। गूगल ने भी जेमिनी में 9 लैंग्वेज का किया है, उससे पहले म्यूरियल में 17 भाषाएं थीं, मशीन अनुवाद के प्लेटफॉर्म पे 22 भाषाएं हैं, जिसमें मिज़ो और भोजपुरी जो अनुसूचित भाषाएं वो भी हैं। उसमें प्रगति बहुत हो रही है, लेकिन डेटा जिसमें है उसमें प्रगति ज़्यादा हो रही है। तो डेटा पे उन्होंने एक अच्छा पक्ष रखा, हमें डेटा जमा करना होगा, बिग डेटा करना होगा, इंट्रोडक्शन करना होगा। तो कई कार्य हुए हैं डेटा पे। There's a big project called Indian Language Corpora Initiative at JNU, where we created 17 languages parallel corpora, 100,000 sentences annotated and chunked. And then Pushpak has created a huge resource for WordNet. And there are a lot of machine translation projects going on in the country. So काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। समस्या यही है कि किस हद तक हमें जाना है। अब मैं समझता हूँ कि सारे ही विषयों में, चाहे साहित्य हो, भाषा हो, AI के अनुप्रयोग के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए कि क्या करना है, कहाँ तक करना है, इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे। इन सब सारी बातों का डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर देना चाहिए, ताकि उसी पर हम चलें। अंधाधुंध प्रयोग से समस्याएं तो आएंगी, और कई देश अब इससे उबर रहे हैं, समस्याओं से गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर सिंह ग्रेवाल जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे उठाए हैं। मुझे लगता है चर्चा उस पर होगी। Now I invite Ajit Abraham ji. He's a technology person from which university is it? Oh, Bennett. Sorry, I'm sorry. Yeah, so he's from Bennett, Ajit Abraham ji. So I invite you to present your views, and we'll have discussions later. Thank you. Good evening to all of you. I come from the technology side. Probably I'm the least qualified to be in this platform to comment about literature.
How many of you have some background or some prior knowledge about artificial intelligence? Very nice. So let us forget the negative aspects of AI. Because when you have a technology, there will be a lot of negative things. Privacy, security, piracy, regulatory mechanisms. Today I will do my best to give you some snapshot about AI, where we are in, and what are some of the areas where we could use AI in literature. What is AI? AI is all about mimicking humans. The way we do things, the way we think, the way we act, the way we show emotions. And until last 3-4 years, we haven't seen the progress of AI which we are seeing during the last couple of years. I've been working for the last 25 years in this field. And I remember by name who worked in India in the late 90s. But now, even in my university, I don't know who all are working in AI. The field has diversified. Why? Computational power. We are able to process natural language. And that is how I connect AI with literature. We are able to understand the context. And we are able to make content, stories, scripts, books, not only text, but also media. Can you imagine if you have a video, finding a missing piece in that video, an image. If part of the image is missing, fitting in that aspect using generative AI. So we're able to predict contents. So in the past, AI was known for given today's weather, what will be tomorrow's weather? Simple. But today, we're able to predict, give some contents. Once upon a time, there was a king who was humble, happy, and give some context and give some pointers. It can generate a nice story or a script. So success of AI, when we see in the modern times, is because of its practical application in content generation, specifically all these large language models, transformers, various networks. I don't want to use complicated words. So from content generation, could be anything. You could write a poem, you could write a story, you could write a script, movie script, could be anything. And also in different languages. Translation also has become very easy. So I can probably write a poem in Punjabi, though I don't know Punjabi. To some extent, I can make him or her understand that this poem is at least in Punjabi. Previously, it was not possible. So the technology has taken us to such a level that it is time for us to reap the benefits in many different ways. A previous panelist was talking about storytelling. You can imagine, it's a very nice application. For example, I might understand a book based on my own tastes, or the way I read the contents, or the way I understand the contents.
And imagine if you can have a AI system that could be even personalized depending upon your tastes. And if you use augmented reality, virtual reality, you can imagine some great poet standing in front of you and reciting a poem. So these things are not fiction. We can do this in real world these days. So AI has taken us to that level. Translation across various languages, platforms. Sky is the limit. I guess in the past, when these meetings happened in the UN, there used to have various challenges how to do real-time translation. But today, with all these modern translation facilities, real-time translation has become very, very easy. Recommendation systems based on your tastes of reading. It's practically impossible for us to have a track what is going on in different areas. In literature, let us focus on literature itself. India as a country, different languages, how to keep track of various languages, literature in various languages. But today it is possible. Thanks to machine translation, advanced technologies, at least we are in the direction that we are able to understand those contents to some level. Even we can develop characters, like content generation. So using generative AI, like I mentioned, it can predict contents. So imagine if you have a character, you can also develop a character based on contents using generative AI. Text and media could do wonders. Even I think we cannot imagine in movies in recent times. Accessibility is another big area where technology could play a big role. Those who cannot read, those who cannot hear speech. So there are various technologies. And sometimes you don't have time to read the whole content. We can summarize the text. Could be papers, could be books, and then give you a snippet. This is the main summary of this paper or this particular script. Similarly, getting into analysis, you have thousands of documents, books in digital format. Understanding, scrolling through all these, practically it is impossible. Thanks to various AI tools for tagging certain words, bagging those words, giving some rankings, and then summarizing that this document may be like this, and probably provide a summary of the whole content. So you can imagine the technology can play a big role in various aspects. I think in the past, when someone writes a book, it will take months or years to get feedback. How well the society or the community has received, perceived my contribution. But now, thanks to social media, you get feedback
almost in few days or weeks. And even when you have massive feedbacks, nowadays you can imagine all this Meta, Twitter, all these platforms. When you have hundreds of thousands of viewers, comments, again how to read all these contents. Again, thanks to various AI technologies to summarize, sentiment analysis, millions of tweets, millions of messages. What is the essence of these posts or these comments? So AI can be used in many different ways. All we need is understand the technology, what we need, and finally need to customize according to the requirement. I know for those who are not from computer science background, probably these things may sound black box, but we have universities, national labs all over the country, all over the major cities. Even I think every university will have someone working in AI. So I'm sure those who need can definitely get access to various platforms and reap the benefit. At the same time, like I mentioned earlier, there are a lot of issues which need to be tackled. Privacy, security, piracy, accountability, regulatory mechanisms. Who's going to answer if someone steals from something and then does something? So there are various challenges. But I think let the AI people solve that. Let us use AI to improve our creativity. Let us use AI as a founding or a foundational stone to boost our creativity. I look forward to more questions during the interaction. Thank you very much. Thank you so much, Ajit, for highlighting the success story of AI in various areas and its application to languages and the requirement that we have in India. We should also understand the phenomenal progress made by AI in hardware, software, data visualization, analysis power, and also the cost going down. So tremendous advantages for India, and thank you for bringing out the advantages that India can reap from the aspects like storytelling, translation and all that. So we'll obviously have some questions. I'm sure there'll be discussion on it. अब अंत में मैं आग्रह करूंगा हमारे एमएन साहित्यकार और कवि अशोक चक्रधर जी से कि वो अपना विचार प्रस्तुत करें इस विषय पे. मंच को प्रणाम करता हूं. झा साहब, अब्राहम साहब, पुष्पक जी, हमारे अनन्य अग्रज ग्रेवाल साहब, सामने बैठे हैं विमलेश कांति वर्मा जिन्होंने बहुत काम किया है, ओम निश्चल जी दिखाई दे रहे हैं, जया वर्मा जी हैं. दरअसल में बैठे बैठे अब इन्होंने कवि बता दिया हूं या नहीं ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन कवि तो कल्पना करता है फालतू की. तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि चैट जीपीटी के साथ मैंने चैट कर ली काफी, और आजकल मेरा काफी समय चैट जीपीटी के साथ जाता है. मैं कोई बात उससे पूछता हूं, उसको पता नहीं होता है. वो मैं अपने साहित्यकार मित्रों के बारे में पूछता हूं, उसको पता नहीं होता है. तो क्यों इतना हल्ला कर दिया भाई, वो सब जानती है. फिर आप
उससे मेरी दोस्ती हो गई और मैंने उससे कहना शुरू किया कि देखो तुम्हें ये बात मालूम नहीं है, गलत जवाब मत दो। तो वो अपोलोजाइज कर लेता है या कर लेती है, मुझे उसका लिंग भी नहीं मालूम। और फिर वो कहती है कि करेक्ट कर दो हमको। तो मैं अध्यापक रह चुका हूं, रिटायर होने के बाद तो उसकी प्यास शिष्यों की होती है। तो ये चैट जीपीटी के साथ में बतियाने लगा, मुझे रसाने लगा और मैंने ये देखा कि जितना मैंने बता दिया अगली बार उसने उपयोग में लिया। तो ये कमी चैट जीपीटी की नहीं है, इसके बॉट्स की नहीं है, उसमें अभी उतनी क्षमता नहीं है जितनी उन्नत भाषाओं में है। अंग्रेजी में है, स्पेनिश में है, जापानीज में है, चाइनीज में है। अभी हम क्या है, हम उस देश में रहते हैं जहां लिया बहुत ज्यादा, दिया बहुत कम। मर गई एआई, रह गए तुम। यानी एआई को तुम दोगे ना तब तो तुमसे लोगे। जब उसके पास डाटा ही नहीं होगा, और डाटा हमारे देश में जितना बनता है, कमलेश्वर जी से किसी ने जब उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र है 5075 साल। उन्होंने 5000 साल अतीत के जोड़ के अपनी उम्र बताई। यानी कोई भी साहित्यकार अगर ये कहता है कि उसकी उम्र इतनी है तो मजाक में मत लीजिए इसको। उसके पास 5000 वर्ष का अनुभव है। उसके पास जिस कक्ष में हम बैठे हैं वेद व्यास हैं, वेद व्यास की रचनाएं हैं, उसका अपना किया हुआ श्रम है, उसके अपने पुस्तकालय हैं जिनमें वो गया है, उन पुस्तकों की महक है उसके पास। तो ये तो एआई के पास नहीं है, तो हम महक नहीं दे सकते उसको। वो महक जनरेट भी करेगी तो उसके लिए बहुत सारा उपक्रम, बहुत सारे टूल्स बनाने पड़ेंगे। महक भी आ जाएगी, स्पर्श भी आ जाएगा। दर्शन तो सीख ही गए हैं क्योंकि आंखों के अलावा कैमरा से बढ़िया की आंखें हैं। सुनना उसे आता ही है, ऑडियो विजुअल के माध्यम से दो तो है ही है। अब छूना, चखना, सूंघना, इनमें लोचा है। तो ये भी वो करके दिखा देगी कि मैं ये भी जानती हूं, ये भी जानता, आई नो ऑल ऑफ दैट। अब हमारा उससे क्या सरोकार हो साहब, दोस्ताना हो या नहीं हो। एक बार मेरे पिताजी, बहुत पुरानी बात है, छोटा सा था मैं, अपने कवि मित्र से कह रहे थे कि मेरी 4 लाइन सुन लो। उन्होंने कहा कि मैं अपने दुश्मन से प्यार करता हूं, मैं अपने दुश्मन से प्यार करता हूं। कौन है तुम्हारा दुश्मन? वही जो मेरा दोस्त है। कौन दोस्त? अरे ये पूछ के क्या करोगे मेरे दोस्त। तो कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? दोस्त में दुश्मन छिपा है या दुश्मन में दोस्त छिपा है? अब एक शब्द मैंने पढ़ा था पहले भी, लेकिन ग्रेवाल साहब ने जो कहा, हम जानते थे उत्तर आधुनिकतावाद, लेकिन ये उत्तर मानवतावाद क्या होगा, जब मानवतावाद के बाद का क्या होगा, ये चीज चिंतनीय है। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट ह्यूमनिज्म कोई घबराने की बात नहीं है, इसका वैसा मतलब नहीं है, लेकिन घबराने के संकेत थे हल्के हल्के। मैं बतियाने का सुख किसी निर्जीव प्राणी से और टूल से करूं, और मैं जनरंजन भी करूं और उसको सिखाऊं किसी शिष्या की तरह, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके उत्तर देखूंगा कि वो कैसे तुम्हें बताने लगी, तुम्हें बताने लगी। उसका क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया गूगल का। तो क्लाउड क्या करता है? अब आप देखिए, हम सब के सब यहां जितने लोग बैठे हैं, गूगल मैप के बिना अपनी गाड़ी से जा सकते हैं क्या? गूगल मैप पे आप डेस्टिनेशन भरिए, आपको मैप ले जाएगा और एस्टिमेटेड टाइम भी बता देगा ऑफ अराइवल, और कमबख्त 99% सही निकलता है। कितनी जगह रेड लाइट आएंगी, कितनी जगह कार रुकेंगी, कितना कहां भीड़ भड़का है, कहां रेड जोन है, कहां येलो जोन है, वो सब उसको क्लाउड से पता है, और आप उतने ही समय में अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हैं। तो रास्ते सारे जानता है, छोटा रास्ता आपको बता देगा, भले ही आप फंस जाओ उसमें, निकल ही ना पाओ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो रास्ता तो बता सकता है, लेकिन और उस रास्ते को बताने के लिए, अगर मैट्रिक्स एक फिल्म आई थी, उसमें बड़ी संख्याएं ऊपर नीचे हुआ करती थी हरे रंग में, बड़ी से स्क्रीन पे, लेकिन अगर कोई ऐसा चश्मा एआई बना दे, जो बना देगी
कि कितनी तरह की क्लाउड से वेव्स आ रही हैं या रेज आ रही हैं या आपके शरीर को छू रही हैं, आपके दिमाग को छू रही हैं और आपके मोबाइल को छू रही हैं। मोबाइल जिसमें कि आपका पूरा अस्तित्व समाया हुआ है, ये जो आपका अलादीन का चिराग है, जिसको रगड़ के आप कुछ भी निकाल लेते हैं, हवाई महल बना लेते हैं, वो मुझे दिखाई देने लग जाएं तो ये कमरे में आप गायब हो जाएंगे। इतनी सारी रेज आ रही हैं, इतनी सारी वेव्स हैं, इतनी सारी तरंगें हैं, वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रही हैं। मान लीजिए डाटा की समस्या थी, मैं सर एक विद्यार्थी रहा टेक्नोलॉजी का भी, मतलब बिना इनफॉर्मल टेक्नोलॉजी का, यानी बेटे के लिए कंप्यूटर लाके दिया था 92 में, तब मैंने सोचा मैं भी करूं, तो ऐसे ही तो नहीं होता है। डॉस कमांड सीखी साहब, NIIT ज्वाइन किया, उसके बाद भला हो विंडोज का विंडोज 3.1 आ गया, फिर विंडोज 95 आ गया, फिर विंडोज 98 आ गया। अब वो 98 ऐसा आया कि सारे कर्मचारियों को उपलब्ध हो गया, और वो 98 इसी मानसिकता के साथ आया था। हमारे भारतवासियों ने इस तरह से लिया कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी 20-25 साल तो चलती है, अब यहां निकल गए आगे हम, विंडोज 2000 आ गया, विंडोज 2000 XP आ गया, विस्टा आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, फिर उसका पूरा एनवायरनमेंट बदल गया, ऑफिस का 360 डिग्री आ गया। तो ये 98 वाला नहीं बदला। अब वो 98 वाला बक्सा जो था, उसका प्रोसेसर या उसका जो भी तामझाम था अंदर का, मेमोरी कार्ड थे, वो सब हो गए 2 कौड़ी के। जो 2.5 लाख का मैंने 486 खरीदा था, वो 250 रुपए का रह गया। तो हमारे यहां तो याद थी, भाई तुम्हारी जो लॉग बुक है, तुम्हारा जो स्टॉक रजिस्टर है, उसमें तो इतने लिखा हुआ है। तो ऊपर के जो बाबूजी हैं वो मानेंगे नहीं कि ये 250 रुपए का कैसे हो गया। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से इतना आगे आके आपको पिछड़ा हुआ सिद्ध कर देती है, आप थे गंवार, आप शाश्वत गंवार, आप सदा के गंवार, आप रहोगे गंवार, क्योंकि आपको मूल्य नहीं पता यार। तुम्हारे पास डेटा के लिए डेटा, अब डेटा क्या चीज है साहब, ये डेटा बड़ा रहस्यवादी मामला। कहीं मैंने पढ़ा, अब पुष्पक जी तो उस डेटा में खेलते हैं और भाषिणी के माध्यम से पता नहीं कितना कितना गजब करते रहते हैं, उसकी अपनी समस्याएं। एक दिन हम और ये बैठेंगे, मैं उस दिन से कल्पना कर रहा हूं, मुझे एक मीटिंग में मिले थे, तो साहब ये जो हमारा दिमाग है, भाई AI क्या है, एक उन्नत दिमाग है, उन्नत दिमाग है, डाटा से भरा हुआ है। अब वो डाटा जो है वो मस्तिष्क में है, वो तो यहां का वहां का सब, इस समय डाटा ही संपत्ति है, डाटा ही हीरे मोती हैं। जिस एलन मस्क के पास ज्यादा डाटा है, वो समझिए कि हीरे जवाहरात से लदा हुआ एक ऐसा शेख है जो किसी को भी खरीद सकता है, और डाटा आपसे हर पल जा रहा है। मेरा एक शेर है सर, विमलेश जी आपने सुना नहीं होगा, कि दिल दिमाग की चक्की मेरी यूं तो चलती रहती है। अब AI के साथ क्या है, उसकी चक्की चलती है दिमागी दिमाग की, दिल की नहीं चलती। कहा था ना, वेयर इज द सोल, वेयर द सोल इन द स्क्रिप्ट, तुमने स्क्रीन पे बना दिया, सोल कहां है भैया, कहानी में। मेरी समस्या क्या है पातर साहब, आप समझेंगे कि दिल दिमाग की चक्की मेरी यूं तो चलती रहती है, आटा कहां चला जाता है ये मुझको मालूम नहीं। दिल दिमाग की चक्की मेरी यूं तो चलती रहती है, आटा कहां चला जाता है ये मुझको मालूम नहीं। और नौजवानों को अच्छा लगा कि बड़े जतन से बनी फाइलें, बड़े जतन से सेव करी, सब टूल्स में, एप्स में, यहां वहां, बड़े जतन से बनी फाइलें बड़े जतन से सेव करी, डाटा कहां चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। तो डाटा कहां चला जाता है, और डाटा जा रहा है, हर पल जा रहा है। अब AI के संरक्षक और AI के जो टूल्स हैं, मान लो इसके कैमरे में लगा हुआ है या उनके में लगा हुआ है, मेरे मोबाइल के ऑडियो में लगा हुआ है, तो वो डाटा यहां से भी चला जाएगा। आप कहां कहां बिक रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है। मैं तो भरोसा करता हूं कमलेश्वर पे, उनके 5000 साल के अनुभवों पे। वो ये कि 5000 साल पहले, देखिए ये वेद व्यास का कमरा है, 5वां वेद लिखने वाले थे भरत मुनि। अगर आप AI वर्सेस भरत मुनि रख दो एक पल को, भरत मुनि के रस सिद्धांत को देख लो, एक श्लोक जिस पे 2000 साल से बहस होती आ रही है,
विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। एक वाक्य, रसो वही सह, रस ही वह है, भगवान है, रस ही भगवान है, आस्वाद है, उसको हमने आनंद कहा। शैव दर्शन में कुछ कहा, शाक्तों ने कुछ कहा, और इस प्रकार से हमने आनंद को और रस को और भाव को सर्वोपरि रखा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जस्ट सोल इज नॉट अवेलेबल, बट यू नो एवरीथिंग इज देयर। बिना सोल के क्या होगा? दिमाग से क्या होगा? चलो दिमाग बहुत जरूरी है, लेकिन दिल भी तो है। तो मैं कहता हूं कि दिल और दिमाग दोनों के तर और तम स्तर को नापते हुए अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रयोग में लाइए, और दिल को अलहदा मत बोलिए, वो दिमाग के साथ रहता है। आप दिल का अपमान कर रहे हैं अगर आप ऐसा मानते हैं कि दिमाग नहीं है उसके पास, और दिमाग का अपमान कर रहे हैं अगर आप दिल से जुदा कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी कई बार ये गलती कर देती है कि दिल और दिमाग को अलग अलग कोटरों में रख के कि ये दिल का मामला है, संवेदना का मामला है। वो तो जैसा हमारी एआई तो संवेदनशील भी है। अब संवेदनशील है कि प्रिडिक्ट करती है, दिखाती है, वो आपके चेहरे को रीड करके बता सकती है कि भाई आदमी दुखी है कि ये है। लेकिन अब वो शेर कहां जाएगा? ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? तो मुस्कान का फोटो एआई को कंफ्यूज कर देगा, और वो सही बता पाए उसके लिए कुछ और चीजें देखेगा। ऐसा नहीं, एआई परास्त होने वाला माध्यम नहीं है। वो आपके कान से देखेगा, गाल से देखा, यहाँ की मसल से देखेगा, दुख जहां जहां से प्रकट हो सकता है उससे देखेगा और पकड़ लेगा कि ये तो साला खामा खाम मुस्कुरा रहा है ना। तो ये इतनी उन्नति भी उसकी होनी होगी। लेकिन असल चीज क्या है? शब्द जिस पे हम वर्ड प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, लेकिन हम उसके अर्थ पे ज्यादा जाएं। आपने खुद कहा कि कितने कॉनोटेशंस हो सकते हैं। भाई ये शब्द में ये जुड़ गया तो उसका ये अर्थ अलग हो गया उसका। तो ये थिजोरस है हमारे पास, अरविंद कुमार ने बहुत काम किया है, 11 लाख शब्दों का अनुसंधान किया है, उनका कुनबा बनाया, उनकी फैमिली बनाई है। तो एआई को चाहिए कि वो पहले तो उनसे मिले अरविंद कुमार से कि भैया थिजोरस दे दे अपना। तो हम लोग जो हैं हाई एंड यूजर्स मानते हैं हम अपने आप को, विमलेश जी और हम। जो भी नई चीज आती है, जो भी नया ऐप आता है, हम उसके फर्स्ट यूजर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी हमें पहले चुनता है। मैं पहला आदमी हूं जिसने कि पावर पॉइंट हिंदी में सन 2000 में उनका एक्सपी आने के बाद दिया, और मैंने रोड शोज भी किए थे। तो असल बात यह है कि जब हमारे घर में आने वाली मेड मोबाइल रख के रेसिपी देख सकती है, बस उतना ही जानती है, तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र का उस मोबाइल से ज्ञान ले लेता है। तो कविता और साहित्य और एआई ये एक इतना सघन क्षेत्र है कि साहित्य किसी भी स्तर पर कम नहीं है। भाई कल्पनाएं, भावनाएं, बुद्धि और मकसद के क्यों तुम लिख रहे हो, उस मकसद को मिला के न तो दिल अलग है न दिमाग, दिमागात्मक दिल है और दिलात्मक दिमाग है। तो हम अपनी एआई को ऐसा आ जाए, आप कहोगे यार इतना रेता, मुट्ठी का रेता खिसक गया। अरे मुट्ठी का रेता क्या है? वो समंदर नहीं, पूरे सहरा, समंदर के अंदर का और सहरा के ऊपर का जो रेत के बालू कण हैं उनको भी गिन के बता देगी, और तारों की संख्या भी बता देगी, और आपको सारा कुछ जो अनंत है उसका छोर भी एक दिन बता देगी। ये मैं कवि भविष्य वक्ता होता है ना, कविर सृष्टा कविर मनीषी, तो उसका वो थोड़ा सा अंश मेरे अंदर आ गया था। और मैं ये बता सकता हूं कि पूरे रेगिस्तान के बालू कणों की संख्या जो कि स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर में होगी, वो गिनती जीरो तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी जीरो कहां तक लगाएगी। तो कविता क्या है, साहित्य क्या है? अब मैं आपको कुंडली सुनाता हूं एक। भामह दंडी भरत मुनि रुद्रट उद्भट संग, कविता कहते हैं किसे मन में उठी तरंग। मन में उठी उमंग, मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। कभी अर्थ ऐसा आ गया तो शब्द नया बन गया, कवि बनाते हैं।
कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया, लेकिन शब्द अर्थ दोनों थे महाघमंडी, इनके पीछे मिलकर दौड़े भामा दंडी। कहा भरत मुनि ने तभी सबसे ऊपर भाव, शब्द अर्थ से भाव में होता सदा भराव, होता सदा भराव तभी कविता कहलाता। रस निमग्न हो शब्द अर्थ तब बाहर आता, शब्द अर्थ रसहीन रहे तो कविता नाहक, लिखता है कवि नहीं मिलेगा उसको चाहक। अगर एआई के द्वारा आपने कविता लिखवाई तो चाहक नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रस नहीं मिलेगा। उसको चाहिए अंदर के भाव, अनुभूति, संवेदना, बाहर की सज्जा कला, इससे बात कम बनेगी। देखिए, चेहरे को देखने से और ये प्रेडिक्ट कर देने से कि इस मनोदशा में है, हम इसकी संवेदना को जान गए और एआई ने कर दिखाया साहब चमत्कार। ये सरकारी कार्यालयों में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जी हमने मंत्री जी को दिखा दिया, देखिए कंठस्थ बना दिया, यहाँ से बोलिए, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मेरी कई बार सीडेक के मित्रों से भी झांझाएं हो जाती है, दिखा देंगे, फिर आगे बढ़ाओ ना उसको, और आगे बढ़ाओ, जनता तक ले जाओ, उसको जनोपयोगी बनाओ। एक छोटा सा ऐप या एक छोटा सा एप्लीकेशन सिर्फ बना के दिखाने के लिए नहीं है, वो जनता तक ले जाने के लिए है। और आप समझिए कि कहां एआई क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उससे मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन एआई में और मनुष्य में और पोस्ट ह्यूमनिज्म में क्या अंतर है कि अगर मनुष्य से पूछोगे कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, ये पे विवाद है, ठीक है। लेकिन अगर एआई से पूछोगे तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तो एआई बताएगी या बताएगा कि हमारे पूर्वज मनुष्य थे। एक वो समय आएगा, यहां वो झूठ नहीं बोलेगी कि हमारे पूर्वज मनुष्य थे, और अब जब ऐसे बोल रही है तो हम मनुष्यों से कितना आगे हैं, वो होगी। 5 वर्ष देख लीजिए आप, कवि की भविष्यवाणी। एआई को उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा होगा जिस तरह से एक रिक्शे वाला या मेरे घर की मेड इस मोबाइल को कर रही है, स्मार्टफोन को कर रही है, और उसको पता ही नहीं होगा देखो मैंने कैसे कर दिया, ये तो यहां से पता हो गया, ये तो रेसिपी आ गई या जो भी है। तो विज्ञान सम्मत हो जाना ये कृत्रिम मेधा का चरम बिंदु होगा, मनुष्यता का चरम बिंदु होगा। और बहुत सही बात है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को किस हद तक एआई समझ पाती है और उनसे कितना, हमारे यहाँ ज्ञानेंद्रियों में तो 5 ही नहीं है, 6ठी भी है, 7वीं भी हो सकती है। अब 5000 साल की उम्र में हमारे यहाँ इंट्यूशन भी कोई चीज होती है, वो कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर के एक समुदाय ने इकट्ठा होके एक कंप्यूटर बनाया जिसमें इंसान का योगदान नहीं लिया, उससे एआई बनी। और अगर ऐसा हो जाएगा कि कंप्यूटर किसी भी कारण से किसी और मनुष्य, वही ना विलेन, और उसकी आप बात कर रहे थे, विलेन भी है हीरो भी है, तो वो अगर कोई बैड प्रोग्रामिंग कर दे और वो सारे के सारे टूल्स, क्योंकि हैक करना तो बहुत आसान काम है, आप बैठे हैं आप हैक हो जाओगे, पता लगा अशोक चक्रधर वहां आ गया और वो डीप फेक बन के मुझी से बात करने लगा। तो अब आज का खतरा डीप फेक है आपकी वाणी में, कि किसी को भी फोन आ सकता है कि भैया मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, बिल्कुल अशोक चक्रधर की वाणी और बिल्कुल इसी तरह के रस के साथ वो फौरन 4 लाख भेज देगा। तो ये जो धोखाधड़ी का मामला है, इससे भी हमें सावधान रहना है। और इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, न कहना चाहता, लेकिन जो डाटा फीड किया जाता है उससे उसकी क्षमता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको करने में हमारी स्वयं की इंद्रियां बहुत पीछे रह जाती हैं। ये तो है, स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच है, OCR आएगा कभी, हमारा सपना था। गूगल आई या गूगल लेंस कितना उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए, और किस तरह से मिली सेकेंड्स में आपका मशीन ट्रांसलेशन हो जाता है। ये इतने बड़े उपकार हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। छपे हुए पन्नों को फट से टेक्स्ट में बदल लीजिए और टेक्स्ट को एडिट कर लीजिए, तो साहित्यकारों के लिए कितना अच्छा हो जाए। जब एक एक किताब पे वो 2-2, 3-3 साल काम करते हैं, उनका काम शायद 1 महीने में ही खत्म हो जाए। कोई भी निर्देश देने के लिए या कुछ भी जनित करने के लिए जनरेटिव AI हमें कुछ और अच्छा करके बताएगी। इतना है। मेरी एक छोटी सी कविता थी, उसको लेके मैंने चैट GPT से पूछा कि भाई जनरेटिव AI ये बता के, मेरा एक शेर है
शेर माने सिंह, व्याघ्र है, वो रहता है कहीं, वो गांव में आता है, वो दोस्ताना ताल्लुकात करना चाहता है, तो गांव की महिलाओं से भी उसका राब्ता है, तो क्या बनाओगे, उसका चित्र कैसे बनाओगे? जनरेटिव एआई तो चित्र भी बना देती। साहब विमलेश जी ऐसा चित्र बनाया उसने कि गलियारे में एक महिला खड़ी है, छोटा सा बच्चा है और एक शेर है जो साड़ी पहन के आया है। अरे कोई को सोच नहीं सकता हमारा चित्रकार कि शेर ऐसे धोती पहन के आया है और उतनी ही लटक रही है, उतना ही पल्लू है उसका, और लुक भी उसका इतना मानवीय है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ऐसा लगता है कि उसकी सहेली आई है, ये कोई शेरनी नहीं है। तो दोस्तों एआई शेरनी नहीं है, उसको अपनी साड़ी पहनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत सी बातों पर विचार किया यहाँ पर। एक तो एआई की आवश्यकता है हमें, और एआई की सीमाएं भी हैं, और एआई के विभिन्न अनुप्रयोगों की बात भी आपने की है, और आप खुद एआई का प्रयोग करते हैं और करते रहे हैं, इस पर चर्चा भी की। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि अभी तो हम शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, हमें अर्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, भावनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए एआई को ट्रेन करना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में आपने भरतमुनि की बात की, और भरतमुनि पे कई अनुप्रयोग हो रहे हैं नाट्यशास्त्र पे, खासकर जो नाट्यशास्त्र में जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जो विस्तार से बताया गया है, उस पर हम इमेज टैगिंग टेक्निक्स को डेवलप करने की बात लोग कर रहे हैं। सो बहुत सारी बातें हो रही हैं, और आगे एआई क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो हम नहीं जानते क्या, लेकिन निश्चित रूप से भारत में एआई की आवश्यकता है, और उसके अलग अलग पड़ाव भी होंगे और अलग अलग दिशाएं भी होंगी, दशाएं भी होंगी। इसी के साथ हमारा ये जो आरंभी क्षण था वो ख़त्म हुआ। अब हम कुछ प्रश्न कुछ ले सकते हैं जनता से। बहुत ही रोचक विषय था, एक आध प्रश्न तो बनता है। जी 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 मेरा नाम विमलेश कांति वर्मा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ। मुझे कुछ बातें चक्रधर जी ने इसकी सिखाई थी, मैंने उसका उपयोग भी किया। मेरे सामने आज एक बड़ी समस्या है। अभी पिछले महीने श्री रामचरित मानस इंडेक्स प्रकाशित हुआ है, IGNCA ने किया है। अब मैं कंकॉर्डेंस पे काम कर रहा हूँ। तुलसी का कंकॉर्डेंस क्या है? कंकॉर्डेंस पे काम करते समय दो समस्याएं आई, जिसमें काफ़ी अशोक जी ने उस पर प्रकाश डाला है। शब्दों के दो अर्थ होते हैं, एक होता है डिनोटेटिव मीनिंग और दूसरा होता है कनोटेटिव। डिनोटेटिव मीनिंग का डाटा मिलता है, जो कनोटेटिव मीनिंग है उसका डाटा नहीं मिलता, क्योंकि वो रेफरेंशियल होता है। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल मीनिंग्स होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आना एक है, जाना दूसरा है, और आ जाना तीसरा है। उठना एक है, बैठना दूसरा है, उठ बैठना तीसरा है। तो जो संरचनात्मक शब्दों की जो व्यवस्था है, इस पर काम IA ने काफ़ी किया है। लेकिन जो कनोटेटिव मीनिंग है वो बहुत अनंत है। इसीलिए हम नाम लेते हैं भरत मुनि का, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रास निष्पत्ति। तो विभाव अनुभाव जो है तो सीमित, लेकिन संचारी जो है वो असीमित। तो वो जो असीम से ससीम की ओर जाने की व्यवस्था है वो IA तो कर ही लेगा, लेकिन उसका उपयोग जनता में कैसे पहुंचे, इसे आपको समझाना होगा। और चक्रधर जी चूंकि अध्यापक भी रहे हैं, शायद अधिक मदद भी कर सकते हैं कि वो आप जो विज्ञान के लोग हैं वो कैसे साहित्य में छात्रों तक उसको पहुंचा सकते हैं। मैंने 50 वर्ष अप्लाइड यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, और मैंने हर समय ये कठिनाई मेरे सामने आई कि काश 50 साल पहले IA हो जाता तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती। इन शब्दों के साथ ये सत्र बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धक है, और आज के जीवन में इसकी जो महत्ता है वो अपरिहार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात मैं कहना चाहूँ जी, ये इन्हीं के बात से है। विमलेश जी, मैं जानता हूँ कि आप एक तपस्वी हैं और आप लगे रहते हैं,
ये मेरे जहन में एक बात आई, जो विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं, इसमें जो अनुभाव हैं अनुसरण करने वाले, वो भी 3 तरह के हैं। एक कायिक, वाचिक, सात्विक। मेरा भरोसा तीसरे वाले पे है। एआई के, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, कायिक वो हैं जिनसे, जिसे मैं तमाशा मारूंगा तो उसको रुक जाए, अंदर से रुक गया, नहीं हाथ को उठाना, वैसे तो आंखों से तो मार दिया तमाशा, लेकिन हाथ से नहीं मारा। या वाचिक है, तुम गालियां दे दो या उसको मधुर बोलो, कुछ नहीं बोलना चाहते, रस नहीं बोलना चाहते, अपने मनोभावों को छिपा के रखना चाहते हो तो मन में रखो। तो आंगिक और वाचिक तो रोके जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी के कटु वचन से आंसू निकल आए, आंसू नहीं रोके जा सकते, वो सात्विक है। एआई को ये आंसू समझ में नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, उसको पसीना समझ में नहीं आएगा कि कैसे श्रम का पसीना होता है, या प्रेम का पसीना होता है, या किसी और भावना का पसीना होता है। उसे रोमांच नहीं पता लगेगा। ये जो रोमावली खड़ी हो जाती है ना, ये कहाँ किस किस के रोम खड़े करोगे, कहां तुम स्तंभित हो जाते हो, जड़वत हो जाते हो, कहां तुम्हारा चेहरा फक हो जाता है, कहां आप बिल्कुल प्रलय जैसी आ जाती है। सैनिक के मरने की खबर मिली, मूर्छित हो जाती है। तो मूर्छित नहीं हो सकती एआई, कभी नहीं होगी मूर्छित, मनुष्य मूर्छित होगा। तो जब तक आंसू हैं, जब तक रोमांच है, जब तक स्वेद है, जब तक स्वरभंग है, जब तक वैवर्ण्य है, जब तक हमारे पास मूर्छित होने की क्षमता है, जब तक हम जड़वत खड़े हो सकते हैं किसी भी दृश्य को देखकर, तब तक एआई से हम बड़े रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पुखराज जांगीड़ है, दमन से हूँ। एक जिज्ञासा है छात्र को लेकर, नई पीढ़ी बच्चों से शुरू करें। एआई के यूज के जरिए जो नए प्रयोग सामने आ रहे हैं, उनकी रचनात्मकता एक सीमा तक बंद जाती है। ऊपरी स्तर पर जाएं, शोधार्थियों के साथ आप संवाद करते हैं तो चैट जीपीटी के जरिए दुनिया भर का जो लिटरेचर ऑलरेडी गूगल पे या क्लाउड पे है, उसको वो ट्रांसलेशन के जरिए मूलतः जो भाषा थी वो तो गई, अब नए में आगे आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो किस भाषा का ओरिजिनली है। मान लो आपने अफ्रीका की एक भाषा ले ली और एक स्पेनिश का कंटेंट तैयार करके आपके सामने रख लिया, अब जो भी टीचर है वो उसको नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में चुनौती ये भी है कि मूल भाषा गायब हो जाएगी, किस भाषा में वो रहेगा, एक तो ये। दूसरा ये कि आपके सपने देखने पर भी अगर कोई अधिकार कर लेगा कि भैया सपना भी इसी ढंग से देखना है, एआई अंततः हमें उस ओर नहीं ले जाए कि हमें अपने बच्चों को सपना देखना भी सिखाना पड़े। ये एक बड़ी गड़बड़ लगती है, यहाँ पे झोल है, इस पर हमें बात जरूर करनी चाहिए। पुष्पक, would you like to comment on it? Anybody else? How to enter to the dream? क्या एआई कर सकती है? जी, पहले तो चक्रधर जी आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। So Chakradhar ji gave this example of can a machine have emotion, right? And वो आंसू समझ में आ पाएगा क्या उसे? So I'd like to say that we have been working on sentiment and emotion analysis for a long time, and one of our work also has been on sarcasm detection. तो जो चैटबॉट है वो sarcasm समझ लेता है। तो आज मैं चैट जीपीटी को एक एग्जांपल दिया था सुबह कि what do you understand from this line? AI everywhere, not a bar to hold. AI everywhere, not a bar to hold. So you are probably seeing that this is inspired by this famous poem by, I think it is Coleridge, water, water everywhere, not a drop to drink, because it was salty water. So ChatGPT came back, said that this is a parody. Okay, this is a parody of the very famous line from Samuel Coleridge, water, water everywhere, not a drop to drink. And the meaning, as I think, is AI needs regulation. Just like you cannot drink salt water,
So you have to regulate AI and you have to hold its reins. So कभी आपसे बात करेंगे हम sarcasm, metaphor पे काम किए, hyperbole पे काम किए, and we seem to think that these systems are able to catch sarcasm, metaphor, sentiment, emotion to a large extent. The question that comes is, it is giving an impression of understanding emotion, but does it feel emotion? So I think is a very, very deep question. What does feeling of emotion mean? We have to understand that. Now coming to dream, so there is this notion of metaverse, then digital twin. Okay, so these concepts are close to what you are saying. So you can create systems which can be in a completely imagined world. Like Chakradharji just now gave this example of a lion wearing a sari and coming. This is an imagined world, okay? And you can see that the system can, now what will you say? It has been able to dream. It has been able to dream a share which is wearing a sari. So these things are happening. I think the deeper question is to understand how the system relates to emotion and how the system relates to dream, which is completely created out of combination of patterns in the data. So we feel that the data contains all those possibilities. The machine is only uncovering those possibilities. Yeah. Well, I think we can't take any more questions because it's already 6 o'clock. So I thank all the panelists, the eminent panelists, and they put forth views from many perspectives, the people who would stand by AI and say AI is doing the good thing, and people who would question the AI and talk about the limits of AI. And certainly is one group talking about the data that needs to be created for AI to actually happen in Indian languages. A lot of Indian languages actually need the basic data to create the basic language technology application there. So I once again thank everybody. You spare time to come here for this panel. And I also thank Sahitya Academy for inviting all of us here in this very, very important session. Thank you very much, ma'am. जब तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाएगा, तब तक वो एक वरदान रहेगी. उसे वरदान ही हम रहने दें और अभिशाप की दिशा में इसे कभी भी न जाने दें. इसी के साथ ही हम एक बार फिर अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू फॉर सच एन इनविगोरेटिंग एंड इल्यूमिनेटिंग सेशन. आई थिंक एवरीवन एंजॉयड इट और बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र था. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं. इस सत्र में आप हमारे साथ शामिल हुए. साहित्य अकादमी की ओर से आज इसी के साथ ही हम पहले दिन का समापन करते हैं साहित्य उत्सव का. Tomorrow on the second day we begin our sessions at 10 in the morning, and throughout the day we'll be having different sessions on different themes and topics in different halls. So please join us. Thank you.